helping plastic industry through different associations like ITMA, Plus India, and other associations also. Associations have got the main people who are working in the industry, the small scale producers, the medium and large scale. CPET works with these people with regular seminars on topics of technology, quality. CPET has been playing a vital role in shaping various national and international bodies by rendering its expertise, and it also plays an active role with various plastic manufacturers associations. Without CPET, today what Indian plastic industry is, it would not have been possible. And now the way it has come up with a number of centers, the technology and the consultancy work they are doing, which is absolutely amazing. In India, if you say the plastic industry's growth is basically because of CPET. So CPET has given manpower, CPET has provided technology, CPET has provided QC testing, CPET has helped to solve problems. CPET today is in a position to understand industry requirement and advise government to do needful about industry. Polymer or plastic is an enabler industry. You name it, any segment of economy, it touches, plastic touches that particular thing. The outputs of this industry goes as input in many industries. Envisioned to be a global R&D hub, CPET has established 3 exclusive R&D wings at Chennai, Bhubaneswar, and Bengaluru. In an effort to encourage research and development on plastics, CPET has created outstanding research centers at par with international standards. They are recognized by the Department of Scientific and Industrial Research and other major departments in the field of research and development. CPET's dedicated scientists and engineers build and nurture new research ideas as well as analyze the complex challenges. CPET's strength stems from its in-house capability to think, innovate, and implement novel ideas. Advanced Research School for Technology and Product Simulation, ARSTPS, offers engineering solutions for complex and critical problems through a dedicated team of scientists and engineers. ARSTPS offers better visualization and easy data handling to create superior products more efficiently. ARSTPS is equipped with sophisticated state-of-the-art research facilities to provide technical support in areas of prototyping, product design, and rapid tooling. There are huge amount of plastic products that goes into the consumer market. I always wondered what happens to these plastics when they reach their end of life.
And that's when I came across CPET. And I had a chance to do research at CPET R&D wing, and I took up a project on e-waste recycling. I was working with waste materials, so the major concern was the identification of the materials. The best facilities of CPET R&D wing and the enthusiastic staff helped me to achieve my results. Even before completing my PhD, with the learning I acquired during my research career, I was able to get placed in Indian Patent Office. LARPM caters to the requirements of commercial, industrial, and defense sectors of the country through its developmental activities. Major organizations have joined hands with the laboratory for various R&D ventures by actively conducting research activities and continuously formulating new scientific principles. CPET enables effective utilization of plastics both by the industry and the consumers. CPET has made an indelible mark in the plastics industry across the world. Today, CPET is gathered in a cap of Indian plastic industry. I don't think without an institution like CPET, the plastic industry in India would have reached where it has reached today. And they will play a very dominant role in times to come in plastic industry. CPET, one-stop destination to fulfill all the services to the plastics and allied industry. There are very few educational institutions focusing only on practical knowledge, and there is only one institute in the field of polymer focusing on application-oriented academics. The Central Institute of Plastics Engineering and Technology, CPET, is a premier national institution functioning under the Indian government departments fully devoted for the growth of polymer and allied industries in India. The first CPET center was established at Chennai in 1968 by the Government of India with the assistance from UNDP and ILO. Today, headquartered at Chennai, CPET operates at different locations across the country. Including data services, CPET is also in the process of establishing 11 more centers. Being a global institution, CPET has signed Memorandum of Understandings for joint collaboration with world-renowned leading universities and organizations. All the CPET centers are equipped with state-of-the-art infrastructure facilities. CPET is accredited with ISO and QMS certification, NABL and NABCB accreditation. CPET is functioning with an aim to contribute towards sustainable growth of plastics and allied industry by producing plastics technology professionals and entrepreneurs. The students are getting mobilized at the village and panchayat levels. Our faculties visits those places, interact with them, and conduct the awareness programs and enroll them for the training programs. So based on their enrollment, they'll be called to the centers and then skill training will be provided to them. Many of our alumni from
heading various plastics organizations. It's a very proud feeling to see that students from underprivileged backgrounds end up doing such wonderful jobs. To achieve its objectives, CIPET offers a wide range of academic programs with varying entry levels in the niche areas of plastics engineering and technology. Here in CPET, we spend half the day learning about the types of machines and how they work, and other half of the day in the laboratories. It helps us to enhance our knowledge theoretically as well as practically. बाहर कहीं इतना अच्छा knowledge नहीं मिलता है मशीनों के बारे में, इतना CPET में हमको मिल रहा है. I was shocked when I came to this college for the first day. I never saw a person or a student sitting in the cafeteria while bunking a class. Every student and every staff is punctual. CPET की जो टीचिंग फैकल्टी है बहुत ही अच्छी है और वो जितने भी लड़के हैं लगभग कोशिश करते हैं कि सबको इंडिविजुअल अटेंशन. Expert lecturers are brought in from current working industries. CPET has given me that industrial exposure. I got internship in East Coast Railway. That's just because of CPET. I think by being a part of those projects, we learn a lot about what the market is doing and how the world is working. क्योंकि हमारा जो CPET कॉलेज है हमें एज अ वर्कर काम करना नहीं सिखाता, वो हमें लीडरशिप सिखाता है कि हम कैसे लीड करें, हम अपना कैसे स्टार्टअप करें. It's a place where you will learn, and if you want to go forward in this field, then absolutely it's the best place in the country. With highly qualified and experienced faculty, enriched library, stimulating research opportunity, and modern infrastructure facilities, CIPET blends modern-day teaching techniques with a traditional emphasis on imparting technical knowledge that makes learning an enjoyable experience. In plastic industry, CIPET students are very important. No wonder that the students from CPET coming out are very employable because they exactly know what they are doing. Virtually, we can say that today's plastic industry is being run by CPETians. With the aim of transforming the plastics industry, CIPET focuses on developing entrepreneurs in the plastics segment. It provides appropriate training in all aspects of setting up a plastics industry. In CPET, what I learned is that only 20% is the theoretical and 80% is basically what is been taught to you practically. It is only here that you have a nice balance of theory and practical that you can actually explore and take it forward and use it in your own industry. Visits to the industry, talking to the industry people, bringing down industry people down to CPET, taking them to a level where they understand what actually is happening. The soft skill also are provided by CPET, which is very important for a successful entrepreneur. CPET is just a catalyst. They have done a catalyst role in nurturing my life. CPET provides you a damn good platform to launch yourself. Application of knowledge is an integral process in education which creates high-quality professionals. I was working for various companies, including multinationals and limited companies in the country. Now I am the owner of one of the organizations based out of Baroda. When I have passed out, I was selected in almost 5 companies. I have to select which company I have to join. The knowledge I gained in CPET has given me enormous knowledge in machine developments, tool developments, processings, designs, and consulting to other industries. Today, after 25-30 years, we have 9 locations in India and 1 in overseas. We started this company in 1997. And we started in very, very small way. So today, the overall our group turnover closer to 160 to 175 crores. Whatever it is, I learned only from the CPET. So you are already a winner when you get into CPET. Every family wants their child to be into a good college. And even if a family can't afford that minimal fee structure, they are providing scholarships for those students. CPET में एडमिशन लेना मेरे हिसाब से लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है मेरी लाइफ का. CPET is providing us the platform to frame our innovative ideas. CPET में आने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया और नर्वसनेस मिट गई. If you want to go for plastics, there is
only one best option, that is CPET. CPET, armed with an excellent infrastructure in terms of technology and highly qualified engineers, is competent to meet the requirements in providing qualitative technology support services. CPET renders technical consultancy and advisory services to polymer and allied industries. With an excellent combination of engineering knowledge and software skills and industrial experience, CPET offers spectrum of engineering services in CAD, CAM, and CAE that results in fulfilling the design and engineering requirements. All CPET centers are well equipped with ultra-modern, conventional and CNC machines and expertise that enable the centers to handle commercial job assignments for mold fabrication, high-precision machining, and manufacturing of standard mold bases for plastic products of any shape or complexities. CPET undertakes precision job orders in the areas of inspection, proving and evaluation of molds and dies, processing of raw materials and supply of components, testing of moldability and optimization of processing conditions and parameters. CPET's testing laboratories, located at different parts of India, are accredited by NABL and also recognized by BIS. Testing on materials and products are performed based on requirements of various standards. CPET is well equipped with plastic professionals and trained inspectors with rich experience in inspection of various plastic products, and it ensures the highest level of accuracy and integrity in the performance of inspection services through centralized PDI cells. CPET is one of the first Government of India educational institutions to be accredited for its third-party inspection services. CPET is an open platform for anybody, micro industry, small scale industry, medium scale industry, whichever. The entrepreneur need not invest any investment in the beginning. We can identify a
market for a particular product, then come to us. We will able to assist from the concept development to the end stage of it. If you see the number of uh, works taken under technology support service, the number has gone up. More and more industry we are supporting. If I want to sell, I have to match international standards, and for that there are so many norms. Exporting to countries, you have to get into FDA and all that things. Your good manufacturing practices, your product designing. So CPET with all this infrastructure in place will definitely help the small scale industry to avail of all these things, which will help the small scale industry people to compete. Other than over and above education, CPET is also helping small and medium scale industry as a technology support. If they want to do anything, testing, analysis, technical advice, process knowledge, all these things which CPET is offering now is invaluable. So we are there to support you. Even we call our technical service technical support service for industry. That is the main objective of establishment of CPET. Accredited by NABL, CPET's calibration laboratories at Lucknow is equipped with high-accuracy master equipment. The center provides quality instrument calibration services to manufacturing, research, and development. The faculty members undertake consulting assignments to provide solutions to the sector-specific problems and as inputs for policy making. Consulting provides an opportunity for the faculty to share insights with practitioners, test their ideas, and to improve their understanding of the real-world situation. जैसे जैसे हम लोग सिपेट से काम करते गए, हम लोग को वैसे वैसे लोग जानने लगे हमको भी। पहले हम एक वेंडर से करवाते थे राई इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन वो डिलीवरी भी टाइम पे नहीं दे पाते थे और क्वालिटी में भी प्रॉब्लम रहती थी। फिर हम सीपेट में विजिट किया, यहाँ पे मशीनरी देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो उसके बाद हमारे को लगा कि हमारे पास इतना बढ़िया वेंडर है, तो हम ऐसे लोकल मैन्युफैक्चरर से क्यों करवाएं। मेरे आजकल 10 आइटम चल रहे, 4 साल से यही जुड़ा हूँ। मेरा टोटल प्लास्टिक का जो भी बनता है वो यही से बन के जाता है। सिपेट का मुझे वो हेल्प नहीं मिलता तो हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट होता था तो बड़ी दिक्कत के साथ होता था। CPET is helping plastic industry through different associations like ITMA, Plus India, and other associations also. Associations have got the main people who are working in the industry, the small scale producers, the medium and large scale. CPET works with these people with regular seminars on topics of technology, quality. CPET has been playing a vital role in shaping various national and international bodies by rendering its expertise, and it also plays an active role with various plastic manufacturers associations. Without CPET, today what Indian plastic industry is, it would not have been possible. And now the way it has come up with a number of centers, the technology and the consultancy work they are doing, which is absolutely amazing. In India, if you say the plastic industry's growth is basically because of CPET. The CPET has given manpower, CPET has provided technology, CPET has provided QC testing, CPET has helped to solve problems. CPET today is in a position to understand industry requirement and advise government to do needful about industry. Polymer or plastic is an enabler industry. You name it, any segment of economy, it touches, the plastic touches that particular thing. The outputs of this industry goes as input in many industries. Envisioned to be a global R&D hub, CPET has established 3 exclusive
and Bengaluru. In an effort to encourage research and development on plastics, CIPET has created outstanding research centers at par with international standards. They are recognized by the Department of Scientific and Industrial Research and other major departments in the field of research and development. CIPET's dedicated scientists and engineers build and nurture new research ideas as well as analyze the complex challenges. CIPET's strength stems from its in-house capability to think, innovate, and implement novel ideas. Advanced Research School for Technology and Product Simulation, ARSTPS, offers engineering solutions for complex and critical problems through a dedicated team of scientists and engineers. ARSTPS offers better visualization and easy data handling to create superior products more efficiently. ARSTPS is equipped with sophisticated state-of-the-art research facilities to provide technical support in areas of prototyping, product design, and rapid tooling. Major organizations have recognized CIPET as their prospective vendor for precision tooling, mold, and product development. Laboratory for Advanced Research in Polymeric Materials at Bhubaneswar, equipped with sophisticated state-of-the-art facilities, provides technology support for material to product development. There are huge amount of plastic products that goes into the consumer market. I always wondered what happens to these plastics when they reach their end of life. And that's when I came across CIPET. And I had a chance to do research at CIPET R&D wing, and I took up a project on e-waste recycling. I was working with waste materials, so the major concern was the identification of the materials. The best facilities of CIPET R&D wing and the enthusiastic staff helped me to achieve my results. Even before completing my PhD, with the learning I acquired during my research career, I was able to get placed in Indian Patent Office. LARPM caters to the requirements of commercial, industrial, and defense sectors of the country through its developmental activities. Major organizations have joined hands with the laboratory for various R&D ventures by actively conducting research activities and continuously formulating new scientific principles. CIPET enables effective utilization of plastics both by the industry and the consumers. CIPET has made an indelible mark in the plastics industry across the world. Today, CIPET is feathered in a cap of Indian plastic industry. I don't think without an institution like CIPET, the plastic industry in India would have reached where it has reached today. And they will play a very dominant role in times to come in plastic industry. CIPET, one-stop destination to fulfill
all the services to the plastics and allied industry. There are very few educational institutions focusing only on practical knowledge, and there is only one institute in the field of polymer focusing on application-oriented academics. The Central Institute of Plastics Engineering and Technology, CIPET, is a premier national institution functioning under the Indian government departments fully devoted for the growth of polymer and allied industries in India. The first CIPET center was established at Chennai in 1968 by the Government of India with the assistance from UNDP and ILO. Today, headquartered at Chennai, CIPET operates at different locations across the country. Including data services, CIPET is also in the process of establishing 11 more centers. Being a global institution, CIPET has signed Memorandum of Understandings for joint collaboration with world-renowned leading universities and organizations. All the CIPET centers are equipped with state-of-the-art infrastructure facilities. CIPET is accredited with ISO and QMS certification, NABL and NABCB accreditation. CIPET is functioning with an aim to contribute towards sustainable growth of plastics and allied industry by producing plastics technology professionals and entrepreneurs. The students are getting mobilized at the village and panchayat levels. Our faculties visits those places, interact with them, and conduct the awareness programs and enroll them for the training programs. So based on their enrollment, they'll be called to the centers, and then skill training will be provided to them. Many of our alumni from the last 15 or 20 years are now heading various plastics organizations. It's a very proud feeling to see that students from underprivileged backgrounds end up doing such wonderful jobs. To achieve its objectives, CIPET offers a wide range of academic programs with varying entry levels in the niche areas of plastics engineering and technology. Here in CPET, we spend half the day learning about the types of machines and how they work, and other half of the day in the laboratories. It helps us to enhance our knowledge theoretically as well as practically. बाहर कहीं इतना अच्छा नॉलेज नहीं मिलता है मशीनों के बारे में, इतना CPET में हमको मिल रहा है. I was shocked when I came to this college for the first day. I never saw a person or a student sitting in the cafeteria while bunking a class. Every student and every staff is punctual. CPET की जो टीचिंग फैकल्टी है बहुत ही अच्छी है, और वो जितने भी लड़के हैं लगभग कोशिश करते हैं कि सबको इंडिविजुअल अटेंशन. Expert lecturers are brought in from current working industries. CPET has given me that industrial exposure. I got internship in East Coast Railway. That's just because of CIPET. I think by being a part of those projects, we learn a lot about what the market is doing and how the world is working. क्योंकि हमारा जो CPET कॉलेज है हमें एज अ वर्कर काम करना नहीं सिखाता, वो हमें लीडरशिप सिखाता है कि हम कैसे लीड करें, हम अपना कैसा स्टार्टअप करें. It's a place where you will learn, and if you want to go forward in this field, then absolutely it's the best place in the country. With highly qualified and experienced faculty, enriched library, stimulating research opportunity, and modern infrastructure facilities, CIPET blends
modern day teaching techniques with a traditional emphasis on imparting technical knowledge that makes learning an enjoyable experience. In plastic industry, CPET students are very important. No wonder that the students from CPET coming out are very employable because they exactly know what they are doing. Virtually, we can say that today's plastic industry is being run by CPET team. With the aim of transforming the plastics industry, CPET focuses on developing Good Good morning, morning, everyone. everyone, I am Tanishka. and I am Udara Singh. It is my immense honor and privilege as part of 2 days in training program on chemical safety under the visionary theme of Viksit Bharat, a developed India. Today, as Indians strike confidently towards becoming a global leader in science, industry, and innovation, safety must be at core of our process, especially in chemical sector, whether in laboratories, industries, agriculture, or education. Chemical safety is not optional but essential. The goal of Viksit Bharat is not just economic and technological advancement. It is also about building a nation where every citizen, work, and student can thrive in a safer, secure, and healthy environment. Now, I like to tell you why chemical safety is so critical. One careless act who can undo years of hard work. Precaution is always better than cure. We know truly developed nation is not just productive, it's also responsible. As we launch this initiative, let us combine to educating and training our workforce in chemical handling, strictly implement safety protocols and regulations, encouraging innovation in safer alternative and green chemistry, and most important, building a safety first mindset in every workplace, school and lab across India. Let this program be more than a formality, let it be a movement that aligns with our Honorable Prime Minister vision of zero defect and zero effect, where we produce excellence with no harms to people or the environment. Let us remember safety is not a cost, it is a investment in our future. Now I like to request Mrs. Aradhna Shukla to give a brief about this program. Thank you, Tanishka. Thank you, Uday. Good morning, everyone. We are pleased to announce that diverse range of organizations have registered for an upcoming program on chemical and petrochemical safety. This 2-day program includes participation from both large and small scale enterprises, ensuring a comprehensive representation across the sector. Key participating organization includes Mitsui Prime ACI, Mitsui Prime Advanced Composite India Private Limited, Bhansali Engineering Polymer Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Sashi Petrochemical Industries, Resustainability Limited, Rapper Innovations Private Limited, Fin Project India Private Limited, Otsuka Chemicals Private Limited, Lords Chloro Alkali Limited, DCM Shriram Limited, Urea and Caustic Soda Division, Golcha Associate, Lucid Chlorides Limited, Sika India, Astral, Hero Motocorp Limited, HPM Chemicals and Fertilizers. The public sector undertakings such as HPCL, IOCL, BPCL and HRRL. So we welcome you for today's program. Let's start with the highlights of the program. So I would like to call Tanishka to give the highlights of the program. Thank you, ma'am. So let's move to the highlights of today's program. Inauguration address by Chief Guest, Director General CPET.
and delivered expert lecture on Introduction to Chemical and Petrochemical Safety. Technical session by Professor Dr. D.D. Chaturvedi, Head EHS Kota Chemical Complex, delivered lecture on labeling of chemicals, safety measures. Mr. Aman Sharma, Global Regulatory Affairs Consultant, REACH 24, delivered expert lecture on standard for the chemical and petrochemical sector and GHS classification. Session of Fire and Exposure Safety by Shri R.K. Sharma, former Chief General Manager IOCL. Practical mock drill conducted by Fire Officer, Government of Rajasthan. Now I would like to take the opportunity to request our Principal Director and Head Shri Sanjay Chaudhary sir to felicitate our esteemed guest Professor Dr. Shishir Sinha, Director General CPET. Next, I would like to request our Principal Dr. Bishnu Prasad Panda to felicitate Professor Dr. J.P. Gupta from IIT Kanpur. Next, I would like to request Mrs. Aradhna Shukla ma'am to felicitate Priyanka ma'am. Please ma'am. Next, I would like to request Ashish Shukla sir to felicitate our Principal Director and Head Shri Sanjay Chaudhary sir. Next, I would like to request our Vice Principal Dr. T. Senthil sir to felicitate our Principal Dr. Bishnu Prasad Panda sir. Let this light be a symbol of knowledge, safety, and enlightenment. As we embark on this important journey together, with this, I would like to invite all our distinguished guests on the diyas to kindly come forward for the auspicious lamp lighting ceremony, marking the formal inauguration of this two-day training program on chemical and petrochemical industrial safety. दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति
Now, I would like to warmly invite our Director Principal and Head Sanjay Chaudhary sir to kindly address the gathering and encourage our audience with his inspiring word. I would like to welcome one and all. It is my pleasure to welcome Professor Dr. Shashir Sinha, Director General CPET, Professor Dr. JP Gupta ji, IIT Kanpur, Miss Priyanka from DSS DuPont, and all my colleagues and all the participants. First of all, I would like to thank our Department of Chemical and Petrochemical, Government of India, to give us this opportunity to organize this 2 days workshop on chemical safety. CPET, which was earlier known as Central Institute of Plastic Engineering Technology, currently it is, nowadays we have expanded our activities and now we are Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology. So in this endeavor to enter the new scope of chemicals, we are trying to establish ourselves as a close partner with the industries. In our effort, this is the program we have launched with the help of our department to interact with all the industries. We are establishing labs. We have started conducting a BTech program on petrochemicals other than plastic and mechanical. And I thank all of you for attending this program. And the first step toward, I think, this major activity in chemical industry is the safety. And I hope we all will be benefiting from this program. And the interaction, more interactive it is, the more we can benefit. So I welcome once again all of you and thank you for joining this program. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to invite our esteemed guest, Professor Dr. Shashir Sinha, sir, Director General of CPET, to kindly address the gathering and share his concluding thoughts. Namaskar, Suprabhat. So, my teacher, Professor JP Gupta, is an authority in the field of chemical process safety, and it is indeed a privilege for CPET IPT Jaipur that Professor Gupta himself is there. It is, the detailed biodata will be read out by my colleagues during his lecture. But those who are unaware about the credentials of Professor Gupta, he is the founder of Pandit Deen Dayal Petroleum University at Gandhinagar and is the founder of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology at Rai Bareli and 3 more campuses. Am I right, sir? So,
So after this, you see that our ministry, the Department of Chemical and Petrochemical, they are organizing a series of chemical process safety workshops. The objective is very clear in the mind, because it was, you see that almost 2 years ago, we submitted a proposal to the ministry, as well as it was a dream of our Honorable Prime Minister for the safer operation in the chemical industry. Now you see, because I am professor of chemical engineering at IIT Roorkee, and I used to tell every student during the first year that chemical engineering is the mother of all discipline. Without chemical engineering, nothing is possible. These words may be a little bit fancy, but you see that you just think about, give a thought for a minute, that whatever food you are consuming, it's a part and parcel of the chemical engineering aspect. Whatever clothes you are wearing, everything. Even I may be a little bit, you can say, the selfish in this aspect, that electrical, mechanical, every other engineering, the life is possible, but without the chemical engineering, the life is not possible. And that is why I used to say that God is a chemical engineer, and your body is a chemical reactor. Whatever food you are taking, consume in terms of energy, and then whatever discard, it is a waste product. So this is a whole genesis of the chemical engineering. Now, when we are keeping an eye towards the twofold in the government context, that is Viksit Bharat 2047 and Net Zero 2070, I hope that all of you are aware about this fact. And there is a lot of growth in the chemical field. And simultaneously, when there is a lot of growth in the chemical field, the safer operation is the need of time. A lot of accidents, recorded, unrecorded accidents, are taking place in the industry. We should not forget our baseline, the Bhopal gas tragedy. 25,000 reported fatalities were there. We should not forget, even we are sitting in the Jaipur in 2009, there was a massive fire at Jaipur IOCL depot. So all these things, they are happening day to day. Even in our domestic affairs, a lot of things happen in our kitchen because of the LPG blast and other things. So keeping in view of all these facts, and everywhere if you see that there are 3E concept. In chemical engineering, we used to tell the 3E concept. What is 3E? 3E is the energy, environment, and economics. You see that now the term of safety has been replaced by the loss prevention. The downside, you see that the outcome of the Bhopal gas tragedy, one company called Union Carbide vanished globally. I'm not talking about the other thing. Environmental aspect is still the people of Bhopal, they are suffering, there are some ground, and probably you might have read about the fact that one company, now they are responsible for the disposal of whatever their debris are there in the Union Carbide premises. So the thing is that, keeping in view of these 3E, we have to look into the safer operation, because it is not only the fatality, is not only the injury, it is not only the impact to the society, everywhere the economics with respect to the industry is involved. So keeping the fact and all these things, the government of India thought that it is a responsibility of the government of India to organize some sort of a refresher course, not only in terms of keeping a track to the recent development, recent advancement and other thing, but also to refurbish the old memories during your classroom days, what you read, that how to deal with the safer or different operation in a very safe manner. Remember one thing, that during our working in our kitchen, we always know that LPG or LPG, all these things are very safe, but simultaneously they are very dangerous. So all these things and facts and figures, they need to refurbish. So the government of India proposed that there are so many classified industries with respect to the major accidental hazards and others.
So based on the CPCB, 2,300 industries almost they are enlisted under the head of major accidental hazards. So Honorable Prime Minister, he gave a directive that 48 such kind of workshops, training programs to be organized in 5-year program, so that the local industries, the major accident, especially major thrust towards the training to the MAH industries should be there. So they put up guideline that minimum 50 MAH units with minimum 100 participants should be there, so that a cycle can be completed by the year 2027. All 2,300 industries should be trained. So this Jaipur program is 14th program in this particular series. First program was inaugurated in the month of November at 2024 at Ahmedabad, well populated. Then Delhi to the northern belt. This is the fourth program. Previously the Ahmedabad, then Kanpur, then Chandigarh, and then Jaipur. Similarly in the southern part. So this is, you can say, the government of India's initiative to go for the safer operation, to prevent the hazards, to prevent the impact of those hazards to the environment, to save the mankind. So that is why we are here, and the everything, whatever we are doing, is closely monitored by the Ministry of Chemicals and Fertilizers. So I hope that the next 2 days, this particular program will give some of the insights, right from the fundamental to the practical aspect. And you see, by the program, we created a galaxy of experts in the field. And that is why we requested Professor Gupta to come down to Jaipur to share his thoughts, because he is an authority in the safety field and a living legend. I'm not taking much time because a lot of things are in line. Thank you very much for coming here, joining this particular program for the good initiative by the Government of India. Thank you. Thank you so much, sir. This has been honor to have you with us. Now, I would like to give a brief about Shishir Sinha, sir. Professor Shishir Sinha, presently holding the position of Director General, Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology, under the Ministry of Chemical and Fertilizer. Good morning, everyone. Now I would like to call Priyanka ma'am from DSS to address the gathering, as she is having immense knowledge about this chemical safety and industrial safety. So I would like to call Priyanka ma'am on the stage. Ma'am, that is yours, please. Good morning, everyone. Suprabhat. It's my immense pleasure and honor as well that I have been with the living legendaries over here to be the guest speaker in this particular occasion. So as Mr. Shishir Sinha has already said the context, that safety, and I have overheard heard in the conversation when these young fellows have been talking about that safety is not a cost, it's an investment. So such a wonderful statement. That's what I believe in. And setting the context by Mr. Shishir that yes, accidents do happen, be it at your domestic workplace or the industries, be it anywhere. So it's all about how cautious and how confident you are aware about your risk at your workplace or at the system. So it's been wonderfully placed, and I believe, yes, that this initiative which has been taken now, it's an excellent step by Government of India, where they want to educate all the 4,800 industries which are under MAH. So it's 2,300 to be 2,300 industries under MAH. They want to educate the people on the pros and cons, that how the safety initiatives need to be rolled out and to be practiced at the workplaces.
So if I talk about, let's give a very simple example. Like many of you today in the morning would have driven by themselves by their own car. So how many of you have actually worn the safety seat belt, be it a main car rider or the just at the passenger seat? So maybe I can have some few hands raised. Just genuine answer. Okay. So I can see a very few of you having hands raised. So this kind of sets up the tone and the culture where you all people belong in, and the mentality which is imbibing in the minds of the professionals over here. So if we are not setting the context right or the tone right, how are you expecting that you are going to trickle down the same level of knowledge and the same level of maturity of safety to your peers and to the other at the lower level in your organization? So it's about safety is to be practiced. So it's all about walk the talk. If you yourself are not walking the talk, so how it needs to be nurtured further. So that's where I would want to strike the right chord, and would like you to think upon that at your workplace, how you are seeing the safety. Is it just only for the compliance purpose, or is it just only for that manager is asking and or your HSE officer is expecting you to do some part of it, that it's just a tick box activity? So this is where you people want yourself to be positioned when you're looking safety as a primer optimus of the increasing the overall operational efficiency of your own industry. So at many times we have seen that productivity is often considered as the primary thing. I believe many of you sitting over here are handling the multiple operations, hazardous operations from the hazardous industries. But yes, that's right, that productivity is ultimately the business output where the company wants to see their profitability and everything. But if you just want to link it back, whether do you want to make the safer operations, which is eventually going to increase the operational efficiency and the profitability, or you want to compromise on the safety and then increase the productivity? So these are just some of the triggering things which I would want all of you to think upon how you yourself see as a safety. Talking about the theoretical concepts of techniques and the various processes in place, but how you are going to take the safety to the next level at your workplace. So at this point of time, I will take a pause and really leave with you a couple of questions which you can think upon, and maybe in the ongoing session we'll have a more discussion and more thought-provoking questions to you and interactive sessions. So maybe you can think on how you yourself see the safety perspective as the industry's accidents are increasing many of the times, and moreover the vision of the country is like there has to be the enormous production and the enormous number of industries to be placed, but in the interest of safeguarding the protecting the human people, assets and the environment completely. So how this needs to be completely addressed, and how you consider safety part. So now I will hand it over to the facilitators over here for addressing the session further. Thank you so much, ma'am. Now, we are very honored to have Dr. J.P. Gupta sir, expert professor and head Chemical Engineering, IIT Kanpur, founder director PDPU, Gandhinagar, founder director RGIPT, Raebareli, ex-director SOE and Dean, Shiv Nadar University, Greater Noida. I would like to give a brief about Dr. J.P. Gupta sir. J.P. sir, educated at IIT Kanpur, University of Michigan, University of Pennsylvania, Research Engineering of UOP, Chicago, professor at IIT Kanpur, head of department,
science diplomat at the Embassy of India, Washington, D.C., visiting professor at University, Michigan, Texas A&M University, Loughborough University, UK, Incourt de Mines, France, Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, China Petrochemical University, Qingdao, Founder Director General of Pandit Deen Dayal Energy University, Gandhinagar, Founder Director of Rajiv Gandhi Institute of Petrochemical Technology, Raebareli, with campus in Assam and Bangalore, Director School of Engineering, Shiv Nadar University, Greater Noida, participated in conference on the continent, delivered across of seminars including at the UN and World Bank, consultant to industries in India and USA, trained over 1,000 industries engineers through short course in 2 disciplines in India, nominated by government as an independent director on the Board of Engineers India Limited, delivered course on chemical process safety and security at Helsinki, Helsinki University of Technology, Finland, 5 times, Sultan Qaboos University, Oman, guided research and published over 125 papers in renowned journals, authored 2 books and edited 1 book, organized international conference, have been on editor board of 3 international journals, provided academic guidance in a project to set up a technical institute in the UAE, motivated numerous students to go for higher education. Now I would like to invite JP sir to uh, guide our guests. JP sir. Well, thank you for the introduction. All what she said was in the past. Now I am fully retired and enjoying life. I did enjoy during my working time also. It's not that that was a pain. Well, I thank DG and Principal Director for inviting me to be here today. It's indeed a pleasure to see all the bright faces here, eager to learn about safety. So I won't take much time so that we can get on to the main topics. Safety became important after Bhopal gas tragedy, and unfortunately accidents still keep happening. 2 days ago, it was in the news that all 371 tons of waste from Bhopal had been incinerated near Indore in MP, which is a good news. The same papers carried the news of this blast in Telangana, which has killed about 35 or so people and some are still missing. The next day, Maharashtra cracker factory, 8 people got killed, which means the safety still continues to be a major concern in India, and the training that is being provided under ministry's guidance and under DG's guidance to all the MAH industries will go some way to prevent further accidents. I should tell you just in a minute about DG. He was a student at IIT Kanpur Chemical Engineering. He took a course on process safety, and then he set up a course in NPTEL on process safety, and he has 4 more courses in NPTEL. There is a saying, you give him an inch and he will take a mile. So he goes
a long way in each and every activity that he undertakes and is very well known around the country. It's a pleasure to be with you. Well, I wish you all a great program in the 2 days ahead, and thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite our principal, Dr. Vishnu Prasad Panda, sir, to give vote of thanks. Respected Director General, sir, Chief Guest of this function, then respected Professor J.P. Gupta, sir, Indian Institute of Professor IIT Kanpur, respected Principal Director and Head, sir, and Madam Sri Priyanka Rajdan, Madam. So this is my pleasure to just thank to all the, of course, the colleagues who are there, and of course the industrial personals who taken the time, and we are just introducing the technical section just here now. So before this introduction, I would like to tell you that before we have visited many places, like I have just personally visited Alwar. My team has visited Kota, Barmer, so many places we have visited, and we have just looked the industry scenario, and we came to understand that the chemical safety is the prime concern for the industry point of view. And even I have worked with private industries, Regent Plast or Dow Chemicals, where the safety aspect is very much important for the industry point of view. So our team and our faculties and our expert so try to will make the more practical things so that it could be visual, it could be the training program should be successful. And one thing I would like to tell that CPET, as per Director General Sir's vision, we have changed from plastic to petrochemical, and we have set up exclusive enable testing facilities in the field of industrial chemicals, and BIS approved chemical facilities are also there. So time permits, so we will make a visit of a total laboratory so that we can showcase up our facilities. So by this, I thank you to all the respected members, and I request to just initiate the next sections. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to give a brief about Shishir Sinha, sir. Shishir Sinha, Professor Shishir Sinha. By this, we'll just start our technical sections. So just we'll after just 5 minutes, we'll just I request all the our chief guests should just take a chair at the down.
now I would like to respectfully request Professor Dr. Sisir Sinha sir, Director General CPET, to kindly initiate our program with his insightful speech on the topic Introduction to Chemical and Petrochemical
waste has been incinerated in a plant near Indore, I am forgetting the name, while the waste related to, 371 tons generated about 800 tons of ash and other material, which will be landfilled right in that area. All the packaging that was used to take the 371 tons of material to Pithampura, I think is the name, that will be subsequently incinerated. Actually 3rd July is the date by which time it was to be incinerated, so it may be happening today. But as Dr. Sinha mentioned, the company management, in order to reduce the costs, cut down on many measures. And what I will do, I'll run through my slides. Some slides I may skip altogether. I have 2 sets of presentations on Bhopal. One is short, which is this one. One is long, which I am projecting, which is about twice as many slides. And here nitroglycerin was being produced in a batch plant. Now nitroglycerin, the reaction is such that if it goes a little above the set temperature, it can create hazard and the whole thing will blow up. Okay. And if the temperature is low, then the conversion would be less. So you see there is a man sitting here, and these are pipes with hot water and cold water to adjust the temperature, and he is looking at the gauges. What is interesting is that this man does not fall asleep. He is sitting on a one-legged stool, and that stool, the leg is not in the middle of the stool, it is on one side. So he has to keep balancing himself to protect himself from falling down, which means he would keep awake. Experiment in chemistry where water entered from a side in a funnel, and there was filter paper, and this water flowing would produce suction, and the liquids. Simplicity and inherent safety are complementary. This is Graham Dalzell, who used to work for BP in Aberdeen. Okay. High G distillation tower. How many of you have heard of high G? High G, G stands for gravity, and we know G to separate serum from and red cells. Question was, this is high G distillation towers. This is a column which most of you would be familiar with, being from chemical industry. You have them in distillation columns, absorbers, and so on. Liquid flows down, vapor flows up, and there is mass exchange at the interface. So the volume of liquid in this is a lot. A reboiler here which boils off, and then various condensers, so on. So what somebody thought of at ICI and later on transferred to university, I'm forgetting the name, that how about if we increased the gravitational force, because right now liquid is coming down and vapor moving up because of buoyancy, so it's one gravitational force. If we increased it, how would the exchange happen? So what you see down below here is a centrifuge, this horizontal, operating at several hundred G values. And this does the job that this big column does. And the volume content is less, the cost is less,
and it is much safer. Now, chemical industry by its very nature and capital investment is a bit conservative, which is the right thing. So they did not change over to it very fast. Gradually some changes are occurring, and there is a fellow, well, there is one institute in Beijing which is called Hygie Institute. There is a fellow, Dr. D.P. Rao, who worked at IIT Kanpur in chemical engineering and Hygie area, and is now retired there about 20 years ago, and is now a consultant in Hygie based in Hyderabad. So in cooperation with a manufacturer in Bombay, they designed separators and absorbers which based on Hygie, which are being used in India and abroad, Bahrain, Colombia, Australia, so on. So this is gradually getting into practice. Okay, this is a very favorite slide of mine. This is from chemical engineering in year 2000. You see the word DSM, this is Dutch State Mines. Two people who used to work at DSM, now they have retired and gone on to other assignments. They said, now this is a chemical plant, you are familiar with such layouts, that if people used Hygie, then all these columns will reduce in size, and the chemical plant one day will look like an electronics plant here. And you see the boiler is the same here, but other items are inside. Now that day has not yet come. Gradually things will change over time, but the possibility exists. Now several slides in this I have taken from my friends Dennis Hendershot in US, Mark Woods in UK, and Roshan Jachuk, who was from Odisha, then went to UK. Inherent safety implies existing in something as a permanent and inseparable element, quality or attribute. Like Dr. Sinha said earlier, H2S has its inherent property that you can't change, that is inherent, built in. Process safety improvements, what we currently do, we add safety interlocks, alarms, mitigation systems, safety procedures, training and emergency response. These are expensive, and then ongoing management, testing, maintenance and training. They can be highly reliable but never perfect. Trevor Kletz in 1977 at a lecture discussed about hazard, and also these examples. To eliminate hazards, you must eliminate the material, change the material, or change the conditions of its use. He mentioned these inherently safer design strategies: minimize, moderate, substitute, and simplify. Minimize means you use small quantities of hazardous item in Now reactors, there are various types of reactors. You are familiar with some of them. Now, one is a normal reactor, the other is this loop reactor, where you have, I am not reading the chemicals in here, but you have the chemicals coming, entering here, its circulation, and part of the product is taken out.
So the reactor is basically this looped coil. This is replacing a batch reactor. When you look at it, reactor size, there is a vast difference between the loop reactor and the batch reactor, giving better product in loop reactor. Reactor size is reduced to almost a third, reaction time reduced to a fourth, and productivity almost 50% more. When productivity is more, then your waste byproducts are less. And for byproducts, you needed chlorine to take care of the byproducts. So in loop reactor, that reduced, and in vent scrubber also, the amount of sodium hydroxide used reduced because you had less byproduct going through the scrubber. This is one more item, traditional methyl acetate process. This was produced by Eastman Kodak in Tennessee. Kodak we all know as a photographic company. They also had a chemical division, which by the way still works. And only Kodak went out of photography business, as we know. But only 2 days ago I was reading an article, some of you may have seen it too, that now Kodak is being branded for various other items. Kodak dresses, Kodak shoes, they have the Kodak insignia, the famous one. So traditional methyl acetate process involved 8 columns. I am not reading the names, but this is the process. What people at Tennessee did was to reduce it to 3 columns. In one column itself, they have reaction happening and separation happening. So we will come back to this methyl acetate one later on. After Bhopal gas tragedy, many companies reduced their inventories. This is a listing of some of them. No, that will come later in the Bhopal one. Substantial reduction by many companies, inventory management process and enterprise supply chain tools, improved management of ordering and transportation, and better relationships with suppliers. What happens is, and you are from industry, so you would know, and please do comment, raise your hand and interrupt. We store a lot more of reactants or input because we want to make sure that supply chain is, if supply chain is disturbed, our work continues, or if the supplier does not provide in time. So if you can have better relationship with supplier, that you get your inputs in time, you would need to store less. Couple of decades ago, a term used to be very popular, JIT, just in time. It was developed in Japan, practiced, and it is said that Toyota company, which needed a lot of items from other suppliers, that they will only have inventory of 2 hours. It's a continuous plant, 24 hours. They will only have for 2 hours because their supply chain is such that material will keep coming and they keep using. So that require them to store less, and naturally their investment in material was much less, rather than have it for a day or a week. Okay, this is, sorry. Dow decreased acrylonitrile plant in process storage by almost 500,000 pounds, 350,000 pounds of byproducts, and chlorine storage reduced by 100,000 pounds. Now that was intensification.
This is substitute a less hazardous reaction chemistry or replace a hazardous material with a less hazardous alternative. Incidentally, anything that we say now or later, you don't make a change blindly. You would have in your companies management of change. So before you make a change, you determine whether this change will do you good or there are some inherent things that you should be careful about. Otherwise, a change in some cases may lead you into bigger problems. An example of inherent safety, you are using a solvent which is non-flammable but toxic, other is a flammable but low toxicity. So you have to decide which one to use. You don't switch blindly. Similarly in supercritical processing. The other is moderation. Moderation means reducing the concentration, reducing the temperature or pressure. Now here it is dilution, refrigeration, so you reduce temperature, less severe processing conditions, physical characteristics or containment. How does dilution moderate hazards? Dilute the hazardous agent with a less hazardous or non-hazardous material. If you have dilution, then the evaporation rate in case of a spill would be less than a concentrated one. Okay, this is about ammonia. All right. Effect of dilution, release scenario, 2-inch transfer pipe failure. If you had ammonia and hydrous ammonia, then this is distance 1 mile. So say if you look at half a mile distance here, the concentration will be 5000 ppm. But if you had diluted ammonia, assuming you can use that, then the concentration would be about 1000 ppm. 1000 ppm itself is also very bad. I should tell you an incident. There is this Indian Institute of Petroleum and Energy in Visakhapatnam, which is this month shifting to its own location. Right up till now it is in Andhra University campus. I was tasked with locating, with finding a place for it, because this was part of when Andhra was bifurcated into 2 states, Andhra and Telangana. The existing major or higher education institutions, most of them went into Telangana because they were Hyderabad or near about. So the act, which is called not bifurcation but Andhra Reorganization Act, it had 11 universities that central government would fund in Andhra. By Andhra now I mean the remaining part of Andhra. One of them was Andhra Petroleum University, because Andhra has petroleum and in the sea also, and Kakinada too. So the CM wrote to PM, and that time in 2014 they had fought the election together to get the university going. So in 2015, now I should also tell you that Andhra Petroleum University came under Ministry of Petroleum and Natural Gas. I was running the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology in Rai Bareli. That was the only educational institution under Ministry of Petroleum and Natural Gas. So they asked me to go and look at the places that had been identified by CM's office, Kakinada and Rajmundry. Well, to cut it short,
I made a trip, and on return I made my report. So I was asked to go second time to Kakinada, which means in first report I found none of the places suitable. Second time I was asked to go, and I did go to Kakinada, and I wrote my report. So the Andhra resident commissioner in Delhi, who happened to be IIT Kanpur graduate, but he owed his loyalty naturally to the CM, he said, "You are not approving any place, should I show you something in Visakhapatnam?" Sure. So when we went to Visakhapatnam, they showed me a place, and I said, "This is fine. 150 acres." I asked for 200 acres, but they said 150. I said 150 is fine. When CM got to know of it, he was not happy because he had promised Kakinada MLAs that Petroleum University will come there. There is crude oil down there and so on. So that allotment was put on hold. A fourth trip I made to Kakinada, I was shown a place near the Bay of Bengal. I was told it is 2 crore rupees per acre and I can have the run of the land. Now one side was bay, the other side was a highway which connects Chennai to Calcutta. And they said they will give this land as well as across the highway and construct an underpass to go there. Looking over there, I found petroleum storage tanks belonging to HPCL and BPCL. So I said that, these are hazardous storages. So I was told that these are not used, but the companies have licenses to use, which means they can anytime use them. So I rejected those. Then one more time I was asked to go to Kakinada because they have found more land. Okay, this ammonia thing reminded me of it. I asked the DM for the hazardous survey which Ministry of Environment had gotten done in 45 locations around the country after Bhopal gas tragedy. So in the report, a fertilizer plant was shown. I forgot the company that it belonged to, probably Birla's, and they had the worst case scenario analysis in it, which showed that in case of worst case means 5,000 tons of ammonia, if the tank collapses, then what would be the concentration at which concentration profile of ammonia. So the place which was the land which was shown to me in this my 5th trip was within that area, fatal ammonia concentration. So I argued, I said, if this happens, it can happen anytime during day or night, rainy season or winter season. Where would the students and faculty living on the campus go? Jump into the bay? They can't run fast enough. So this ammonia, because of my experience teaching safety, I could look at this. Finally, they agreed, and it has come up in a suburb of Visakhapatnam, Sambavaram or some such name. Anyway. Now, less severe processing conditions, those who are involved with ammonia manufacture will know that ammonia pressures have reduced significantly over time. And so lower pressure plants are cheaper, more efficient as well as safer. Not that 100 psi is something you want to live with. Plant siting limit potential impacts. Separation of hazards from potentially impacted people, environment and property. Separation of hazardous units
to limit knock-on effects and site selection, avoid transport and storage of hazardous materials. Okay, this I have discussed already, except that in this newer plant design with 3 columns, you have fewer vessels, fewer pumps, fewer flanges, instruments, valves, less piping and less material. So it is safer. Process intensification. BHR group is the one which is in UK and Mark Woodworth used to work there. This is an interesting concept, not being much used except in a few places. You see, when you have two chemicals which react very fast, but their mixing is slow. So what this shows is that you have the two chemicals coming. This is a spinning disk, and these chemicals coming by centrifugal force, they are thrown out, and their film thickness is very small, so they react from here to here and you get the product here. This is the one. We also did some work on it at Kanpur. This is the disk which rotates. Here is the coolant which takes the heat away from this disk and comes down. A very good concept. Only D.P. Rao is putting it up as a test material some places. Okay, this is a nitration study, batch process, organic, 5 hours, wet organic hydrosulfate, 6 hours, dry organic hydrosulfate, 18 hours, nitrated organic hydrosulfate, that's the product. These are hazardous materials, we transfer in stirred tank reactor and so on. Now what I want you to see is, and this is the one that I saw at BHR in UK, which is on the outside of Cranfield University. This particular reactor, which is 2.6 meter wide and 3 meter long, the liquid level is about 2 meters plus, could be replaced by a small one like this, which is only half a meter long, 1 inch, 2 centimeter diameter, and heat evolved is taken out by this plate heat exchanger. So I saw this working. So from this you could get here, and the heat evolved is very limited and is easily controlled compared to this. Why you can't see? Can you read this? This is a wrong color combination. Well, I'll go back to the earlier slide. Well, let me first go to the earlier slide. This is a stirred tank plant and this is the process intensification reactor. Basically, production from 15 tons per annum, it jumped to 50 tons per annum. Inventory 13,000 liters, only 0.2 liters in the horizontal packed column. Byproducts require downstream separation and there were no byproducts in the other one. Capital cost 100,000 pounds for the new reactor, and here it's 40,000 pounds for the total plant. Residence time 30 hours in the batch, and here it is 1 minute. So what you find here is, this is the total plant. Okay. So inherent safety is start early in development and never stop. I'll stop here now. There are a few more slides, but I can skip those. So basically,
No, wait a minute. I have one more topic to talk about. Basically, I would encourage you to read about inherently safer plants or inherent safety. You will get a lot of information in literature on Google, on internet also. See what you can use in your plant. Of course, discuss with your colleagues whoever are decision makers, but it will get you a lot of dividends in terms of safety, in terms of investment, in terms of higher morale when people know this is a much safer plant than otherwise, and you will be a trendsetter. It's gradually being used in even in offshore, that is on the ship. Some absorbers are being used made of inherently safer. They rotate slowly. HPCL is using in its refinery in Visakhapatnam. They are using something that they licensed from IIT Kanpur initially, and then claim to have increased its productivity by themselves. So it's gradually coming along. I would very much encourage you. Any question or comment? Then let's go to the next one, which is Bhopal gas tragedy short. Short, yeah. Okay. This is the one from India Today, end of December. This is the plant. I have not visited it recently, but till a few years ago I used to go there. This is the plant, MIC plant. There were some other plants also, and this is where the gases came out from. This is about 30 meters from the ground. These are the 4 filters. These are the 4 filters which were being cleaned. Some of you may be able to see this. There is a pipe connected here. Water flowing through this, and it's supposed to come this way. Now this is the plant where Dr. Sinha said a blind was to be installed, but putting up a blind, since MIC is very toxic, before you put up the plant you have to put this self-breathing SBA, self-breathing apparatus equipment on yourself, so that, because when you open this valve, some MIC will come out, some liquids will come out, not MIC. So it all used to take about 2 hours time, and over a period of time people find out ways of short circuiting, and this was one. So no blind was put in there. The water came in, and instead of getting into the filters, water will always find the easiest way to move. It went up into this here. Now this had happened before also to some extent, and these are MS pipes, and corrosion had formed. Corrosion acted as a catalyst in the reaction of MIC with water. So when water entered here, it took those corrosion products with it into the, okay, what Dr. Sinha said, this is the Union Carbide plant, and some of these got populated later, but a lot of this existed before, as did this railway train line and station here. Now 41 tons of MIC and its reaction products were released on that cold winter night in about 2 hours time at a height of 100 feet
and it moved as a 30-foot high wall and covered residential area. This is the area that it covered, the one which is shown in a little shaded. Okay. Now what people living around it, when they could not breathe well, they ran towards the hospitals. These are two hospitals, Sultania Hospital and Hamidia Hospital. Since then, of course, more have come up, but these are the government hospitals and very big ones. So when they ran, they, of course, breathe more, you breathe deeper, and hence more gas went into their bodies. So this is the death roll, and Dr. Sinha talked about it. There is a magazine which chemistry people may have heard of, Chemical and Engineering News, published by ACS, American Chemical Society. Its editor made a statement, and incidentally this February 11, 1985 issue, which is a weekly publication, it was all on Bhopal. The first time in recorded human history that almost a whole town was gassed in peacetime. Now post-mortem reports, you have all the things that could happen. When the works manager of Union Carbide was contacted that night, he said the leak can't be from my plant because it is closed down. And after the leak finished, then they came to the police chief and said that the leak was from our plant and we have stopped it. Actually, the whole of it had run out. Now, factors contributing. One, it was over-designed. The Bhopal group had said that 2,000 tons per annum would be enough, but Union Carbide in New York thought that India needs so much of food grains and hence would need a lot more pesticide, so decided to go for 5,000 tons per annum. But lower capacity utilization, as you see, so this was mounting losses. 4 million tons in 4 million pounds in 1984 alone. Union Carbide had 16 plants in India producing different things. They wanted each plant to be a profit center, which I guess is a general view. Now, okay, to get the same final product, carbonyl, you have this methyl isocyanate route and you have a non-methyl isocyanate route. Union Carbide used this because it was probably a bit cheaper. Okay, Union Carbide used to send a safety checking team every so often. In 1982, their report said that there were 11 major hazards in MIC and phosgene plants. There was poor maintenance, leaky valves, and faulty gauges. It warned of leak of enormous magnitude. So Union Carbide Corporation's own team had said so. Oh, okay, this is something interesting. This in the next slide. The numbers here are not showing, but this is about 18 and this is 1. Okay. They used to have in 1979-80 most operators with BSc or diploma, and then maintenance supervisor, shift supervisor, plants. As they ran into losses, they reduced the hiring, and finally in 1984, you see there are people, operators with high school education, fewer people with graduate degrees,
There is no maintenance during the morning shift and shift supervisor and plant superintendent. So they reduce the number, the educational background of those who would manage the plant. And one more interesting thing is on the next slide. They reduce the training duration also from about 18 months initially to 1 month in 1984. So you have people with lower education level and much lower training level. So as he said in the morning, disaster waiting to happen. Okay. In 1981, there was a death in the plant from MIC. Ashraf was the name of the person who died, and it was blamed on him that he made a mistake and he died. There is one Mr. Keswani who used to publish a weekly newspaper called Report. He found out as to what all had happened and moreover what was inside that plant. And his report, I have met him a couple of times, and Keswani, his report was titled ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल, 1 से 1.5 घंटे में भोपाल इंसानी लाशों का ढेर हो जाएगा अगर if the MIC leaks out. Oh, you have that. You have that training program. Okay. So what he said, and this warning was issued in October 1982, more than 2 years before the accident did happen. Union Carbide Corporation, its own design has also said the danger of polluting subsurface water supplies in Bhopal area, which has actually happened quite a bit and it is still there. Now these were the chemicals in stockpiles at Union Carbide site, which have now been incinerated, taken to Pithampura near Indore and incinerated. This is a composite photograph many years ago of the plant in Union Carbide. These are the wastes. So, this is the status of the plant. This is the vent gas scrubber. This is T.R. Chauhan, who used to work at MIC plant. This is from Delhi University, working on a report she wrote. We held an international conference on the 20th anniversary in IIT Kanpur. Where we had people from all over the world attending, 26 countries, and then 85 papers were presented. End of conference statement was issued. Now, after that, companies drastically reduced storage inventories, imparted better training, adopted responsible care, and governments adopted several and severe legislation, more thorough accident investigations, and significant liabilities imposed. There is this website gopal.net, where you can read a lot about it. This is from various NGOs and government sites. Oh, okay. You know, with such a big incident or accident happening, those who survived also need food for their daily living. There is a shop, Agarwal Puri Bhandar, and I visited it once, had my lunch there once.
the district magistrate approached them, and for 6 weeks they supplied hot meal to 10,000 people, lunch and dinner, and then also provided 70 trucks of wood for funerals. Okay, these are some photographs by Raghu Rai, the famous photographer. This is the one which Dr. Sinha had also projected. This is an iconic picture. Anywhere in the world people see it, they know it is related to Bhopal. I'll skip some of them. Okay, this is something very disturbing. This is a man carrying his wife's dead body who died because of MIC, and this is the Union Carbide plant behind. This is mass funeral. Sakinath Sarangi has been fighting for justice since that time. Now, changes made without ascertaining effects. This is that I briefly mentioned management of change. So whenever you make a change, first see what it will do before you make it. Use of carbon steel pipes instead of stainless steel pipe as was prescribed in their books, that is to reduce cost. MIC storage tank designed with all connections at one end, so if something goes wrong you have many problems. Alpha naphthol addition, well, MIC storage refrigeration turned off. As Dr. Sinha mentioned, it saved about $20 a day equivalent in electricity bill. Now, one thing I should say, there is standard operating procedure required MIC be maintained between 0 and 5. If it had been maintained between 0 and 5, you are mostly chemical engineers or chemistry, you know for every 10-degree rise of temperature, the reaction goes up twice, doubles up sort of. So the actual temperature was about 20 that night, so it doubled and then doubled, okay, 4 times. It is said that if MIC had been refrigerated and this tragedy were to happen, that is water was to leak and so on, then it would have taken 23 hours for pressure to build up enough to blow off the valve and MIC to come out. Now 23 hours would have given enough time for the management to react, because 23 hours would mean you have come through the night and next day. Flare tower and vent gas scrubber were designed for fugitive releases, not for emergency. Their designs was less for smaller because they only expected small amount to be released. And incidentally, these were not working either, as Dr. Sinha mentioned. Well, I have already mentioned this. Because of the finance, pipes, gaskets not replaced regularly, instead reused or replacement delayed. The strip line we have already talked about. Well, we have mentioned these already. This Dr. Sinha mentioned in the morning. Now cyanide poisoning, as Dr. Sinha mentioned, it was found, but it was denied by Union Carbide because cyanide poisoning can lead to many legal complications, very high compensation. So sodium thiosulfate that he mentioned was to be used. It was definitely denied that doctors will not use that sodium thiosulfate. Okay, when in 2015, 10-ton waste was incinerated. Government claimed success. Residents alleged soil and water contamination. In 24, the court ordered that waste be disposed by January 25. 337 tons waste loaded in 12 trucks. High Court had given 6 months. Government tried to convince the residents
Activists claim that the total waste, including contaminated soil, is 1.1 million tons. That is the soil into which the chemicals have leached. They wanted the waste to be shipped to USA, where 100 tons of mercury waste by Unilever factory was shipped earlier under TN government orders. On June 30, this was in news 2 days ago, on June 30, the Pollution Control Board Indore announced completion of incineration of all 337, not 370. Toxic waste at treatment, storage, disposal facility in Pithampura. All emissions of particulates, SO2, NO, etc. were found to be within limits. A real-time dedicated mercury tracking system was installed, 2 continuous air quality monitors in the villages. Incineration produced 800 tons of ash and residue for landfill disposal, and other materials including packaging used for toxic weighing 21 tons to be incinerated by today. So we hope okay. But as I said in the morning, we continue to have chemical industry accidents. One was, along with this report, one was about this blast in Telangana where 30 some died, maybe more. And the next day in Maharashtra, in Tamil Nadu, the cracker factory. And it is said that 4 fatal accidents happen in chemical industry daily in India. Most of them don't get reported if it's 1 or 2 died or if the news is suppressed. So this course by CPET is organized at the right time so that at least the industries in Jaipur area would be safer. Thank you. Praveen Kumar, Inspector Awareness among us. We all know him very much as PK Mast sir. And sir ka jo PK as PK Mast avatar hai, it is very creative and promoted for road safety through the poetry and videos. And his innovative approach and inspiring messages continue to resonate widely, impacting thousands across Rajasthan, and I would say through the social media across world. So we would like to welcome PK Mast sir, and now sir in his Mast avatar will tell us about the road safety and how we can save ourselves. क्योंकि इस मतलब हमारे इंडिया स्पेसिफिकली मैं बोलती हूँ, हमारी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरे को दे के रखते हैं. हमें रोड पे खड़ा हमारा जो रोड ऑफिसर है वो बताते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, नहीं तो आपकी जान जा सकती है. सो इस सेशन के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. सर प्लीज़. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं 5-7 मिनट ही बोलूंगा आपके बीच, क्योंकि मेरा सेशन नहीं था, मैं इधर से जा रहा था. तो मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? फिर आपकी तालियों की क्यों नहीं आ रही है? इस बात को दोबारा रिपीट करते हैं अपन. मेरी आवाज आ रही है भाई? आओ ची मत आओ, शादी के बाद इतनी निकल पा रही है. तो मेरे को कौन कौन जानता है, एक बार हाथ ऊंचा करो. देखो सर पीछे, एक बार देख तो लो, एक बार देख तो लो. ये हाँ, तो ये मेरे सब भाई वो फॉलोअर हैं जो मुझे देखते हैं. तो मैं तुम्हारे लिए यही कहना चाहता हूं कि अपने की एक्सीडेंट में जान नहीं जानी चाहिए, पर इस बात को कुछ और अंदाज से कहना चाहता हूं मैं
कि हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। जोरदार भारत माता और अपनी माँ के लिए तालियां बजाएं। हाँ लगा दे बेटे, इसको पढ़ाने में अच्छा रहता है। ज्यादा मुझे पता है इस समय लंच का टाइम हो गया है और रोटियों के बीच में कोई आ जाता है तो भारतवासी उसको सहन नहीं कर सकता। तो खाना जरूरी है। पहले मैं भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस था सर। पहले मैं जिम जाता था, फिर मैं धीरे धीरे जिमने जाने लग गया सर। पहले मेरे मसल्स थे, फिर वो कटल्स हो गई। पहले डोले थे वो गोले हो गए, कमर कमरा हो गई। मैं वी शेप में था, मैं डी में हो गया। तो आप अभी रहते समय रहते हर चीज सीख जाएंगे तो बड़ी त्रासदियां रुक जाएंगी ना, तो ये हंसी मजाक के माहौल से ही रुकेंगी। तो सबसे पहले मैं लाइट पढ़ा देता हूं आपको, 5 मिनट में रोड सेफ्टी पे जान बचेगी आपकी, ये भी आपकी सेफ्टी होगी। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे सब। तो बोलिए, लाइट्स होती हैं 3। आवाज कमजोर है, सीपेट जैसी नहीं लग रही, मजबूत नहीं लग रही, केमिकल की आवाज आनी चाहिए मजबूत, है ना। कि लाइट्स होती हैं रेड येलो, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। तो सबसे पहली सेफ्टी ये है कि अनसीन नहीं होना चाहिए। इन लाइट्स को सर हिंदी में कहते हैं बत्तियां। जयपुर में आपने MI रोड पे सुनी होगी, राज मंदिर पिक्चर हॉल है, उसके पास है 5 बत्ती। तो 5 बत्ती का लॉजिक मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी बत्ती होती है अगरबत्ती। जो नहीं मानेगा उसकी फोटो की चारों तरफ चलेगी। 5वीं होती है मोमबत्ती, उसके लिए कैंडल मार्च करेंगे, भैया तो बहुत अच्छा था, पर ये तो इंडिया है सर, यहाँ तो कैंडल नहीं सैंडल मार्च से काम चल। तालियां फिर कमजोर रह गई आपकी। सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है इनमें बताओ? ओ माय गॉड, रेड, रॉन्ग आंसर। सबसे डेंजर लाइट एक्सीडेंट के हिसाब से होती है येलो। ये 4 सेकंड जलती है, इंसान सोचता है मैं चल जाऊंगा, इधर से निकल जाऊंगा, इधर से निकल जाऊंगा, फिर दोनों मिलके निकल जाते। तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किस में होते हैं? येलो में। येलो गया। और रेड को अपन डेंजर इसलिए मानते हैं क्योंकि मिर्ची का रंग रेड, ब्लड का रंग रेड। और जब सर मेरी शादी हुई थी तो मेरी मिसेज भी रेड जोड़े में आई थी, तो ये खौफ कम होने का नाम ही नहीं। लेकिन एक्सीडेंट किस में होता है? अच्छा बेटियां बैठी हैं, इनके लिए 2 लाइन जरूर कहता हूं कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। अगला करो भाई। वेरी गुड सर। हेलमेट को समझिए ना बोझ, हेलमेट को पहने रोज। हेलमेट को लोग है ना प्रॉपर जगह नहीं लगाते, वो तो हाथ में रिस्ट वॉच लगा लेंगे, यहां टांक लेंगे, कई तो उसमें मिरर में टांकेंगे बाइक के। इसका मतलब है मैं मर जाऊं तो ऐसे हार चढ़ाना है आपने। और मेरी मिसेज तो गजब करती है सर, वो तो ऐसे पीछे बैठे के गोद में ले लेगी, बाकी ये तू कहां इसको सिर में लगा। और एक बात ध्यान रखना, हस्बैंड जो आगे चलाता है ना वो अपना तो अच्छा लेगा बढ़िया, और मैडम का ऐसा लेगा जैसे शाहरुख खान साहब ने पहना था ना पीला सा, दिल में मेरे दर्द डिस्को, फिर गिरते ही जाबड़े की हड्डी इधर को खिसको, पसड़ी वाली उधर को खिसको, हिप्स वाली फिर इधर को खिसको, तो लोग कहेंगे उठाओ इसको, ये बालक किसको, पहुंचाओ इसको। और अगर आपने किसी गंभीर घायल को पहुंचा दिया ना तो सरकार उसको 10,000 रुपए देगी और केंद्र सरकार 25,000 रुपए देगी। तो ऐसी हेल्प जरूरी है ना। ये जब ही होगी सर, एक के फादर एक्सपायर हो गए थे तो उसने मुझे 2 लाइन लिख के भेजी कि लौट आओ पापा। सेफ्टी का महत्व देखिए साहब, कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तरसाते हैं, न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं, कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। बहना चुप हो तो मम्मी रोती हैं, बातें ऐसी तो रोज ही होती हैं, कि लौट आओ पापा
ये नैन बुलाते हैं, क्योंकि आपके बिना तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं। और घर का मुखिया चला जाता है तो माहौल यूं हो जाता है कि क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने वाले। और दूर करना था तो मिलाते क्यों हो, मार कर जोर से सहलाते क्यों हो। पहले तो भरमा देते हो बच्चों की तरह, फिर पकड़ के गर्दन हिलाते क्यों हो, हिलाते क्यों हो। और छीनना ही था मेरे मौला, तो दिलाते क्यों हो, दिलाते क्यों हो। तो सेफ्टी का महत्व समझ में आया आपको? और आप सब नायक हैं, इस काम को अंजाम देंगे, अच्छे से सीख के जाएंगे जब ही तो देंगे। और ये नायक क्या करता है कि सब सोएं और हम जागें, दुनिया को पागल लागें, पर कोई न जाने पागलपन। तन्हा है क्यों व्याकुल मन का कहना क्या, जीवन में तन्हा रहना क्या। तारों के संग रहते हैं, अस्कों के संग बहते हैं, कोई सुनता है तो कहते हैं, वरना तो अश्रु बहते हैं। बहते अस्कों के धारे, मन में बहने दे प्यारे, बाहर ना निकले अश्रुधार, होने दे इतना उपकार। और इंसान वही तो लायक है, जो खुशियां बांटता नायक है। तो अपन हंसा तो कभी भी लेंगे। आज आपको मैं आ गया था बीच में, तो पता होना चाहिए कि कितनी जान कीमती है। बच्चों चलाते हैं सर, धूम मचा ले, फिर गिर जाए तो मम्मी बचा ले। किसी कमर की हड्डी टूटेगी तो कहेगा भगवान उठा ले, फिर भगवान कहेगा नहीं थोड़े दिन ऐसे ही चला ले। शुरू में यूं चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, ऐसा लगेगा शानदार। बाद में ऐसे चलते हैं जैसे रोल मॉडल चल रहा हो। दुर्योधन के रोल मॉडल कौन थे? शकुनी मामा। वो ऐसे चलते थे, एक्सीडेंट के बाद भांजे मैंने जान दे, जा। तो हंसी मजाक का किसी दिन अच्छा सेशन लेंगे। आज 2 मिनट का समय मैंने लेना था, तो मैं कहा चलो बहुत बढ़िया रहा ना। पर मेरे साथ अब सब दोहराएं लास्ट लाइन कि ये कैसे बचेंगी। सेफ्टी की अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तभी तो बड़े बड़े हादसे बचेंगे। भोपाल के जैसा सर कितना बड़ा बता रहे थे, बढ़िया बात। तो लास्ट लाइन मेरे साथ दोहराएं कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम जले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, भारत माता की। वेरी गुड। ऐसे जोश में टक्कर मत मार देना, भारत माता की। मेरा बच्चा कहता रहता है सर इसके साइड से ले लो पापा, ऊपर से ले लो, गाड़ी से ले लो। लोग नीचे से लेते हैं, दिक्कत आ जाती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके। Thank you, sir. Thank you very much for this very light and full of enjoyment and knowledge session. You made us emotional also. So we all take care of road safety. Thank you, sir. Thank you very much. Now, I would like to request all my participants, dear participants and dignitaries, now we will move for the lunch. Lunch arrangement are being made in administrative building, 2nd floor. So we will guide you to the way to the 2nd floor administrative building. Thank you, sir. Thank you very much.
जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है। चलो ठीक है सर, मजा आया, बहुत अच्छा समय दिया आपने। ठीक है, ओके ओके। आप यहाँ सीखने आए या आके आपकी गॉड है, कृष्णा गॉड है। अरे वाह, फिर किसी
Hope you all had a pleasant lunch. So now begin the session. So here we are truly honored to welcome Mr. Dr. D.D. Chaturvedi, a distinguished leader in environment, health and safety, and the current serving as the head of EHS Kota Chemical Complexes, is here to deliver a expert talk on labeling of chemicals and safety data sheet, classification, labeling, precautionary statements, and STS preparation guideline. Now I would like to invite Dr. D.D. Chaturvedi sir on the stage. Thank you. Hello, I'm audible, sir? Thank you. जितने भी उपस्थित और अनुपस्थित सभी हमारे और डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आए हुए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का इस सीपेट के जयपुर कॉम्प्लेक्स में स्वागत करता हूं मैं। डॉक्टर शिशिर और डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पांडा, चौधरी साहब, इन सब के रिक्वेस्ट के बाद आज मैं हमको भी एक डीसीएम श्रीराम इज इनवाइटेड फॉर दिस presentation on this chemical labeling and MSTS. मेरे को जस्ट वन डे बिफोर इसका एक इनविटेशन मिला कि एक प्रेजेंटेशन करना है, तो somehow I managed to that. Before starting, I want to clear about myself. I am not an engineer. I am not a consultant. I am a simple person who is working with the DCM Shriram, and earlier I was working with the Tata Chemicals. So I am the person who has done everything on hand experience, you can say. So my presentation will not have that word jargon or pictures, everything will not be there. Whatever I have gone experience in my last 31 year of experience in these two companies, that I have tried to sum up here. And before going into the presentation, just I want to share a few thoughts what I was just hearing in the morning. In one of the presentation, it was said that safety is should be our predetermined priority. But for me, because I started my career with Tata Chemicals, in the Tata Chemicals, I learned from that company, safety is not a priority, safety is my value. Priorities can be changed based on the scenarios, based on your operations, but your value will never be changed. Suppose my value is that I will always speak truth, that is my value. So value cannot change, your priorities can change. सेकेंड थॉट एक बहुत अच्छा एक इसमें, अच्छा मैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके रखूंगा। सेकेंड एक कोट दिखाया गया था, एल्को, एक कंपनी का नाम आया था एल्कोआ बेसिकली इज ए एल्युमिनियम कंपनी ऑफ यूएस। बहुत अच्छा थॉट था, लेकिन बहुत लोगों ने, आई डोंट थिंक सो कि लोगों ने उस एल्कोआ की स्टोरी के बारे में लोगों को पता होगा। आई डोंट थिंक सो। बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, आपने तो शायद पहली बार नाम ही सुना होगा एल्कोआ का। बट अगर आप गूगल, आज तो बहुत ऑन हैंड हो गया है, मोबाइल में है, चैट जीपीटी है, सब कुछ है, तो जस्ट यू गूगल इट एल्कोआ और आगे लिख दिए यूएस, फिर आप उसके बारे में एक समरी निकाल के देखें तो व्हाट यू विल फाइंड, व्हाई एल्कोआ इज ए case study for the safety. But same time it doesn't mean that Alcoa hired a consultant or implemented so many big names like safety system, ISO, nothing. They did nothing for the safety. But what, just let me just give the background of this Alcoa, why this Alcoa company is famous. Alcoa is an aluminum company in US. ये कंपनी ऑलमोस्ट 1800 समथिंग की कंपनी थी। तो ये कंपनी शुरू में बहुत प्रॉफिटेबल थी, ऑल ऑफ सडन दिस कंपनी स्टार्टेड गेटिंग लॉसेस एंड सो मेनी एक्सीडेंट्स वर स्टार्टेड हैपनिंग। अल्टीमेटली वन डे द मैनेजमेंट डिसाइडेड कि आइदर वी शुड क्लोज दिस कंपनी बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल एंड सो मेनी लिटिगेशंस ड्यू टू द एक्सीडेंट, एवरीथिंग इज हैपनिंग। हुआ क्या, मैनेजमेंट सेड लेट अस ट्राई वन मोर chance, let us take one more chance.
तो व्हाट दे डिड, उन्होंने उस कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन को चेंज कर दिया. करेक्ट. नाउ न्यू टॉप लीडर was appointed to run this company. But जब after the appointment, next day this new leadership visited to the site and एक common gathering को बुलाया गया. In that लोगों ने समझा कि now आज न्यू चेयरमैन है तो he will talk about this company performance, everything, कि how this company is performing now, how it was performing now, what are the plans, how I will run this company, blah 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 blah. What he did, he talked nothing about the company performance with respect to the financial results, business results के बारे में उसने कोई भी बात नहीं करी. He talked only and only about safety. उसने कहा from today, from this moment onward, we will operate safely. जो whatever you are operating, just do but with all safety. Only that message. Okay, now we have to focus only and only on the safety. Nothing. Why? Or after that, that company became profitable, accident started coming down. Now this is one of the business case for the safety. Okay, how company can transform their businesses to from bottom to the top with the proper implementation of safety system. And most important part is commitment from the leadership. आप में से सभी लोग, बहुत से लोग इंडस्ट्री से आए हुए हैं. Many are from the plant. आप में से कुछ लोग स्टूडेंट भी हैं जो शायद सीट में स्टडी कर रहे होंगे. ऐसे ही है ना? आई थिंक आप लोग कहाँ से आए हैं? ये फ्रंट बेंच बैठी हुई है, बताइए. हाँ, क्या करते हैं आप लोग? अच्छा, प्लास्टिक लेबोरेटरीज में काम करते हैं. वेरी गुड. तो वहां भी कुछ सेफ्टी के इश्यूज होते होंगे डेफिनेटली. कभी सोचा आज तक कभी सेफ्टी के बारे में, उस लैब के बारे में? अभी जो मेरा प्रेजेंटेशन है बिल्कुल लैब के लिए ही है, सारी केमिकल्स की बातें करूंगा. पॉइंट इज, जो लोग हु आर वर्किंग एट शॉप फ्लोर आर एज ए सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर, एज ए सेक्शन इंचार्ज, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट ऑफ सेफ्टी. एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे स्पेशली इंडिया में. सेफ्टी मीन्स सेफ्टी डिपार्टमेंट. सेफ्टी मीन्स सेफ्टी ऑफिसर. इफ एनी एक्सीडेंट हैपन, वेयर इज द सेफ्टी डिपार्टमेंट, वेयर इज द सेफ्टी ऑफिसर? अरे भाई, why you are asking the safety officer? Why you are not asking that madam who is operating that plant? Correct? The point is that safety is not the safety department or safety officer's responsibility. Safety is for the line function. In the line from top to up to the end of this end, person who is sitting at the end up to the that person's safety is required. Everybody has to think about in that safety. Otherwise safety में जो कहते हैं ना कि एक वो कमजोर कड़ी, मैंने वो स्लाइड कवर नहीं करी है, अगर आप गूगल करके पॉइंट एक वर्ड यूज करिए, स्विस चीज मॉडल होता है किसी भी एक्सीडेंट को होने के लिए. स्विस चीज मॉडल में आपने वो कार्टून देखा होगा, टॉम एंड जेरी. जेरी इज चूहा. चूहे को सबसे अच्छा क्या लगता है उस कार्टून में? पनीर खाता, वो चीज खाता रहता है. चीज में अगर आप देखेंगे उसका कार्टून और इमेज देखें, इफ यू विल सी, यू विल फाइंड सम होल्स होते हैं उसमें. तो स्विस चीज मॉडल में क्या होता है कि डिफरेंट जो किसी भी प्रोसेस और एक्सीडेंट हैपन होने के बीच में जो कंट्रोल्स होते हैं, दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय द चीज. तो इट इज सेड, जब सारे होल्स एक लाइन में आ जाते हैं तब एक्सीडेंट हो जाता है. पॉइंट इज, जब टॉप टू बॉटम अगर सेम सिंक्रोनाइज थिंकिंग नहीं है, सेम कमिटमेंट नहीं है सेफ्टी के बारे में, देन सर्टेनली यू विल हैव टू फेस द एक्सीडेंट.
सेकेंड पॉइंट मॉर्निंग में डिस्कस हो रहा था, वो डिस्कशन वैसे भी अलग से भी हुआ। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है अबाउट दिस एजुकेशन सिस्टम, सीपेट भी उसका एक पार्ट हो सकता है। और मेरी डॉटर ने जस्ट अभी इंजीनियरिंग अभी 2 साल पहले कंप्लीट किया, और उसके फ्रेंड्स भी प्लस हमारे अपनी माई ओन कंपनी डीसीएम श्रीराम जीटीज, दे आर कमिंग टू ज्वाइन एज ए इंजीनियर. What I found that all the new generations who are coming in the industry for a job, what is happening, they don't have the exposure of industry. Whatever they are studying in the classroom, in the CPET, in the IIT, in the triple IT, XYZ, any engineering college, they are not exposed to the real. What is, how I will going to apply my this knowledge to the industry. It is not computer science. Please, I am not talking about the computer science. Please, I am talking about the core engineering. Correct? So that's why my humble request to all the institutes. I also Shishir sir से भी मेरी बात हुई. So yes, it should be part of your 5-year or 6-year program. कि at least 6 to 12 months they should have some exposure training at least in the industry. रिस्क की बात हो रही थी मॉर्निंग में. रिस्क में कहा सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी. मैं कहता हूं सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी से भी इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर. हाउ मच यू आर एक्सपोज टू द हैजार्ड. फ्रीक्वेंसी कितनी बार होता है, क्या सीवियरिटी है, उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कितना आप शेर के पास जाते हैं, उतना ज्यादा आपको रिस्क है. राइट? तो एक्सपोजर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हैजार्ड मैनेजमेंट. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मॉर्निंग में डिस्कस हुआ कि इतने सारे लोग ट्रेनिंग में आए हैं, तो एक कुछ किसी ने कोई लाइटर कमेंट डाला था कि ट्रेनिंग में किसी के बारे में, अच्छा आप तो आए होंगे तो आपको कोई काम नहीं होगा. जो एक फैक्ट है उसको डोंट टेक अदरवाइज. ट्रेनिंग में उन्हीं लोगों को भेजा जाता है. किसको भेजा जाता है, कोई बताएगा? इस तरह के बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में या कहीं बाहर होता है तो कोई आइडिया? चल, ये तो एक प्रकार हो गया. वो दूसरा प्रकार क्या है? देखिए, ये देखिए दिल की बात आई. डोंट टेक दैट वाइज, अदरवाइज प्लीज डोंट टेक, प्लीज, दिस इज द फैक्ट. तभी सर मॉर्निंग में बार बार आपको टोक रहे थे, बिकॉज यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. आप ये सोचिए, सपोज मैं, आई एम फ्रॉम डीसीएम श्रीराम सेफ्टी डिपार्टमेंट, आई एम हेडिंग दैट फंक्शन. My whatever I learned in last 30, 31, 32 years, I am trying to share with you. Whatever I will tell you, that will be based on my own personal experience, which I got in my field experience in Tata Chemicals and the DCM Shriram. So that's why this type of program is very important. इसमें आपको real time, real life examples मिलते हैं. So now I will come starting this presentation. Presentation is very simple. This is chemical labeling and MSDS, very common word. Labeling word is very common. कोई भी product होगा, there will be label, correct? और MSDS बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत ने नहीं भी सुना होगा. मैं चाहता हूं कि आप में से जो आगे बैठी हैं ये लैब वाली लोग, आप में जानते हैं MSDS? सुना कभी आपने? बताइए. 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं और आप लोग लैब में काम करते हैं. एंड यू डोंट नो दिस वर्ड, हाउ यू आर वर्किंग इन अ लैब. आई एम सरप्राइज्ड. रियली लैब में काम करती है ना? आई एम राइट? और आपको MSDS नहीं पता है? अच्छा, कितने लोगों को पता है? चलो हाँ, कुछ लोगों को पता है यार, बट आपको नहीं पता. लैब में काम करती हैं, केमिकल्स हैंडल करते हैं. यस और नो? अरे बताइए, अरे यस बोलिए तो सही. और आपको MSDS नहीं पता है. एनीवे, तो अब पता हो जाएगा आपको. चलिए शुरू करते हैं. MSDS क्या होता है? तो पहले तो
क्योंकि ड्यूपॉन्ट इज हियर। तो सेफ्टी पॉज, हम जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वी टेक फर्स्ट टॉक अबाउट द सेफ्टी। सेफ्टी पॉज मतलब एक क्षण को रुक करके, 1 मिनट रुक करके वी विल टॉक अबाउट द सेफ्टी। अब आप ये बताइए, इस कमरे में अचानक अगर फायर हो जाए तो आप किधर भागेंगे? जल्दी से बताइए, इमीडिएटली किधर भागेंगे? इधर कि इधर? इधर भागेंगे। वो एग्जिट तो वो लिखा हुआ है यार, इमरजेंसी गेट की तरफ भागेंगे। जहां से हम लोग वहां से भाग जाएंगे। वेरी गुड, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। या हाँ, प्लीज, बिकॉज ड्यूपॉन्ट इज विद अस, DSS, शी इज फ्रॉम ड्यूपॉन्ट। I haven't heard anything from the masters of ceremonies here that what are the emergency escape routes within the facility, within your own campus, because we are the outsider. हम तो बाहर से आए हैं, ये भी बाहर से आए हैं, मैं भी बाहर से आई हूँ। यहाँ आग लग गई, कुछ भी इमरजेंसी हो गया, भागना कहाँ है? Where are the emergency exits? Where are the assembly points? तो safety briefing, it has nowhere been come from. कहीं से आया नहीं, किसी ने endorse नहीं किया. Did you people thought of, there are 100 people sitting in this room, and it is whose responsibility? Is the responsibility of the management or the organizing committee here? Sorry, it's being a very blunt question, but I feel it's an important thing to talk about. Yes. Absolutely, absolutely. When it's being focused on safety, it means that you want to compromise on the safety of your own people and the guest here. I don't see any fire extinguisher in this room. So I would request maybe the master of ceremonies or the facilitators that we should have a small safety briefing where everyone need to be educated, a 2-minute short video of an entire campus where exactly are the escape routes and the assembly points. Yeah. So that's my humble request. So this is what we want to sensitize about, that it's not only the safety is a topic which we want to preach. You have to start living that in. If you are not starting to living that in, it's not going to happen. Correct. So the safety starts at an individual level, at your home and at your workplace. So that's where I started in the morning. My question was, how many of you have worn the safety belt today? So hardly out of 100 people, gentlemen and gentle ladies, there were 3-4 hands raised. So that was an amazing response. Thank you. Thank you so much. Yeah, please. Basically, what we do in safety pause, जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई भी एक लार्ज गैदरिंग होती है, that time we tell कि सपोज कोई इमरजेंसी होगी तो हमारा इमरजेंसी एग्जिट क्या होगा, हमारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स क्या होंगे, मेरे को किस डायरेक्शन में, किस असेंबली पॉइंट पर, किस नियरेस्ट पॉइंट पर जाना है. These are the 3-4 basic information which is given in this safety pause. Correct? Now come to the next. Second and most important is, please make your mobile phone on vibration mode. Now this is the वेरी कॉमन इंसिडेंट. हम अक्सर, जैसे अभी फ्यू डेज मंथ्स बैक एक एक्सीडेंट हुआ जयपुर में. ड्राइवर ही टर्न द टैंकर ऑफ एलपीजी और इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ. करेक्ट. वो तो एक एलपीजी था और उसमें बहुत कुछ चला गया. बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हमको रिपोर्ट होते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट कंपनी विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीन. अमोनिया हम यूज़ करते हैं, वीसी हम बनाते हैं, काफ़ी केमिकल्स हमारे यहाँ, CO2 आता है, कई चीज़ें हम टैंकर से बाहर से परचेज भी करते हैं. वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? मैनी टाइम्स क्या होता है कि हमारे पास, हमारे सिक्योरिटी के पास, सेफ्टी के पास इंफॉर्मेशन आती है कि साहब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक टैंकर पलट गया है, उसमें से कुछ रिसाव हो रहा है और नथिंग इज रिटन ऑन दैट टैंकर. अब समझ में नहीं आ रहा इसमें हमें करना क्या है, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या करना है. तो दैट्स वाई दिस केमिकल लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस केमिकल लेबलिंग टेल्स यू कि ये क्या केमिकल है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या इमरजेंसी सिचुएशंस है, किसको इन्फॉर्म करना है. दैट्स वाई दिस केमिकल लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट. अब बात आती है
केमिकल लेबलिंग ना होने से व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकते हैं? फर्स्ट इज वेरी कॉमन, आप लोग लैब में बैठे हुए हैं, बहुत बार क्या होता है, कोई बॉटल रखी है उस पर लेबल ही नहीं है, आप जानते हैं उस पर ये इसके अंदर मैंने कल ये केमिकल फिल किया था, बट वो तो नहीं जानते हैं जो आपके नया कोई आया। सपोज उसने कोई किसी ऐसे केमिकल में मिक्स कर दिया जहां पे कोई वॉलेंट रिएक्शन हो जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, वेरी कॉमन। प्लस दूसरा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बॉटल भर के रखी हुई है, बिस्लेरी की बॉटल रखी हुई है, मैंने आया, प्यास लगी थी, सनलाइट हो जाता, देन वी इमीडिएटली स्टार्ट एंड ड्रिंक। वेरी कॉमन इंसिडेंट ये होता है। सेकेंड, रॉन्ग केमिकल, मैंने आपको बताया, अगर प्रॉपर लेबलिंग नहीं है यू कैन मिक्स एनीथिंग। दिस हैपेंड इन वन ऑफ द कंपनी वेयर लैब में सेम इंसिडेंट हुआ, H2SO4 के उस पर बॉटल पे रॉन्ग लेबल लगा हुआ था। वो हम immediately we are not able to identify what chemical is this, किस टाइप का प्रिकॉशन लेना है, किसको इम्पोर्ट करना है। बंद हो गया, कोई बात नहीं। हेलो, नेक्स्ट इज लीकेज ऑन द वे। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके टैंकर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइट टू द कस्टमर साइट पे जाते हैं, वहां पर अगर कोई ऑन द वे इंसिडेंट हो जाता है तो देन दिस लेबल्स कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई, टेक द नेसेसरी इमरजेंसी एक्शन एंड आल्सो टू द इन्फॉर्म टू द एक्चुअली हु इज मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट केमिकल। देन कंपैटिबिलिटी ऑफ द केमिकल, आप लोग लैब में हैं, अगर proper labeling is on that bottle or container, you will able to understand based on the compatibility chart of the chemical कि किस केमिकल को किसके साथ रखना है, किस पे नहीं रखना है। करेक्ट, दैट इज बेनिफिट। नॉन कंप्लायंस ड्यू टू रॉन्ग लेबलिंग, ये बहुत बार होता है, कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें लेबलिंग इज रिक्वायर्ड, लाइक MSIC रूल हो गया, हजार्डस वेस्ट रूल हो गया, NFPA की कोडिंग्स हो गई, इनमें जो है अगर रॉन्ग लेबलिंग हो गई तो नॉन कंप्लायंस हो सकती है। देन यूसेज प्रॉब्लम ड्यू टू इनकम्प्लीट लेबलिंग, मुझे पता ही नहीं कि किस कंसंट्रेशन का केमिकल है, वो पार्ट फट गया है, घिस गया है, फेड हो गया है, वी डोंट नो, तो हम पता ही चलता है किस कंसंट्रेशन का वो है। यूज मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रीज एंड आवर डे टू डे लाइफ, यूज ऑफ एम्प्टी केमिकल कंटेनर्स एंड ड्रम फॉर स्टोरिंग द ग्रेन। आप देखें बहुत से मार्केट में आपको इस तरह के ड्रम्स मिल जाएंगे जो हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। वी डोंट नो कि ये किस पर्पस के लिए, किस केमिकल का ड्रम था ये, हम उसमें गेहूं चावल सब कुछ भर के रख रहे हैं। करेक्ट, देखिए ये रॉन्ग लेबलिंग के कारण डॉक्टर रेड्डीज ने अपनी ड्रग्स को वापस बुलाया, ये भी रिसेंट न्यूज है, देखिए कुछ डेट भी लिखी होगी, 2019 की जस्ट मैंने सैंपल डाला था। रॉन्ग लेबलिंग से क्या हो सकता है? अब केमिकल लेबलिंग से होता क्या है? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल, क्या सब्सटेंस है, किस तरह की उस पर क्या क्या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इट इंक्लूड्स द specific hazard, precautionary measures, first aid procedures, all these information is available on the your chemical label. और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो वर्ल्ड दे आर गोइंग फॉर द ग्लोबल हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ऑल वर्ल्ड जो भी केमिकल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन होंगे, दे विल हैव अ स्टैंडर्ड लेबलिंग सिस्टम, दैट इज GHS। Why important? It helps to avoid accident. Correct? मैंने बात करी। Tells who made this, उस मैन्युफैक्चरर का नाम भी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग इज कम्स ऑन द लेबल।
कैसे स्टोर करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी। सपोज कोई ऐसा केमिकल जो हैजार्डस है, कैन एक्सप्लोड, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे MIC का दिया, सपोज पानी उसमें चला गया था तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो दिस टेल्स कि आप जो हमने बात करी कंपेटेबिलिटी चार्ट की बात की, व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट। देन रिड्यूस द एम्प्लॉयर, अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आई एज ए यूजर आई कैन यूज इट प्रॉपरली। और कौन कौन से रूल्स इसके लिए एप्लीकेबल हैं? फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर इंडिया इज, जो लोग इंडस्ट्री से दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, MSIC रूल 1989. दिस रूल हैव so many requirements. This has a list of 684 hazardous chemicals जिनके लिए रूल एप्लीकेबल होता है। उसमें बेसिकली जो बहुत क्रिटिकल मैं लेबलिंग की बात करूंगा अभी। इसके अलावा फैक्ट्री आल्सो सेज कि भाई आपको एज ए फैक्ट्री अगर ऑपरेट कर रहे हैं देन यू हैव टू हैव अ प्रॉपर लेबलिंग सिस्टम। Hazardous waste rule is also one of the requirement where any waste should have a proper labeling system. And now मैंने कहा GHS फ्रॉम 2003 डिसाइड हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वी विल हैव टू हैव अ कॉमन लेबलिंग सिस्टम, दैट इज GHS सिस्टम. And also if you are exporting to the European countries, then REACH is also one of the compliance for this chemicals export import. आपने बहुत ऐसे पिक्चर्स देखी होंगी, देखिए ना सर, तो बस मैं इसी की बात करेंगे आप लोग, क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में है, जो लोग केमिकल मैन्युफैक्चर करके टैंकर में अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पेट्रोकेमिकल से हों, चाहे पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हों, IOC, HP, लाइक अस, हम लोग HCl, क्लोरीन, ऑल दोज हम सेल कर रहे हैं, हाइपो हम सेल करते हैं, कार्बाइड हम सेल करते हैं। तो ऑल दिस केमिकल्स के लिए हमारे पास प्रॉपर लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है वो भी कहता है कि आप जो टैंकर है इट शुड हैव अ प्रॉपर लेबलिंग ऑल थ्री साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तीनों तरफ प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए। और लेबलिंग में जो इंफॉर्मेशन आनी है उनका साइज भी बताया है कि किस जगह पर क्या इंफॉर्मेशन होगी और उनका साइज क्या होगा। मैं डिटेल में ही जाऊंगा। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन ईच टैंकर। अब बात करते हैं GHS की, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं। आजकल इंडिया जो हो गए ना कि मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाएंगे और बाहर बेचेंगे, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होगा हमारा। तो GHS में 2003 में आया, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था हार्मोनाइज्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द सब्सटेंसेस मिक्सचर्स अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ, एनवायरनमेंट, फिजिकल हैजार्ड, एंड दे शुड आल्सो हैव अ स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डेटा शीट। MSDS नया नाम है SDS, सेफ्टी डेटा शीट, वो हम बाद में समझेंगे। इट इज लाइक दैट, अगर वी आर इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट, हम बाहर शिपिंग कर रहे हैं या कैसे भी उसको सेल कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, इट विल हैव दिस टाइप ऑफ GHS लेवल। इसमें भी टोटल 6 तरह की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तब हम कहेंगे कि हमने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। करेक्ट? फर्स्ट इज सिंगल वर्ड, दिस लेबल शुड टेल कि ये क्या है, डेंजर, और दूसरा वर्ड यूज होता है वार्निंग। यहां पे 2 वर्ड होते हैं GHS में। सेकेंड फिर आता है पिक्टोग्राम, पिक्चर से मालूम पड़ गई व्हाट टाइप केमिकल इज दिस। थर्ड इज हु इज द मैन्युफैक्चरर। देन फोर्थ इज हमें सपोज एनी एक्सीडेंट अगर कोई हो जाता है हमारे से, तो उसको कैसे, उसका फर्स्ट एड कैसे होगा, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है, और उसमें क्या हैजार्ड है। देन उस प्रोडक्ट का नेम और आइडेंटिफायर्स। फिर एनीवन कुछ कहा किसी ने? नेक्स्ट इज सिंबल। तो उस GHS सिंबल में ये 9, ये जो हमारे कैटेगरीज हैं, अगर आप देखें तो टोटल कितनी हो गई, 9 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं।
कुछ की सब कैटेगरीज हैं, बट दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच विल हैव अ जीएचएस सिस्टम में. इस पिक्टोग्राम से हमें उसको शेयर करना है. ये वो क्लासेस हैं. फर्स्ट इज एक्सप्लोजिव, सेकंड इज गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल सॉलिड्स, ऑक्सीडाइजर्स और peroxides, then poisonous, radioactive, corrosive and miscellaneous other chemicals. These are the 9 types of chemicals which needs GHS labeling. Single word. There are 2 words, danger or warning. वार्निंग में आपको अलर्टनेस के बारे में कि आप बॉस ये खतरनाक केमिकल है, आप थोड़ा सा सावधानी से हैंडल करें. बट डेंजर मीन्स मोर देन दैट. अगर सम केमिकल्स हैज दिस वर्ड डेंजर मीन्स कि वार्निंग से ऊपर की बात हो रही है. अब बात आती है जब फ्लेमेबल मटेरियल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, देन इट्स कम्स द एनएफपीए कोड. एनएफपीए कोड्स में 4 कलर डायमंड्स का यूज होता है, जिसमें रेड, ब्लू, येलो एंड व्हाइट का यूज होता है. उसको कैसे करते हैं अभी देखते हैं. ये दिस, अगर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके ऊपर इस तरह का एक सिंबल होगा टैंकर पर, और हर एक कलर का अपना एक मतलब है, एक पर्पस है. करेक्ट. आप देखिए सिंबल में यहां तक बता रहा है कि इट इज टेलिंग नो वाटर. आपको सिंबल से ही इंफॉर्मेशन मिल जा रही है कि मेरे को इस केमिकल की इमरजेंसी में आई डोंट हैव टू यूज द वाटर. आपको समथिंग एल्स यूज करना पड़ेगा उसको हैंडल करने के लिए. हो सकता है कि इन जो भी केमिकल पर इस तरह का सिंबल डब्ल्यू पर क्रॉस कट ऑफ किया हुआ है, इट मींस कि दैट केमिकल कैन बिकम वायलेंट विद द यूज ऑफ वाटर. दिस टेल्स दिस 4 कलर डायमंड सिस्टम. लास्ट में मैंने बात करी थी हैजार्डस वेस्ट की. हैजार्डस वेस्ट क्या होते हैं? हमने मॉर्निंग में लगभग 1 से 1.5 घंटे हैजार्ड्स के बारे में पढ़ा था ना सर? कितने लोगों ने पढ़ा था सर? बताएं सर. सिर्फ एक आदमी ने हाथ उठाया. 2, 3, 4, रुक रुक के उठ रहे हैं. आगे वालों ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था. वो तो सिर्फ लगता है कि पार्टी में आए हैं. आज 2nd फ्लोर पे खाना बना था, बेहतरीन मटर, कौन सा पनीर था पता नहीं, बटर पनीर था, दाल मखनी नहीं, अरहर की दाल थी और मिक्स वेज थी, रोटियां थी. रोटियों में कौन कौन सी रोटी थी? एक थी किसकी, मिस्सी रोटी थी, नान थी, और वो थी बटर वाली कौन सी रोटी थी, और चावल भी था, आइसक्रीम भी थी, और क्या गुलाब जामुन भी थे, और लास्ट वो भी था, क्या कहते हैं, वो सलाद भी था. ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए सीपेट में आगे वालों के लिए. डोंट जस्ट ट्राइंग टू कीप यू हियर एंड टू एंगेज इन द प्रोग्राम, बिकॉज अगर सपोज मॉर्निंग में लगभग 1 से 1.5 घंटे सर ने प्रोग्राम दिया, आप उनका प्रोग्राम स्लाइड्स देखिए, उसका कंटेंट देखिए, उन्होंने कितना कुछ उस प्रोग्राम में 1 से 1.5 घंटे में बताने की कोशिश करी है. बिकॉज मैं उस फील्ड का हूं तो मैं समझता कि उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, अभी ही सेड कि ही नेवर यूजेस सेम प्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट प्रोग्राम. He always obtains the entire presentation next program में वो कर देते हैं. तो आप भी सोचिए, उनका डेडिकेशन देखिए. सेम वे मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया, तो आई वांट कि यू जस्ट बी हियर एंड कनेक्ट व्हाट आई एम इन्फॉर्मिंग यू, टेलिंग टू यू. तो हैजार्ड्स की बात हुई थी. हैजार्ड की बात करने के लिए बिल्कुल मेरे जो गुरु थे कवि, एक उन्होंने वर्ड यूज किया था CIRT. लिख लीजिए CIRT. आप लोगों में से बहुत, मैं क्योंकि आई एम फ्रॉम कोटा, तो कोटा इज ए कोचिंग हब, पता है सर? सारे डॉक्टर इंजीनियर वहीं पैदा होते हैं हिंदुस्तान के, बड़े बड़े दिग्गज. इवन उस कोचिंग में नहीं होते तो भी वो फोटो छाप देते हैं कि इसे मेरे यहाँ से ऑनलाइन तो पढ़ी था साहब. नहीं, आई एम सीरियसली टेलिंग. एक व्हाट्सएप पर और उस पे इंस्टाग्राम पे एक रील दिखाई गई इसकी, स्पेशली उसको एलन ने भी दिखाया, मोशन ने भी दिखाया, और एक कोई कोचिंग है, तीनों ने सेम स्टूडेंट को दिखाया कि भैया इसने मेरे यहाँ पढ़ा था. पता नहीं भाई भगवान का वो
3 रूप होगा कि एक ही समय में तीनों जगह पढ़ रहा था। वो गजब बच्चा था भाई, बहुत ही हाईली टैलेंटेड। उसने 3 कोचिंग ज्वाइन करी थी एट सेम टाइम। तो आई एम फ्रॉम कोटा। तो जो कोटा में जो पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री वगैरह में, वहां पे वो कविता की फॉर्म में सिखाते हैं केमिस्ट्री वगैरह, पीरियोडिक टेबल स्पेशली, करेक्ट है ना सर? तो मैं भी CIRT पढ़ा है। CIRT, सी क्या होता है? कोरोसिवनेस। अगर कोई भी केमिकल मटेरियल कोरोसिव है तो ये हैजार्डस है। आई, इनफ्लेमेबिलिटी है ना, अगर उसमें आग लग सकती है तो भैया वो हैजार्डस है। आर, कोई है? वेरी गुड मैडम, बहुत सही लगता है, मैडम ने बिल्कुल पढ़ाई करी है। रिएक्टिव, अगर उसमें रिएक्टिविटी है, कुछ भी अगर आपने पानी डाला, कुछ भी किया, ओपन एयर में रखा, अगर उसमें रिएक्टिविटी है देन इट इज ए हैजार्डस। एंड आर के बाद टी, टॉक्सिसिटी, अगर वो टॉक्सिक है। अच्छा, आप में कितने लोग जानते हैं टॉक्सिसिटी कैसे डिफाइन की जाती है? अभी मैं पढ़ूंगा आगे में, जस्ट टू कीप यू एंगेज प्लीज। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर आपका? ओ थैंक यू वेरी मच, तालियां सर के लिए। तो टॉक्सिसिटी अगर है तो देन दैट मटेरियल और केमिकल और वेस्ट इज हैजार्डस। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाया है। इट सेज कि व्हेन एवर यू विल स्टोर इट, व्हेन यू विल ट्रांसपोर्ट इट, यू विल हैव टू हैव दिस टाइप ऑफ लेवल ऑन दैट वेस्ट। जिस कंटेनर में वो जाएगा उस पे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टोर भी करेंगे तो इस तरह के फ्लोरेसेंट येलो बैकग्राउंड का पेपर होगा, ड्रम पे आपको चिपकाना होगा। दिस इज द लेवलिंग फॉर द हैजार्डस वेस्ट। नाउ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, MSDS। मैंने आप लोगों के लिए देखिए MSDS के क्या क्या नाम रखे हैं। पहला नाम देखिए माई स्टोर एंड डिस्पोजल सिस्टम। भैया मेरी कंपनी है, जैसे चाहो वैसे स्टोर करूंगा, जैसे चाहो वैसे डिस्पोज करूंगा। MSDS इज सेफ लाइक दैट। दूसरा, मैक्सिमम सेफ डिस्पोजल शॉप, यहां पे लाओ कुछ भी डिस्पोज कर दो, डोंट वरी, मैं हर माल हर कबाड़ खरीदता हूं आपका। दैट इज MSDS। थर्ड इज मार्केटिंग एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट सिस्टम। हमारा काम क्या है? सेफ्टी का मार्केटिंग करना, मैक्सिमम प्रचार करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना खतरे के बारे में, हैजार्ड्स के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में बताना। दैट्स व्हाई आई एसोसिएटेड वर्ड मार्केटिंग। आपको अगर अपना कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी वर्कशॉप या कुछ भी करना है, अगर आपने ढंग से उसको प्रेजेंट नहीं किया, मार्केटिंग नहीं करी, लोगों को बताया नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर, दैट इट विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट इज माई सेफ्टी डिपार्टमेंट। मेरे सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो सिस्टम बनाया दैट इज MSDS। लास्ट इज मटेरियल स्टोरेज एंड डिस्पोजल सिस्टम, मटेरियल एंड सेफ्टी डिस्पोजल सिस्टम। लास्ट इज मटेरियल सेफ्टी डेटा सिस्टम एंड मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। दिस इज द लास्ट। तो हमारा जो MSDS होता है मैडम, क्या होता है? जन्म कुंडली होती है, जन्म पत्र होता है किसी भी केमिकल, किसी भी चीज का, यू नेम इट, MSDS तो होनी होना है। अभी बात करेंगे MSDS के बारे में। कुछ ऐसा दिखता है, खासतौर से जो लोग लैब से या इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, उनको MSDS कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है सर? जिसको आफ्टर दिस इंप्लीमेंटेशन ऑफ GHS सिस्टम, नाउ वी आल्सो से SDS, सेफ्टी डेटा शीट। इसमें नॉर्मली 10 to 16 सेक्शन होते हैं। हमने 10 to 16 क्यों लिखा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए 10 to 16 मैंने इसलिए लिखा, जो हमारा इंडियन स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट दैट इज मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989 में जो शेड्यूल 9 है, दैट सेज कि MSDS ऐसा होना चाहिए। तो हमें अपनी इंडियन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है, सेम टाइम GHS रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो दैट्स वी अडॉप्टेड 16 पॉइंट MSDS। 10 तो इंफॉर्मेशन उसमें होनी ही चाहिए, मिनिमम 10 इज रिक्वायर्ड। व्हाट आर दोज? अच्छा, उससे पहले इसका पर्पस क्या है आप लोग समझें खासतौर से। इट टेल्स अबाउट पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर।
हाउ वर्क सेफली विद द केमिकल प्रोडक्ट। अच्छा, आप लोग क्या कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं? खड़े हो जाइए। केमिकल्स के नाम बताइए आपकी अगर लैब है तो। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसीटोन। बेंजीन भी यूज करती है? बेंजीन यूज होती है? आप बेंजीन यूज करती हैं, एसीटोन यूज करती हैं और आपको एमएसडीएस नहीं पता है। आई एम रियली सॉरी। आप बेंजीन यूज कर रही हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा बेंजीन का साइड इफेक्ट क्या है, प्लीज। My job is to open your eye and to make you aware कि what is required. MSDS contains much more procedures are related all the information of material than the label and is prepared by the supplier. Label से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है MSDS में। आप लोगों के घर पर सब लोग फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मच्छर हर जगह हैं। आप लोग क्या यूज करते हैं मच्छर के लिए? ऑल आउट। और कौन सा आता है प्रोडक्ट? गुड नाइट, मॉर्टिन आता है ना। कभी अपने उस डिब्बे कछुआ छाप अगरबत्ती आती है साहब, मॉर्टिन की अगरबत्ती भी आती है साहब, वेरी गुड। तो कभी जो ये आप लिक्विड लेके आते हैं, कभी उस डिब्बे को ध्यान से देखा है उन्हें? उसके अंदर एक कागज निकलता है। कोई पढ़ सकता है उस कागज को? हाथ उठाओ जो उसने पढ़ा हो आज तक। उसको मैं अभी यहीं पर बुला के उसको इनाम दूंगा भाई। आपने पढ़ लिया? कैसे लेंस से पढ़ा होगा भाई साहब? ऐसे तो नहीं पढ़ सकते आप, बिना हैंडलर लगाए तो नहीं पढ़ सकते आप। अगर आपने पढ़ा तो आपकी आंख 6x6 से भी ऊपर ही लगता है फिर तो। पॉइंट इज दैट हमने कभी भी उस पेपर को खोल के नहीं देखा। कभी देखा? कभी। हम तो सिर्फ डिब्बा खरीदते हैं, पुरानी वाली को हटाते हैं, नई वाली लगा देते हैं और क्या करते हैं? पुरानी वाली को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। बस इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा अभी आप। इसमें भी एमएसडीएस से डिस्कस करेंगे इसको भी हम। तो एमएसडीएस में क्या हैजार्ड है उस प्रोडक्ट के, हाउ टू यूज, व्हाट टू डू इफ एक्सीडेंट अकर्स, रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ ओवर एक्सपोजर एंड व्हाट टू डू इफ सच इंसिडेंट अकर्स। ये सारी चीजें उस कागज के प्रिंटेड पेपर पे लिखा हुआ है। As why it is required? As a Factory Act 48, as a occupier, I have to give this information to my team, my field supervisor, section incharge, जो ऑपरेटर है, इंजीनियर है, उसको मेरे जिम्मेदारी है कि मैं उसको इस केमिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूं। सेकेंड, MSIC रूल कहता है इट इज द ऑक्युपायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव MSDS एज पर द फॉर्मेट शेड्यूल 9। करेक्ट? आपकी जो लैब इंचार्ज है उनसे कल MSDS मांग लीजिएगा कि सर आप तो बेंजीन यूज कर रहे हैं, एसीटोन यूज कर रहे हैं, HCl यूज कर रहे हैं, H2SO4 यूज कर रहे हैं, बट अगर कभी H2SO4 गिर गया या HCl गिर गया, करना क्या है मेरे को? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, यस इट मस्ट बी रेडी अवेलेबल। आपके जहां वर्किंग बेंच है, वर्क प्लेस है, आपका जो ऑफिस है, जहां पर आपका केबिन है प्लांट में, वहां पर MSDS इज मस्ट। हार्ड कॉपी टू अवेलेबल टू द एम्प्लॉई एंड सेफ्टी एंड हेल्थ कमेटी रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ऑन द रिक्वेस्ट प्रोवाइड करना होगा। एज पर फैक्ट्री एक्ट क्या रिक्वायरमेंट है? सेक्शन 4 सेज कि आपको MSDS प्रोवाइड करना है। सेम वे MSIC रूल 17 सेज कि आपको MSDS प्रोवाइड करना है। अब उसमें होता क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये देखें आप। 16 पॉइंट जो GHS में यूज होता है और जो 10 पॉइंट इंडिया में यूज होता है, तो मोस्टली हम लोग 16 पॉइंट यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से हैजार्ड
physical data, fire explosion, activity, toxicological, preventive, first aid, manufacture and disclaimer. MSDS कब यूज करना है? सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग, कोई भी न्यू केमिकल अगर इंट्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में, आपकी लैब में, यू विल हैव टू फर्स्ट रीड द MSDS. चाहे वो कितने साल से कोई भी बहुत अच्छा केमिकल है, कुछ भी है, बट फर्स्ट यू हैव टू रीड दैट MSDS. So it will tell you this hazard, safe handling, storage instruction और इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है. ये 4 इंफॉर्मेशन वहां से डायरेक्टली मिलती है. मैंने पहले ही बताया MSDS बहुत बार अगर आप गूगल करोगे तो डिफरेंट टाइप के MSDS निकलेंगे. डोंट वरी, वो एज पर द कंट्री रिक्वायरमेंट, एज पर द स्टेचुरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनमें सम हाउ सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अवेलेबल होती है. यस, क्या मेरा एज ए इंडस्ट्री, आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द केमिकल, तो क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने जब 1963 में DCM श्याम का प्लांट स्टार्ट किया था, जो कैल्शियम कार्बाइड का MSDS बनाया था, क्या उसको अपडेट करना है कि नहीं करना है? यस. समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नए नए कंट्रोल्स मेजर्स आते हैं, नए नए हेल्पिंग के PPs आते हैं, नए नए चीज़ें, डिस्पोजल्स की इंफॉर्मेशन आती है, फर्स्ट एड क्या करना है, हर चीज़ समय के साथ अपडेट होती है. इवन जो आपका नीचे लास्ट में सप्लायर इंफॉर्मेशन लिखी वो भी चेंज हो रही है. तो आपको तो हर समय उसको यू हैव टू कीप इट अपडेटेड. अब बात करते हैं इंटरप्रेटेड. फर्स्ट पॉइंट इज दिस टेल्स योर क्या केमिकल है, उसका कैश नंबर होगा, UN नंबर होगा और रजिस्ट्री नंबर होगी. हर केमिकल, चाहे वो इंडिया में यूज हो, चाहे US में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, सबका एक यूनिवर्सल नंबर होगा, कैश नंबर और UN नंबर होगा, जो कि आपको MSDS से मिलेगा. फिजिकल डेटा और केमिकल डेटा, सॉलिड है, लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी है, pH है, this information will be available in that MSDS as long as it is not a traded product. कोई ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया जिसका मैं ट्रेड सीक्रेट है मेरा, फिर भी वो बेस तो बताएगा ही कि ये कैसा कंपाउंड है, एल्कलाइन है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, क्या pH होगी या कौन सा केमिकल बेस होगा. फायर और एक्सप्लोजन डेटा, अगर उस केमिकल को हैंडल करते समय कुछ प्रॉब्लम होती है या इसमें फायर हो सकता है, देन दिस इज इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू फ्लेमेबिलिटी, फ्लैश पॉइंट उस केमिकल का क्या है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या, और क्या क्या हैजार्डस प्रॉपर्टीज है. देन रिएक्टिविटी डेटा, मैंने आपसे कहा था आइस, पता है ना आपको. तो रिएक्टिविटी, हाउ केमिकल इज स्टेबल, इनकॉम्पेटिबिलिटी, रिएक्टिविटी, हैजार्डस रिएक्शन, प्रोडक्ट, अगर रिएक्शन हो गई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. देन हेल्थ हैजार्ड, अगर मैं उस केमिकल, जैसे मैंने कहा बेंजीन के बारे में आप कहा, अगर आप बेंजीन का MSDS देखेंगे तो आप यू विल गेट टू नो कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, इसके क्या साइड इफेक्ट है. इसमें 3-4 चीजें वर्ड यूज होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आप नोट कर लीजिए. TLE, स्टेल, पेल, ये 3 वर्ड जो हैं आपको पता होने चाहिए किसी भी केमिकल को हैंडल करते समय. थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू जो है आपकी शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट जो है हर केमिकल के लिए अलाउड है कि आप कितने मिनट तक, कितने देर तक इसको और कितना कंसंट्रेशन को एक्सपोज हो सकते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या PP यूज करना है. सपोज बेंजीन यूज कर रहा हूं, उसमें ग्लव्स पहनना है कि नहीं पहनना है, कोई उसमें से मास्क यूज करना है कि नहीं करना है. HCl यूज करती हैं आप, कितने % का होता है HCl बताइए. हाँ हाँ 30. और H2SO4, अरे आप लोग तो खानदानी हो यार, इंडस्ट्री से आए हो, इनको बताने दो. आप लोगों को बहुत जरूरी है, लैब में काम कर रही हैं आप लोग. मैंने 7 साल तो PhD में अपने खाए हैं लैब में, और आई एम द पर्सन जिसने एक्सीडेंटली सिप करते समय सोडियम साइनाइड पिया था. वो तो फॉर्चुनेटली मेरा साथ, मेरा फ्रेंड वहीं साथ में था, तो उसने एंटीडोट पहले से तैयार रखा हुआ था. तो आज मैं आपके सामने हूँ. दिस इज लॉन्ग स्टोरी. लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब मैं आई वाज डूइंग माय PhD,
देन इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड मेजर्स, अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या फर्स्ट एड लेना है, क्या इमरजेंसी है, क्या एंटीडोट लेना है, दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड। अगर गलती से चला गया, एक्सपोज हो गए, तो क्या एंटीडोट लेना है। Additional information, references, then manufacturer information, and last is disclaimer, जहां पे वो लिखता है कि मैंने सेल कर दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये ब्ला 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 सब कुछ लिखा होता है। कैश नंबर क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुत ब्रीफली। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने जो है कुछ नंबर्स रजिस्टर किए हैं दैट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट एंड केमिकल और इसके इंग्रेडिएंट्स को। यूएन नंबर है, यूनाइटेड नेशन का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड TDG has classified the hazardous substances and given the 4-digit number to each chemical. वेपर एक्सपोजर जानते ही होंगे आप लोग, वेपर डेंसिटी जानती हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है MSDS से। क्रिटिकल टेम्परेचर, फ्लेमेबल लिक्विड है कि नहीं, फ्लेमेबिलिटी की कितना होगा टेम्परेचर की जो फ्लेमेबल हो जाएगा, हाईली फ्लेमेबल कब कहते हैं, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल कब होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको MSDS से मिलती है। LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, कितनी कम कंसेंट्रेशन एयर में प्रेजेंट हो जब वो एक्सप्लोज होगा, डज नॉट अकर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ इग्निशन, बिलो विच, उससे नीचे अगर एयर में है तो एक्सप्लोज नहीं होगा। इसी तरह से UEL अपर एक्सपोजर लिमिट, इंडस्ट्री वाले जानते हैं जो पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, इस तरह की, यहां पर LEL और UL इज वेरी क्रिटिकल फॉर दैट। हम लोग एक्सप्लोजिव मीटर यूज करते हैं ना सर, बिल्कुल। फ्लैश पॉइंट, आप एसीटोन की बात कर रही थी, बस पास में डायरेक्ट नहीं, पास में ही माचिस ले जाके देखिए क्या मजा आता है फिर एसीटोन के केस में, बेंजीन के केस में। इग्निशन टेम्परेचर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो टेम्परेचर जिसमें अपने आप आग लग जाए गर्मी होने पर। सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमको किससे, MSDS से। like diethyl ether, IDLH, आपके लिए जो लोग टॉक्सिक बेंजीन यूज कर रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल्स यूज कर रहे हैं, IDLH, TLV थ्रेशोल्ड वैल्यू, सेफ वैल्यू टू वर्क, इस कंसंट्रेशन तक अगर अवेलेबल है तो आई कैन वर्क इन दिस एटमॉस्फेयर वर्क प्लेस। 8 आवर्स एवरेज वैल्यू, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ले 15 मिनट तक बस। अगर सपोज ये कंसंट्रेशन है, उसमें लिखिए इस कंसंट्रेशन पे 15 मिनट से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। LD50 जैसा कि बताया, लीथल डोज 50 कि 50% एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, उस बेसिस पर LD50 कैलकुलेट होता है। इसी तरह से LC50 एग्जाम्पल भी दिया है मैंने डाइऑक्सिन के बेस फॉर्म में। स्टिल शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट TWA। अब लास्ट था, इस मेरा प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट पे आ गया है। आप अगर इसको थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करके देखें, बिकॉज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, आप देखें कि केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो लेबलिंग एंड मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट की बात हो रही है, और डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के सौजन्य से ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, होल पर्पज इज जो ये केमिकल्स हैं इनकी सेफ्टी को हम कैसे इंश्योर करें। इसलिए ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, MSDS या लेबलिंग, उस केमिकल के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हम MSDS को प्रॉपरली ढंग से स्टडी नहीं करेंगे तो कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। क्योंकि केमिकल्स आप तो लैब में बस 2.5 लीटर की बॉटल आपकी होती है या 5 लीटर का कंटेनर आ सकता है मैक्सिमम, लेकिन हम लोग तो बल्क में यूज करते हैं, मीटर क्यूब टनेज में बात करते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से पूछिए, हमसे पूछिए, जहां पर हम लोग बड़े बड़े लार्ज टैंक्स में इसको स्टोर करते हैं। जैसा कि जयपुर का एग्जाम्पल दिया जो एक्सीडेंट हुआ था फायर का, तो हम उस लेवल की बात हो रही है। आप सोचिए कि आप तो बहुत छोटे हो, इसलिए दिस टू लेबलिंग एंड MSDS इज वेरी क्रिटिकल फॉर आवर ऑपरेशन।
चाहे वो नया आदमी हो चाहे वो पुराना हो। नए के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि उसको ये फर्स्ट डे ही शुड नो कि मैं जो केमिकल हैंडल करने जा रहा हूँ या जिस प्लांट में ऑपरेशन में पार्टिसिपेट या उसका टीम का मेंबर बनने जा रहा हूँ, व्हाट आर दोज हजार्ड्स, क्या क्या इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना है। लास्ट इज जो इस टॉपिक का पॉइंट था, प्रिपरेशन गाइडलाइन, जो आज का प्रेजेंटेशन था। तो हमें एज ए MSDS सबसे पहले इंश्योर करना है कि जो भी केमिकल हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वी शुड यूज 16 पॉइंट फॉर्मेट। कोई भी न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो रही, न्यू केमिकल लगा जा रहे हैं, कोई नया हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट शुड फॉलो द 16 सेक्शन फॉर्मेट। सेकेंड इज क्लियर एक्यूरेट केमिकल आइडेंटिफिकेशन। गोल मोल वो ट्रेड सीक्रेट वाली बात मत करिए कि साहब वो तो मेरा ट्रेड सीक्रेट है इसलिए केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। अगर नहीं बताएंगे तो एक्सीडेंट विल हैपन, और हम एज ए सेफ्टी डिपार्टमेंट या जो भी उसको हैंडल करने जा रहा है, फायर डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट या आपका ऑपरेशन का आदमी जो है, जैसे हम लोग सपोज कोटा में क्लोरीन मैन्युफैक्चर करते हैं, अमोनिया होती है, तो क्लोरीन के 900 टन के टनर्स हम केजी सिलेंडर्स हम सबको सेल करते हैं। तो वी आर द उस पूरे एरिया में राजस्थान में केवल 2 ही क्लोरीन मैन्युफैक्चर हम हैं या लॉयड केमिकल्स अलवर में। तो कोई भी क्लोरीन का इंसिडेंट कहीं भी होगा तो सबसे पहले कॉल हमारे पास ही आएगी कि भैया वो क्लोरीन का इंसिडेंट हो गया है, नाउ वी हैव टू कंट्रोल इट। तो पॉइंट इज दैट कि जब तक आप क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वी विल नॉट एबल टू हैंडल द इमरजेंसी। क्लासिफाई द हैजार्ड, उससे क्या हो सकता है, इस केमिकल्स के क्या क्या हैजार्ड्स हैं वो बताना बहुत जरूरी है। सिंगल वर्ड हैजार्ड प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, उससे डेंजर का है, वार्निंग का है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। फर्स्ट एड क्या लेना है, सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, फायर फाइटिंग के केस में क्या क्या चीजें यूज करनी है नहीं करनी है, अगर स्पेज हो गया तो क्या करना है। देन हैंडलिंग एंड स्टोरेज गाइडलाइन कैसे करनी है, अगर एक्सपोजर लिमिट्स क्या है उसकी, कितनी देर तक उसको हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन से पीपीज आई हैव टू यूज इट ड्यूरिंग दैट केमिकल यूसेज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी, देन उसकी स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी क्या है, देन टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा अगर टॉक्सिक मटेरियल है। नाउ कम टू द 12th पॉइंट, जो हम ही फेंक देते हैं कोई भी कंटेनर कोई भी केमिकल यूज करके, सपोज हम हार्पिक यूज करते हैं घर में, टॉयलेट साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला येलो वाली बोतल आती है वो भी यूज होता है घरों में, जैसे मॉर्टिन और वो आता है, तो ये सब का प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट एक नया सिस्टम लेकर के आई है, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रोड्यूस कर रहा है ही हैज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्पोजल आफ्टर द यूज ऑफ दैट मटेरियल, EPR। सपोज मैं अपना कोई प्रोडक्ट, अभी आप अगर देखें तो इस बॉटल के ऊपर या चिप्स का पैकेट देखें, कुछ भी देखें, हर एक पर एक CPCB ने एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हो, कहाँ है रजिस्टर करिए, और जितना प्लास्टिक मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा उतना प्लास्टिक आपको रिसाइकिल करना है। आइदर यू कलेक्ट योर रैपर्स और इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वेट का प्लास्टिक रिसाइकिल करिए, दैट द गवर्नमेंट इज कमिंग दैट वे। डिस्पोजल ऑफ मेथड क्या होगा, मेंशन द डिस्पोजल, कैसे वो बॉटल डिस्पोज की जाएगी। देन ट्रांसपोर्टेशन अगर करना है तो क्या ध्यान रखना है, रेफरेंस एप्लीकेबल कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, और लास्ट इज आपने कब लास्ट रिवाइज किया था और कब आपने उसको प्रिपेयर किया था। दिस इज ऑल अबाउट द, मैंने बाकी तो बहुत डिटेल है उतना नहीं जाऊंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू। Dear participant, if you have any questions, yes sir. Thank you very much, sir. You have provided a very standardized approach. My point is that so many cancer hospitals are there. Cancer hospital जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर भी है, लेकिन जो उसका रेडियो एक्टिव जो रिलीज हो रहा है क्या एनवायरनमेंट के अंदर और उसके जो डैमेज हो रहा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इन द प्रोएक्टिव मेजरमेंट के प्रिवेंशन मेजरमेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि उसके सामने जाइए तो आपको इतनी ज़बरदस्त बदबू आती है कि उसको हम, जबकि उसके पास में
डेयरी का बूथ भी है और वेंडर में तंबाकू बेचने वाले वेंडरों की 4-4 दुकानें भी हैं, लेकिन कोई इसका ऊपर सेफ्टी। तो क्या ऐसा सिस्टम डेवलप है जिससे कि वो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बने, ह्यूमन सेफ्टी भी और गुड एनवायरनमेंट बने? राइट सर, आपने कैंसर हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लिया और उसमें आपने दो चीज़ें मेंशन करी। फर्स्ट इज रेडिएशन और सेकंड आपने जो कहा कि इसमें आती है सामने जाने से। तो पहले प्रश्न का पहले पार्ट का जवाब आपको मैं देता हूं। देखिए, जहां पर रेडिएशन का यूसेज होता है, आप में सभी लोग जानते होंगे BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, जो एनी मतलब एक्सरे शॉप से लेकर के हॉस्पिटल जहाँ पे इस तरह के रेडिएशंस के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, हर एक को एक लाइसेंस इशू होता है और साथ में एक रेडियो एक्टिव सोर्स इशू होता है, करेक्ट। और साथ में एक चीज और दी जाती है, कोई बताया साहब क्या दी जाती है? बताएं सर, जो लोग मैकेनिकल फील्ड वाले हों, मैकेनिकल इंजीनियर अगर कोई आया हो, जहां रेडियोग्राफी होती हो, एक्सरे नहीं, मैं बताता हूं। एक चीज साथ में और इशू करते हैं, दैट इज नोन एज डोजीमीटर। वो क्या करता है कि वो ये बताता है कि अ पर्सन हु इज यूजिंग दैट रेडियो एक्टिव सोर्स, अ रेडिएशन सोर्स, दैट डोजीमीटर एब्जॉर्ब दैट रेडिएशन। वो ये बताता है बॉडी में जो जा रहा है कितना रेडिएशन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, दैट इज मेजर्ड बाय द डोजीमीटर। तो BARC उस डोजीमीटर को अपने पास बुलाती है और चेक करती है कि आप कितना रेडियो एक्टिव सोर्स आप एक्सपोज हो चुके हो। दैट्स द वे दिस रेडिएशन सोर्सेज आर कंट्रोल्ड। आपने चीज ध्यान दी है, जब कभी आप एक्सरे करने के लिए जाते हैं, आपका कोई एक्सरे होता है, आपने ध्यान दिया होगा, आपको तो वो ला देता है नीचे कि भाई तेरा तो एक्सरे लेना है, और खुद क्या करता है, दीवार के पीछे लाता है। क्यों भाई? वो ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दैट रेडिएशन, एक्सरे से अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट आप एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपका ट्रीटमेंट होना है तो आपको उतना तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करना ही करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो पार्ट है कि बहुत बदबू आती है हिंदुस्तान में। आज जब सर मॉर्निंग में शेषी सर बात कर रहे थे, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, हमने उसके बाद सीखा। उससे पहले हम सिर्फ दो में ये बताया गया कि हाउ टू सेटअप अ इंडस्ट्री, हाउ टू सेटअप इंडस्ट्री, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो। उसी के अंदर एक रूल और बनाया सर आपके लिए, जो आपका प्रश्न है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल। बायोमेडिकल वेस्ट रूल भी आया, जिसका पर्पस ये किसी भी हॉस्पिटल, OHC सेंटर, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ भी हैं, उनसे जो भी इस तरह का बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा, दैट विल बी फर्स्ट टू प्रॉपरली उसका केमिकल ट्रीटमेंट होगा। According to the type of biomedical waste, it will be stored different bins. Then finally, it will be collected by the authorized recycler, जो कि उस biomedical waste को incinerate करेगा, जलाएगा, डंप करेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वो जनरेट होने के और डिस्पोज हो जा रहा, उस बीच में उसका केमिकल ट्रीटमेंट, दैट ट्रीटमेंट इज नॉट हैपनिंग। दैट्स वाई दिस, आप जो स्मेल की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज हैपनिंग। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है ना, वही वाली बात की रूल भी बना सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना तो हम ही को है। जैसे इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इस बारे में एक बड़ी अच्छी सी एक 2 लाइन की कविता है। आप लोगों ने अशोक चक्रधर साहब का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, पता नहीं नई जनरेशन तो सुना ही नहीं होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। पुराने लोगों ने अगर सुना हो तो सुना हो, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा आप लोग। अशोक चक्रधर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करते हैं, अब रिटायर हो गए वो शायद। उनकी बड़ी अच्छी कविता है, दया, धर्म, सत्य, अहिंसा। दया, धर्म, सत्य, अहिंसा से अपना इतना नाता है, सत्य, अहिंसा, दया, धर्म से अपना इतना नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं और दिवाली पर पुत जाता है। थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you very much for this enlightening session. And आपका ये जो last lines थे काफ़ी moment को light करने वाले थे. Thank you very much, sir. Now I would like to request our principal, sir, Dr. Vishnu Prasad Panda, kindly felicitate our guest, our speaker, Dr. Didi Chaturvedi ji, for with a memento of thanks. His presence here today is a great privilege for us. He will deliver an informative session on Global Harmonized System, GHS classification, introduction to physical health and environmental hazards. So, Environmental hazard by Mr. Aman Sharma, Global Regulatory Affairs Consultant, Reach Compliance Service Limited, Paramount Count, Coring Road, Dublin, Ireland. So we will welcome Mr. Aman Sharma for his session. Sir, we welcome you. Thank you so much, and
First, I would like to say thanks to CPAT and Vishnu sir, who is, uh, partnering with our company from last 1 year. And I am helping to students to develop skills in the chemical regulatory affairs divisions. And myself, Aman Sharma, and I am from Reach 24H Consulting Group. Our headquarters is based in Ireland, and we have offices in worldwide, like in Taiwan, Japan, US, UK, Europe, Germany, and we have some co-partner companies worldwide. And my expertise is like I am helping chemical industries, in the export and the import clearances, and we are helping in the REACH registrations. We are helping in the chemical registration in different countries. Maybe they need to follow some compliances. And my topic is very similar to the Chaturvedi sir, who is describe about the safety data sheet, GHS regulations. But today I have two topics. So one is related to the Indian chemical legislations and the standards and the guidelines, which is very relevant to the industry, chemical industry and the petrochemical industry safety. And the second topic is related to the GHS and also for the safety data sheet. So now maybe I can start my present. It is not opening. Why? HTML तो नहीं है। मैं आपको
committee which is known as Occupational Safety and Hazards Committee in the Bureau of Indian Standard, and they are trying to develop 16 section safety data sheet which is exactly matching with the format of the GHS. So this is the one progress from the Ministry of Chemical and Fertilizer, Government of India. And the last year they scheduled an event on the CAM India portal, and the CAM India portal, everyone is aware about the CAM India portal. I am asking the questions to CAM. Okay, so I am describing now in my slides. So my first slide is, started from national and international chemical compliances. As I know, the European have very famous regulation in chemical sector, which is known as REACH regulations. So my company name is like that, like REACH 24 as consulting group. The REACH stands for registration, evaluation, authorization, and the restriction of the chemicals. This is the full form of the REACH. And every country is trying to develop own regulations, which is similar principle. We can say they are matching with the REACH registration concept. And the most focused and the objective for the REACH is like to avoid the extra animal testing, and to protect the environment, to protect the human health, to protect the physical hazards. Like that, this is the main agenda to develop the REACH regulations in every country. So if I am talking about India, India also designed India REACH around 10 years back, but there is no update recorded because the latest draft was published in August 2020, and that is still in the draft stage. It is not implemented in India, but the regulation is designed by some councils and the associations with the help of Ministry of Commerce and Industry in India, and which is known, which is very famous chemical association, which is known as Chemical Export Promoting Councils in India, CHEMICIL. So now, if I am talking about the India regulation, we have very old regulations and very existing regulation. I will explain in the next slide. And just I am telling. To follow these chemical regulations and the act which is published by the different countries, and these are very similar laws. Like we have to register, we have to notify, we have to provide the toxicological data, we have to provide the analytical data. Then we can get the registration certificate from the authority after the evaluation. So on the same page, India is also working on that, and I will tell you like what we are progressing nowadays in India and what is the initiative taken by the government of India nowadays. So okay. So this is the common, the legislation in India. The rules are very, very old, and they need amendments in India as per the advanced regulation in different countries. So if I am talking about the chemical legislation landscape in India, you can see there are lot of legislation applicable on the chemical industries, like ozone depleting substances regulation and controls 2000, which is published by the Ministry of Environment and the Forest, climate change. And also there is another two hazardous chemical regulation, which is known as manufacture, storage and import of hazardous chemicals regulation 1989, and the chemical accident emergency planning, preparedness and response rules 1996. And another one is the Chemical Weapon Convention Act 2000. So the hazardous chemical regulations, the main primary authority is Ministry of Environment, Forest and the Climate Change. So
if I am talking about the India reach, so as I told, the India is trying to develop their own legislation, which is exactly matching with the reach registrations. But the thing is, the India reach will replace these two regulations, the existing regulations, MSIHC regulation 1989 and the 1996. So if India reach is implemented, so these two regulations will be replaced. And again, if I am talking about the regulation of the persistent organic pollutants rules 2018, these are also, matching with the Stockholm Convention, and they listed, some chemical which is, coming under the category of the persistent organic pollutants. So these are also published by the Ministry of Environment, Forest and the Climate Change. And another one is the regulation of the polychlorinated chlorinated biphenyls order 2016. So these rules are also published by the Ministry of Environment, Forest and the Climate Change. So why I am telling to you all these rules? Because these rules somewhere, helping in the industry safety norms, also protecting the environment, also protecting the hazards, health hazards, human hazards, like that. And if I am talking about the transport of hazardous chemicals, there is a strict regulations in India, like which is coming under the Motor Vehicles Act 1988, and the rules which is formed under this act, which is known as Central Motor Vehicle Rules 1989. Now, as we know, these are very old regulations. So what is the future of India? Who is shaping the future of Indian chemical sector in India? So the answer is the Bureau of Indian Standard. Nowadays, you can see lot of chemicals require the certificate under the Bureau of Indian Standard. If you are manufacturing any chemicals, so you need license from the Bureau of Indian Standard. So Bureau of Indian Standard, what is doing? Like they have, published lot of standards. These standards, cover the safety, quality, and labeling, and the packaging, the storage, transport, these type of the things they are, covering in the Indian standards. So according to the BIS Act and the regulation, there are 4 major schemes. And if I am talking generally about the chemicals, so there only 72 chemical QCO has been published as of now, which is required mandatory license from the Bureau of Indian Standard. I will show you in the next slide, like which chemicals require the BIS mandatory certifications, and how they are doing, such type of the things under the roof of BIS, and confirming the safety and the quality of the chemical industries. Now, the most updated thing is CAM India portal. The CAM India portal is launched by the Department of Chemical and Petrochemical. Every registered chemical and petrochemical units in India is mandatory to register on the CAM India portal. So why it is mandatory? So the thing is, every country have their own, inventory of the chemicals. They have, maintain the data of the chemicals, like these are the hazardous chemicals, these are the non-hazardous chemicals. And if I am talking about the REACH regulations, they have, particular one SVHC candidate list, which is known as substance of very high concern. So that type of the things, the India of government is thinking to develop in India. So they need data of the chemicals and the petrochemicals, like, so they can maintain, the inventory of the chemical inventory of India. So now they publish the rules, in February 2024, and these rules are, published in the Gazette of India, and they, mandate to the chemical and the petrochemical industries, like you need to provide the data related to the export, import, along with IUPAC number and the cash name, and also you need to give, purchasing data, sales data, annually or monthly basis. So this is the one initiative, we can say this is the initiative for, development of chemical inventory in India. And the second thing is mandatory declaration for import of chemicals, and also for the export. Suppose if I want to export some chemicals, or maybe the export of import of chemicals, so I need to give the information to the DGFT, like I need to provide IUPAC number, cash number, like that, and full composition of that particular mixtures, or maybe the chemical
chemical mixtures or the single chemicals or multi-constituent chemicals. So this circular is also mandated by the DCPC, Department of Chemical and Petrochemical, recently. So these are the updates from the India part. And now the question is how I will know that my chemical industries comes under these rules, or maybe which rules I need to follow. So that is the major questions. So every chemical regulations which is published by the government of India, they have some list of the chemicals in the regulations. So we need to identify like which chemicals is present in the list and is exactly matching with my manufacturing chemicals. So that means that is the blind hit. We can find out like, yeah, this chemical regulations is applicable on my manufacturing unit. So these are some existing inventory list of the chemicals where we can read about these lists, like Schedule 1, Schedule 2 and Schedule 3 of the chemicals under the Chemical Weapon Convention. And the chemicals under the BIS Scheme 1, there are around 72 chemicals are present nowadays. And the chemical under BIS Compulsory Registration Scheme, there is only 3 chemicals which is presented in the Compulsory Registration Scheme, and they require the mandatory certificate from the BIS to run the manufacturing unit. And nowadays BIS is actively doing the market surveillance. They are picking the sample from the market, like if you are not following the criteria of the Indian standards, or if you have no ISI mark, or you have no any the license for that chemical which is coming under the scope of the BIS, so that means your manufacturing unit can be seized, can be penalized, or whole stock may be seized by the Bureau of Indian Standards. So that is very, very growing regulations in India. And some of the some of the stakeholders and the consultation stakeholders, or maybe the council or the associations, assuming that maybe India REACH will not be published, but maybe the Bureau of Indian Standard will increase the list of the chemicals which is applicable on the chemical industries. Maybe it will be increased in the few years, so India REACH can be avoided. So these are the two theories, like maybe the BIS can be expanded, or maybe the India REACH will be implemented. So now I am coming to the chemical listed under the Draft Chemical Management and the Safety Rules 2020 India REACH, which is known as India REACH. And around 750 chemicals are mentioned under the Schedule 2 of the India REACH. These 750 chemicals, known as hazardous chemicals. That means you need to notify and register your chemicals if the India REACH is implemented in the future. So now I will explain like what is the Bureau of Indian Standard. Bureau of Indian Standard is the national standard body of India who ensure the product quality, safety, and also ensure properly quality, purity of a chemical or maybe the product. So the BIS certifications may be mandatory, maybe the voluntary, but if any chemical QCO has been published by the Bureau of Indian Standard, that means it required the mandatory certifications from the Bureau of Indian Standard. So now, as I mentioned, 72 chemicals QCO has been published, and these are coming under the scope of the Bureau of Indian Standard. So Bureau of Indian Standard is applicable on the domestic manufacturer as well as foreign manufacturer. Suppose if I am domestic manufacturer, they have very well maintained portal, BIS portal, where we can register on the portal and we can submit the chemical details, and we can follow the Indian standard criteria, and we can submit the document checklist on the Indian portal, and then we can get the certificate after a successful audit by the BIS on the manufacturing premises. So they will grant the license, and you can follow the Indian standard safety criteria. And in case of the foreign manufacturer, they need to appoint authorized Indian representative in India. Like suppose if you are importing a chemical from any country, suppose if I am giving an example, you are importing a chemical from Germany. So the Germany company will appoint a authorized Indian representative in India. That means he will
submit the whole application on the behalf of foreign manufacturer, and they will track the application status from the authority, like which is known as Bureau of Indian Standards, and AIR will communicate with the BIS if there is any progress in the application process, and if everything is as per the Indian standard, and the manufacturing premises following the procedures which is published by the Department of Chemical and Petrochemical through product manual, so they will give the license to the foreign manufacturer. But before that, they will audit the manufacturing premises in the foreign country. So who will audit the foreign premises? The Bureau of Indian Standard appoint officers who will go to the foreign entity, and they will inspect all the things which is exactly mentioned in the Indian standard. So on the behalf of that report, they will grant the license to the foreign manufacturers, which is known as the chemical manufacturers, maybe in this lecture. So there are three key documents which is need to understand the BIS Act and the regulation. These are Indian Standard, Product Manual, and the QCO. So the Indian Standard is tell the parameters, exactly parameters, like what parameters you need to follow, like what if I am taking an example of any chemicals, like which will be the purity content, what will be the pH, what will be the color of that particular chemical, what will be the packaging and the labeling. So that all the things is mentioned in the Indian standards. So exactly manufacturing unit need to follow the Indian standards, and the product manual is for the BIS officers. They will follow the sampling procedure according to the product manual, and then they will go to the manufacturing site, and they will check, and they will pick the sample, and they will test the samples, and if the sample is passed by the BIS recognized labs, so they will grant the license to the licensee. And the quality control order means they will issue first QCO, like they will mention the implementation date into the quality control order. That means in every QCO you will find a date where that means that chemical need the license from this date. Before that date you can easily produce, you can sell, or maybe you can import the chemicals from different countries. But after this date, which is mentioned in the QCO, that means you require the mandatory license as per the BIS norms. So this is the BIS Act and the regulations, and these are the three key documents under the Bureau of Indian Standard. So there are four major schemes, as I mentioned. Like one is the ISI scheme. ISI scheme have broad product categories, and the second one is the compulsory registration scheme, and the third one is the certificate of conformity, and the fourth one is very new scheme which is added to the Bureau of Indian Standard criteria, which is known as Omnibus Technical Regulations for Heavy Machineries and Equipment. So if I am talking specially for the chemicals, so only scheme 1 and the scheme 2 is applicable on the chemical industries, because these two schemes only consisting the chemical part. So you need to check like which chemical is mentioned under these two schemes. If your chemical is matched, so then you need to get the license from the BIS department. So this is the basic principle to understand the BIS Act and the regulation. So I mentioned the the link here. You can see in the small letters. You can click on this link, and you can find the list of the chemicals, and you can match, like if your chemical manufacturing unit is producing such type of the chemicals, so you can aware your department like, yeah, our chemicals coming under the scope of the BIS license, and we need to maintain the manufacturing as per the Indian standards and also the testing parameters. So that is the one thing about the Indian chemical regulation. So these are the list of the chemicals. You can check, these are the chemicals which required mandatory certificates from the BIS department. Maybe these chemicals could be increased in future. It can cross 100 chemicals maybe by next year in 2026.
So day by day they are publishing more Indian standards, and DCPC is also concerning about to increase the quality of our product and the testing criteria, which is exactly matching with the advanced standards which is published in different countries. So this is the normal procedure how we will get the license from the BS department. Like you need to gather the documents according to the Indian standards, and then you need to apply through the portal, because there is a portal, and we need to submit all the document checklist as per the BIS official website or BIS Act and Regulation 2016 and 18. And then the third step will be like BIS will, appoint a officers who will audit the manufacturing premises, and after evaluation of the documents which is submitted by the manufacturing premises, so they will withdraw the sample, and the sample will be tested by the BIS recognized lab. I think CPET is also going to for the testing part of the BIS maybe in the future, because as Vishnu sir told me, like they are also trying to develop BIS recognized labs in the near future. So maybe you need to go in detail about what is the Indian standard, what is the criteria for that chemicals, because it is a bright scope if you are working on the Indian standards to understand the Indian standards. And if all the samples is matching with the Indian standards criteria, then the license will be issued by the BS department. This is the CRS scheme, which is majorly known as for electronic products, which require the BIS certificate. And but if I am talking about the chemical part, there is only 3 chemicals are listed under the compulsory registration scheme. These 3 chemicals are orthophosphoric acid, polyphosphoric acid, and the trimethyl phosphite. So maybe in future they can increase this list as well, but in this case there is no inspection required, like there is no factory audit principle existing in these regulations, because the reason is the CRS claims like this is the self-declaration conformity. Like you need to send first sample to the BIS recognized lab, and the BIS lab will issue the test reports. Then the test reports you need to submit on the portal along with the application, then you will get the license. So this is very different from the scheme 1. So these are the 2 schemes which is applicable on the Indian chemical industries. So this is all about the BIS Act and the regulations. So now these are the key updates. Like last year, these are the WTO notified chemicals. The 11 chemicals was notified. Like we will add these new chemicals into the list of the BIS. And apart from that, the 3 chemicals already added to the scheme 1, which is mostly used in the plastic industries, such as polyvinyl chloride and polypropylene. And the third part is the remaining 8 chemicals is also in the consultation phase, and the Department of Chemical and Petrochemicals and the several associations and the councils are discussing like when we can add these chemicals, because the WTO phase has been crossed by these chemicals, and now in upcoming months these 8 chemicals may be added into the BIS scheme 1. And if I am talking about the recently added chemicals, these are the 3 chemicals: H acid, K acid, and the vinyl sulfone. These 3 chemicals also require the mandatory BIS certificate, and these are the upcoming QCO in the next 2 months. These are the 5 chemicals. Like in the August month, these chemical QCO will be implemented, and if after the August these 5 chemicals also needed the BIS certificate. So if your chemical company is producing such type of the chemicals, then you need the license from the BIS department. So this is medical and the surgical gloves. This is for the for the medical companies who is producing the gloves, and also taking the raw materials, chemicals, or maybe which is using these type of the stuffs. So these are also published in this year in the WTO, and they are also they can add into the scheme 1. Now I am coming to the India REACH. As I mentioned, these 2 regulations will be replaced
if India REACH is implemented, these two regulations known as manufacture, storage and import of hazardous chemicals 1989, and the another one is known as chemical accident emergency planning preparedness response and the rules. So if I am talking about the safety norms, so most of the safety norms you can find in the second regulation, which is known as chemical accident emergency planning preparedness response rules. So according to these rules, you need to you need to establish your company in a way so you have proper off-site emergency plan, on-site emergency plan, mock drills, regular mock drills, safety audit reports you need to perform. So such type of the things are mentioned in the second rules. And if I am talking about the first 1989 rules, these are mostly focused on the manufacturing, storage and import of hazardous chemicals. So if India REACH is coming, these two chemical regulations merge into one regulations. So that will be the only one regulations which will be known as Indian Chemical Management and the Safety Rules in future. But most of the industrial professionals are assuming like India REACH will not come because BIS is actively working on the Indian standard of the chemicals. So that is the dilemma situation as of now. So let's see. So let's see in the future like what will be happen. But the first focus of India is to prepare the GHS alignment of our regulations, like for the classification, labeling, and to prepare the inventory of the chemicals. That's why they published the rules related to the Chem India portal to take the data from the chemical industries, and also they have published 2 to 3 Indian standards which is relevant to the hazardous dangerous goods classification, transport of dangerous goods, and also related to the material safety data sheet format. So these Indian standards follow the UN GHS criteria. I will show in the next slide. So this is the Chem India portal. The objective of the project is to collect, compile and analysis of real-time data received from the chemical and the petrochemical industries, and that is majorly used for the chemical inventory of India. And you can see the first they published the website in October 2023, and they noticed anyone is not not concerning about these rules. Then they published on the official website, but nobody is interested in the Chem India portal as they noticed. So that's why finally in 2024 in the initial months they published in the Gazette like, yeah, this is the mandatory requirement, you need to submit the data, and this is the portal interface. And nowadays the CPET is the concerning institute who is giving the training to the chemical and the petrochemical industries about the Chem India portal, like how you will register, how you will submit the data on the Chem India portal. And I am going to Mumbai tomorrow, and they have the chemical import exporting promoting councils, and also DCPC, the Department of Chemical and the Petrochemicals, scheduled a workshop on the 7th July. So in this event they are telling to the chemical and the petrochemical industries like how we will submit the chemical and the petrochemical data on the Chem India portal. So you can attend this event if you are interested. Even from the 1st July to the 4th July, the CPET Ahmedabad in the Vadodara, they are also invited Department of Chemical and the Petrochemicals to give the sensitization workshop on the Chem India portal. So every chemical industry is aware about this because it is mandated. And if you go to the Chem India portal official website, which is published by the Ministry of Chemical and Fertilizers, you can see around 1200 more than 1200 chemical industries already registered. So it is good time, like you need to go to the Chem India portal and you need to give the details about the chemical manufacturing or the petrochemical manufacturing. If you are missing such type, so maybe the later on they will not guide you anymore, because they are initially stages, they are trained the pupil from the manufacturing sites directly by the authority. So that is the golden chance. You can just take a look on the Chem India portal, which is designed by the DCPC.
And this is another mandatory import and export declaration. As I mentioned, like it is, the story is started from 2020. The thing is, the mandatory import and export declaration is very interesting story behind this concept. Actually, in 2020, most of the time, the one thing is happening, like suppose if I am doing import and you need to get the custom clearance from the custom part. So most of the companies are doing, like suppose if you are if you are importing a mixtures, so you just mention the false HS code in the previous history, like you are not giving proper detail of the chemical composition, because we don't know like which chemical is hazardous, which is non-hazardous. So that type of the incompleteness, reported by the custom department, and they published the circular in 2020. The first time they told, like, you need to give the IUPAC and the brand name and the scientific name, such as IUPAC name of the chemicals, then you can get the custom clearance from the department. But that time it was totally voluntary in nature. But in India, if something is voluntary, if it is not benefit for me, so then definitely I will not follow that. So that's why they revised the circular in 2023, because they noticed there is no single entry has been done from 2020 to 2023 in the voluntary declarations. So that's why they published the mandatory declarations in the 2023. And finally, after certain amendments, on September 30, 2023, they published final circular, and they told, suppose if you have the mixtures, you are importing mixtures. Suppose if I am giving an example to you, like paints, if you are importing paints from any paints industries in the foreign manufacturing, from the foreign manufacturing unit, so you need to disclose the chemical constituent along with the IUPAC name and the CAS number. Again, the chemical industries raised the concern about that, like how we can disclose the full information, because sometimes the information is very confidential. Then what we can do? So again, they revised some things in the final amendments, and they told, like, after discussion with the Department of Chemical and Petrochemicals and with the DGFT, so they mentioned, like, you just need to disclose at least the main active constituent along with the CAS number and the IUPAC name. So that's the main thing which is mentioned in the final circular. So this circular is is mandated as of now for the chemical and the petrochemical industries. So if I am talking about the REACH 24H consulting group, we are identifying which Indian standard is applicable on your product. We are providing the licensing services. We have very good connections with the authorities like the Department of Chemical, Petrochemicals, and we are also giving training industries, like how you can fulfill the compliances as per the Indian chemical compliance, or maybe in another countries. Suppose if you are interested to export your chemicals in different countries, so you can contact us, like REACH 24H consulting group. So definitely we will provide the solutions immediate basis, like what information you need to submit in the different countries, and what will be the procedure for that. So we are keeping close watch on every update of the chemical regulations nationally or internationally. So this is our website, which is which is regulated in a way like using the artificial intelligence. Like if something is updated today in any country related to the chemical regulations, so automatically it will publish on our CamLinked website. So you can just go to our website CamLinked, and you can get more information about the chemical regulations. Now the Chaturvedi sir define about the GHS, and it is adopted in 2002, and it is also known as the Purple Book, which is mostly industries focused about the GHS classifications and the labeling. So the most important questions about the GHS thing is like why we are implementing the GHS. So can anyone answer about the GHS, why we are following the GHS regulation?
maybe I can tell you some interesting story about the GHS. Can I use Hindi language? Yeah. Okay. So the thing is, suppose मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडिया का. इंडिया के अंदर MSISC रूल्स 2000 MSISC रूल्स 1986 89 के अंदर आप देखोगे सेफ्टी डेटा सीट मेंशन है 10 SDS फॉर्मेट के अंदर, एंड दे आल्सो डिफाइन द हैजार्डस केमिकल पैरामीटर. अब GHS की जो रेगुलेशंस है वो ऐसी है कि कोई कंट्री, मैं मान लिया मैं 4 कंट्री का एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया, चाइना, जापान और मे बी ऑस्ट्रेलिया. अब इंडिया का जो पैरामीटर्स है उन्होंने बताया कि ये एसीटोन केमिकल है. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए कि यदि इसकी LD50 250 mg पर बॉडी वेट है तो दिस इज harmful in India. But the similar dose in different countries may be the very toxic. So it is not aligning, it is not globally harmonized. क्योंकि हर बार हमें सेफ्टी डेटा सीट अपडेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द कंट्री नीड, एंड दैट इज़ वेरी biggest challenge in front of the industries, because same time industries is exporting their chemicals in different country regions. So they want to aligning the harmonization of the classification of chemicals. So that's why they are coming up with this concept. So if you can see, they have 3 type of the hazards classification, which is defined the GHS system, which is known as physical hazard, health hazard, environmental hazard. Or mostly these 3 hazards required in safety data sheet, in labeling, and in packaging. So you can see, if you opening the GHS document, and GHS document maybe, if I am not wrong, if you are opening the latest version of the GHS, only 592 pages are there. If you are expert in these pages, so definitely you will earn money in the euro, because this is very very challenging document. You need to classify your chemicals according to the GHS is very costly, and maybe because every industries know very well who is doing the registrations in the different countries for their export purposes. They know very well like how GHS is important. You can see in the chapter 2, if I am talking about the physical hazards, there are 17 major hazards. These are related to the physical properties like explosive, flammable, aerosols, or the gases under pressure, flammable liquids, flammable solids, like that. And if I am talking about the health hazards, like related to my body hazard, so it is related to the skin sensitizations, eye irritations, or maybe the carcinogenicity, cancerous property, mutagenic properties, like that, which is directly affect my health. That is health hazards. So there is only 10 type of the health hazards are mentioned in the GHS document. And the third one is the environmental hazard, which is known as chapter 4. There are only 2 hazards which is mentioned under the GHS regulations. These are the hazards to the aquatic environment, hazards to the ozone layer. So GHS document हर 2 साल में रिवीजन इसका होता है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई न्यू साइड इफेक्ट आता है किसी केमिकल्स का, तो वो टॉक्सिसिटी हमें उसमें मेंशन करनी होती है रिवाइज डॉक्यूमेंट्स में GHS के, ताकि अगली बार जब सेफ्टी डेटा शीट बनाए उस टॉक्सिसिटी को हम मेंशन कर सके एज पर द GHS रेगुलेशन. दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द GHS regulations. So every 2 years you can see new amendments in the GHS system, and where it is applicable. So the coverage, if I am talking about the coverage, so you can see if I am a manufacturer, so if I am starting any manufacturing any chemicals, so we require the GHS system, designing, development, production, storage, transportation, as Chaturvedi sir describe about the transport systems, like you need to apply some stickers as per the GHS label, so that is covering the transportation, sales, and also for the disposable purposes we are using the GHS system nowadays. So these are the GHS label elements, and some other GHS label elements, like some extra information we can mention on that.
These are the common template for the GHS. And this is the basic parts of the GHS compliant label, like you need to mention the chemical name, UN number, CAS number, and what is the category, and some another information like hazardous statements, pictograms, precautionary statement. So these all every details mentioned in the GHS documents, which is known as the purple book. So you need to read about the GHS regulations. And if you have any questions, like if it raised any query in your mind, you can directly contact to me to understand about the GHS basic concepts. And that's the reason you can see different country have the different GHS or different GHS adopted regulations. You can see if European, if I am taking an example like 257 mg per kilogram body weight example of oral toxicity, that means it is mentioned in European region like harmful substances. It is mentioned in United States as toxic, in Canada toxic, Australia is harmful. Like you can see the word is different in different countries according to their regulation. So in India, the oral toxicity of substance LD50, it is non-hazardous. So that's why they are, making the GHS global harmonization system. So every country can follow the same classification, same labeling, same packaging rules. So this is the thing. These are the classification, label, and the safety data sheet regulations in different countries, and which is following the certain revisions of the UNGHS. You can see in the last column. And the latest revision, in the GHS is 10th revisions is latest revision now, and it was published in 2023, and the 11th revisions may be come in 2025, maybe by end of this year. And in the 10th revision, like in 2023, they include new property which is known as endocrine disrupting properties. Like some chemicals are, if I am exposing such type of the chemicals, they directly affecting our endocrine organs, which is related to reproductive systems. So that category is added into the 10th revision. So let's see what will be the update in the 11th revision, maybe in 2025. So now the question is GHS adoption in India. So there is no currently regulations in India. So we need to focus on that as per the to match our Indian standard in the safety in the safety norms, industrial safety norms. So we need to focus on the GHS adoption first, because this is very important regulations. So as I told you, in the Bureau of Indian Standard, there is one technical committee which is known as Occupational Hazardous Specialist Committee. They are working on that, and they published these 3 Indian standards, and they quote the the references of UNGHS. Suppose if they are taking material safety data sheet or transport of dangerous goods guidelines and dangerous good classification, so they are following the UNGHS criteria. If I am talking about the India REACH draft, still it is pending, and it is in the pending stage, and maybe it is not implemented as per the some chemical professionals. So that is my the presentations related to the Indian chemical legislation. Thank you. If you have any questions, please ask. Yeah, please. You are asking, so every time. A good thing. जीआई सर्टिफिकेशन एसएमईज के लिए होता, केमिकल इंडस्ट्री के पर्टिकुलरली होल इंडिया के लिए जेड सर्टिफिकेशन इसके में पैलेटिनियम है, गोल्डन है और डायमंड, इस 3 कैटेगरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लाइमेट चेंज जो इशू है उसके अंदर इंडिया में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो मेरा एक सजेशन है क्यों ना लोकल लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अडेप्टेशन एक्ट या रूल होना चाहिए, जिससे कि लोकल लेवल की इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट भी सही हो और प्रोडक्टिविटी में चेंज हो जाए।
Actually, India is working on that. If I am giving an example to you, like if we are working on the climate change action, so there is a the carbon credit scheme is working. Ministry of Environment, Forest and क्योंकि Climate दूसरी Change. तरफ हम कार्बन न्यूट्रल की भी बात कर रहे हैं, नेट जीरो की भी बात करते हैं, आपके इकोसिस्टम मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, वेयर द इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल, तो देयर शुड बी ए लोकल लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन रूल या एक्ट. Yeah, actually, the different state have the different guidelines, and they are not taking strictly. But India, taking very strict action nowadays, as you can see in change in the BIS regulations as well. And recently, they published the eco mark rules as well, which is supporting the recycling and also the climate change things in these rules, like how we can minimize the hazardous chemical use, and we can increase the recycling products in the sustainable manner. So they are working on that, but similarly the industries are also take care about that, like we have to focus on that area, like how we can follow the regulations and the guidelines which is published by the department. So equally we are disrupting these type of the guidelines. So that's the thing. Yeah, yeah, it's okay. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, sir, for taking the time to share your invaluable insight with us. Your words were not only informative but also deeply inspiring. Now, I would like Mr. Surender sir to give memento to Aman Sharma sir. Now, I would like to tell you for a please gather outside for a tea break, little tea break. After that, R.K. Sharma sir will be take the next session. आपको क्या चाहिए था? अच्छा लिंक है ना, ये है क्या आपका नंबर? तो भेजूंगा कैसे, मैसेज करिए? ठीक है, ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ.
कल सुबह तो देखा था फिर उसके बाद में भूल गया। अब आज पता लगा वैसा केक कटिंग हुई थी, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। ये कल अपना सिस्टम कनेक्ट हो सकता है इस पे? आपका लैपटॉप है? हाँ, कौन सा है? जो बैग में है। नहीं मैकबुक है क्या? नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल हो जाए। हेलो केक ही कटा था ना घर पे चढ़े हुए थे। हाँ, सही है। होनी चाहिए। उससे पूछो, उससे ऐसे पूछना नहीं, उससे आप ये पूछो तो सुस्ती का कारण क्या है? हाँ, क्यों नहीं कर रही थी? सुस्ती आई है उसकी ऊपर। चौको बोल के ये बंद क्यों हो रहा है बार बार? कैमरा क्यों जा रहा है बार बार? ये देखो गया। चलो मुझे खाना स्टार्ट बताना। I hope you all have a nice evening. Now, it is with great respect and incensed pleasure that I now invite Shri R.K. Sharma, ex-Chief General Manager at Engineering Corporation Limited, to make some presents and share his valuable insight through his session on fire and explosive safety, fire triangle,
flammability characteristics explosive and BLEVE, that stands for boiling liquid expanding vapor explosives. So, very good evening, dear friends. और मेरे ख्याल में ये लास्ट सेशन ही होगा, तो इस सेशन को पूरा एंजॉय किया जाए। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी बड़ा एंजॉयफुल है, और ऐसा है कि जो डे टू डे लाइफ में काम आता है, और ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हर आदमी परिचित है। और सब्जेक्ट का नाम है फायर ट्रायंगल एंड एक्सप्लोजन सेफ्टी। तो सबसे पहले फायर कोई भी होगा तो उसके लिए ट्रायंगल होगा। सॉरी, इससे पहले मेरे को 2 शब्द और बोलने चाहिए थे। तो मैं सीपैट की मैनेजमेंट को बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई, और आप लोगों के साथ एक बार मिलने का मौका मिला। और एक्सप्लोजन सेफ्टी ये ऐसी चीज़ है, बहुत काम आने वाली है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये सब जगह काम आती है, क्योंकि सेफ्टी, जैसा कि मिस्टर चतुर्वेदी सर ने बताया था कि सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है। सेफ्टी वो चीज है कि जिसको दिखता कुछ नहीं है। सेफ्टी दिखती कुछ नहीं है, लेकिन बिगर सेफ्टी पे कुछ भी नहीं है। ये ऐसा मटेरियल है जो किसी को दिखाई नहीं देगा। प्रोडक्शन जहां भी होता है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, वहां सेफ्टी किसी को नहीं दिखती। सेफ्टी जब दिखती है जब कोई एक्सीडेंट होता है, तब लोग सब सामने आते हैं कि आप सेफ्टी अफसर कौन है, HSE मैनेजर कौन है, क्या सिस्टम है। उससे पहले कोई नहीं देखता। सबसे पहले देखते हैं कि भाई कितना प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है, मार्केट के हिसाब से आपका कॉस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है। तो ये हिडन एलिमेंट है सेफ्टी। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे फायर ट्रायंगल। आगे के लिए फायर ट्रायंगल, मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें फायर ट्रायंगल है। फ्लेमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी केमिकल है, कोई भी जलने वाली चीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके पास एक्सप्लोजन क्या है। फिर एक वर्ड है ब्लेबी, BLEVE, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। उसके बाद है UPVCE, फायर ट्रायंगल। ये फायर ट्रायंगल है, इसमें 3 टांग हैं, इसलिए इसको फायर ट्रायंगल बोलते हैं। पहले आपने देखा होगा कि बहुत पहले जब ट्रैक्टर नहीं चला करते थे, तो जो गांव में खेती होती थी, तो उसके लिए एक ट्रायंगल बना के और 3 टांग वाला एक स्टैंड बनाते थे। उस पर खड़ा होकर आदमी खेती के लिए जो फसल तैयार करता था उसको हिला के और हवा से उसका सेग्रीगेशन करते थे। तो बेसिकली वो 3 टांग वाला ट्रायंगल है। जैसे इसमें से यदि तीनों टांगें मिल जाती हैं, अभी हमारे यहाँ 3 टांग क्या है, नंबर 1 ऑक्सीजन प्लेंटी में अवेलेबल है, भगवान ने खूब दी हुई है। उसके बाद है फ्यूल। फ्यूल मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है और हैजर्ड्स इंडस्ट्री है, तो फ्यूल उसमें थोड़ा बहुत लीकेज होता ही होता है, चाहे पेट्रोलियम हो या और कोई भी हो, उसमें थोड़ा बहुत लीकेज होगा ही होगा। क्योंकि कोई ये लेबोरेटरी नहीं है, कॉलेज नहीं है जो कि कुछ लीकेज नहीं होगा। क्योंकि हम लोग इतने स्केल पे काम करते हैं, हम टनेज में बात करते हैं, kg 2 kg में बात नहीं करते हैं। हमारा स्टोरेज कैपेसिटी मैट्रिक टन्स में होता है, तो थोड़ा बहुत लीकेज होगा ही होगा। और हमारा उद्देश्य होता है कि लीकेज को मिनिमाइज करें। और तीसरी चीज है स्पार्क या हीट। ये तीनों चीज मिल गई तो फायर होनी है। फायर हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि हम बिना फायर का कोई काम ही नहीं कर सकते। हमारा बॉडी भी फायर से ही चल रहा है। हम लोग यहां बैठे हैं वो भी फायर की वजह से बैठे हैं, क्योंकि फायर यदि कंट्रोल पे में है तो यूजफुल है। फायर को हमारा कंट्रोल में है तो फायर हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन फायर यदि हमको कंट्रोल करने लगे तो वो डिसास्टर है, वो डिसास्टर हो जाएगा।
तो हम जो है एक तरह से फायर के सपेरे हैं। सपेरे इन द सेंस सांप का खेल दिखाने वाला, क्योंकि हमको पता है हमको कैसे इसको कंट्रोल करना है और कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे इसको प्रोडक्शन करना है, कैसे मार्केट में भेजना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है। अभी उसके बाद में नेक्स्ट आएगा, ये फायर ट्रायंगल क्लियर होगा सबको? क्योंकि फायर ट्रायंगल मतलब जो है कोई भी आग लगती है, जैसे किचन में हम खाना भी बनाते हैं तो वहां भी फायर ही होती है, लेकिन वो हमारी हेल्पफुल है। इंडस्ट्रीज में हम सारा काम फायर से ही करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री है, वेल्डिंग, कटिंग, जो भी है सब काम फायर से हो रहा है, तो वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है और देश के विकास के लिए फायर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब फायर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो दिक्कत होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फायर कौन कौन सी हैं। तो फायर का डिफरेंट टाइप किस चीज पे डिपेंड करेगा? जो मटेरियल की फायर होगी, जिस मटेरियल को यूज करके हम फायर करेंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अदर देन एलपीजी which is separate category are classified according to their कप फ्लैश पॉइंट। तो सबसे पहले है पेट्रोलियम क्लास ए। क्लास ए पेट्रोलियम में मींस पेट्रोलियम हैंगे फ्लैश पॉइंट बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, रुई हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये फायर जो होता है ये क्लास ए में आता है। और इसका मोटा मोटा एग्जाम्पल वो है कि जिस फायर में बाद में ऐश बचती है, राख बचती है, वो क्लास ए फायर कहलाती है। सेकंड है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर वेयर फ्लैश पॉइंट इज लाई इन बिटवीन 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आता है पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, ये इसमें आता है। और थर्ड नंबर की फायर है पेट्रोलियम क्लास सी। बेसिकली क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर के लिए भी होता है, लेकिन पेट्रोलियम में बेसिकली ये एलपीजी के लिए होता है। और इनका जो फ्लैश पॉइंट है 65 डिग्री सेंटीग्रेड से और 93 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद आता है क्लास डी मेटल फायर। इसका फ्लैश पॉइंट 93 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। तो इसका ये थोड़ा सा इस तरह से दिखाया है, क्लास बी, सी। अब जो जिस प्रकार की फायर है तो उसी प्रकार से हमको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और उसी प्रकार के एक्सटिंग्विशर हमको यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि क्लास ए की फायर है तो क्लास ए की फायर के हिसाब से हम अपन को एक्सटिंग्विशर यूज करने पड़ेंगे। क्लास बी की फायर है तो क्लास बी के हिसाब से, क्लास सी है तो क्लास सी के हिसाब से। क्लास ए में आता है आपका वुड, पेपर, क्लॉथ, ट्रेस, प्लास्टिक। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है ड्राई केमिकल पाउडर। डीसीपी पाउडर का नाम सुना है सबने? डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फायर एक्सटिंग्विशर है और क्लास ए, बी, सी तीनों में यूज किया जा सकता है। बेसिकली तो ये वुड फायर और पेपर, इसमें फायर वीटर होते हैं। बड़ा लंबा सा डंडा होता है, उसमें आगे एक मैस सी लगी होती है, वो फायर वीटर कहलाता है और उससे आग बुझ जाती है। ग्रास की फायर भी उसी से आग बुझा दी जाती है। उसके बाद आता है क्लास बी फायर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ग्रीस, एसीटोन, सॉल्वेंट, ये क्लास बी की फायर में आता है। बेसिकली इसमें हम फोम जनरेटर यूज करते हैं। फोम जनरेटर नाम सुना ही होगा बहुत से लोग आप में से, ऑयल इंडस्ट्री से भी हैं, एक दो मेरे साथी बीपीसीएल से भी हैं। तो इसका नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? फोम जनरेटर, फोम AFFF फायर फोम जनरेटर होता है। किस किसने सुना है? वेरी गुड। इसमें क्या होता है, फोम जो है पानी के साथ मिक्स करके और उस पर लेयर चढ़ाई जाती है। जैसे हमने फायर ट्रायंगल में देखा था कि तीन चीज में से कोई एक चीज आपने रोक दी ना तो आप फायर को बुझा दिए। तो क्या है भाई, एक बार हीट है, आग लगने के बाद हीट को रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसमें साइक्लिक रिएक्शन होती रहती है। कोई टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर जाता है वो। तो सबसे बड़ी बात है इसमें या तो प्रोडक्ट को रोकना, जो भी आपका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम कोई प्रोडक्ट है या और दूसरा प्रोडक्ट है,
तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई को रोकना। मान लो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर तीसरी चीज है जो भगवान ने प्लेंटी में दिया हुआ है, वो हवा, और हवा को रोकना। और हम मैक्सिमम हवा रोक को ही फायर फाइटिंग करते हैं। हवा रोकने का मतलब है कि जो आपका ट्रायंगल बना है फायर का, उसके ऊपर एक हम लेयर चढ़ा देते हैं, एक फोम की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन कट जाती है, और ऑक्सीजन कट गई तो आग बुझ गई। बस इतना सा ही खेल है इसमें। लेकिन इसमें यह चीज है कि आपने इमीडिएट एक्शन ले लिया तो आग को आप कंट्रोल कर सकते हो, और इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो फिर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि आग फिर बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आज की डेट में जहां भी जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सब जगह फायर फाइटिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। मैनुअल फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम होता है। आप हो या ना हो, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं, वो मैं बीच में डिस्कस करूंगा। जो अपना भी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्वार्ट्ज वाले फूट जाएगा, और एकदम पानी की ऐसी बरसात होगी, 6 से 7 kg का प्रेशर वहां पर होगा। इवन आदमी वहां रुक जाए तो आग से नहीं मरेगा, पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन उसकी डेथ हो सकती है, इतना जबरदस्त प्रेशर होता है। इवन एलपीजी की फायर, पेट्रोलियम की फायर पानी से कम बुझती है। पानी का हम यूज करते हैं कूलिंग के लिए, वो हम आगे बताएंगे आपको। इसके बाद आता है एलपीजी की फायर, क्लास सी फायर और इलेक्ट्रिकल फायर। तो डीसीपी पाउडर एलपीजी की फायर लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर आप इवन इलेक्ट्रिकल फायर में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम तभी यूज करते हैं जब बाकी कोई दूसरा हमारे पास साधन उपलब्ध ना हो। कोई बता सकता है कि हम इलेक्ट्रिकल फायर में डीसीपी क्यों नहीं यूज करते? गुड, वेरी गुड। इनके नाम से जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत अच्छी बात, प्लीज सिट डाउन। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली कि हम डीसीपी के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि फायर बुझाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, CO2 एक्सटिंग्विशर हमारे खत्म हो गए, देन यू कैन यूज इट। भाई इसको हम रिवाइव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसमें से पाउडर हटाना इट्स वेरी टिपिकल जॉब, क्योंकि ये हम रियल अपने देखे हुए हैं। और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एलपीजी की फायर के लिए डीसीपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें भी 9 kg या 10 kg डीसीपी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि कौन सा मेथड यूज करते हैं। भाई देखो, आग बुझाने के 3 ही तरीके हैं, क्योंकि 3 ही वजह से आग लगती है। सबसे पहले क्या है? फ्यूल, ईंधन। दूसरा क्या है? हवा, जो भगवान ने प्लेंटी में दे रखी है। और तीसरा क्या है? स्पार्क या हीट। ठीक है ना? तो एक बार यदि फायर हो गया तो हीट इतना उसमें ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ जाता है कि ऑटोग्निशन उसमें फायर चलता रहता है। आप हीट हटा दो, कोई मतलब नहीं उसका। तो दूसरी चीज क्या बची है हमारे पास? एक ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल। यदि आपके कंट्रोल में है, यदि वहां पर कंट्रोल बाल लगा हुआ है, यदि रिमोट ऑपरेटेड बाल लगा हुआ है, तो सबसे पहला काम है रिमोट ऑपरेटेड बाल, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में आरओबी बोलते हैं। सबसे पहले आरओबी की सप्लाई बंद करो, सो दैट कि आग की सप्लाई जब बंद करती तो आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम डीसीपी यूज करेंगे। क्या करेंगे? डीसीपी। और डीसीपी से एक डीसीपी की चद्दर बना देंगे आग के ऊपर। जो भी आपका ये ट्रायंगल है उसके ऊपर एक लेयर बिछा देंगे, तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। लेकिन माय डियर, एक चीज और ध्यान रखने की है, एलपीजी की फायर में आग बुझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है सोर्स को कंट्रोल करना, सोर्स को कंट्रोल करना। क्योंकि आपने आग बुझा दी, इसका मतलब आपने एक खतरा और ले लिया बहुत बड़ा।
आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, आग बुझा खतरा कैसे मोल ले लिया हमने। देखिए यदि आग बुझा दी और लीकेज हो रहा है कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, एनवायरमेंट में लीकेज होगा। और एलपीजी लिक्विड जब लीकेज करेगी तो एलपीजी वेपर्स में कन्वर्ट होगी, और वेपर में कन्वर्ट होगी तो वेपर के बैलून बन जाएंगे बड़े बड़े, एंड दे ट्रेवल विद द एयर। और किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कहीं से भी उसको स्पार्क मिलेगा तो वहां से उसको कैच करेंगे, और वो फायर के बबल ट्रेवल करेंगे, और इतना टेम्परेचर होगा उसमें, इतना टेम्परेचर होगा विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सब कुछ खत्म कर देंगे। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कुछ दिन पहले जयपुर में अजमेर रोड पर एक टैंकर एक्सीडेंट हुआ था। कितनी देर का फायर था वो, मुश्किल से 2-5 सेकंड का फायर था, लेकिन सबको सफा कर गया, लोग पता ही नहीं लगा कि कौन है, इतना टेम्परेचर होता है। तो वो जो एलपीजी की आग जलती वो इतनी खतरनाक नहीं थी, वो तो लोग दूर भग जाते वहां से, लेकिन यदि ये हो गया तो इससे बचना मुश्किल, क्योंकि पता नहीं कितनी देर तक, कितनी दूर तक ट्रेवल करेगा बबल्स। जो बैलून, एलपीजी के बैलून बन के जा रहे हैं हवा में, वो कितनी दूर ट्रेवल करेंगे, डोंट नो। इसलिए एलपीजी की आग बुझाओ, पर एलपीजी को डिसिपेट करना बहुत जरूरी है और उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और आपको पता है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको वेसल है 1400 मैट्रिक टन का और नीचे कोई बाल नहीं है, नीचे कोई भी बाल नहीं है, फिर बेटर यह है कि आप उसको कंट्रोल वे में आग को जलने दो और उस वेसल की आप कूलिंग करते रहो। क्या करते रहो? कूलिंग करते रहो, पानी से कूलिंग करते रहो। कूलिंग से क्या होगा? उसमें ब्लेबी नहीं होगा। मैंने एक वर्ड यूज किया था, ब्लेबी, बॉइलिंग, लिक्विड, एक्सपेंडिंग, वेपर, एक्सप्लोजन, वो नहीं होगा, क्योंकि वो हो गया वो भी खतरनाक है, वो भी खतरनाक है। और दोनों के मैं छोटे छोटे वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और कोई भी आपके मन में डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर पूछिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको डाउट लेके तो आज मैं जाने ही नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मेटल फायर है, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम। एक्चुअली ये डिपेंड करता है मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल। कुछ मेटल ऐसे हैं, पानी डाल दिया तो आग ही लग जाएगी। एग्जाम्पल सर ने बताया सोडियम। सोडियम को आपको पता है, आपने किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। भाई अपन ने 10th में 12th में केमिस्ट्री की लैब में देखा है, सोडियम में को कहां रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं एक्चुअली ये मेटल फायर कभी अटेंड नहीं किया। बेसिकल मैं एलपीजी से हूं, इंडियन ऑयल से, तो ये मेटल फायर मैंने अटेंड नहीं किया, तो बस हम इतना ही करके छोड़ देते हैं कि ये मेटल फायर है। और जितना जानकारी हो प्रॉपर वही बतानी चाहिए, जो नहीं हो तो बता दीजिए कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन द रेशियो ऑफ 60:40, 55:45। इट डिपेंड अपॉन द सोर्स कि कहां से आप एलपीजी ले रहे हैं। ये उस सोर्स पे डिपेंड करता है कि एलपीजी आप कहां से ले रहे हैं, उस पर रेशियो पर डिपेंड करता है। ये आपका प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। एलपीजी derived from crude oil distillation or other petroleum refining processes. LPG can be liquefied by a moderate increase in pressure or by cooling temperature below their boiling point. Boiling point LPG का होता है -42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए एलपीजी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इमीडिएट वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। आपको याद होगा कि पहले के टाइम पे जब हम खाना बनाते थे तो केरोसिन का एक वो होता था, वो स्टोव होता था, उसमें पहले हवा भरते थे और वो हवा उस प्रेशर से वो चलता था। लेकिन अभी कोई किसी ने देखा गैस सिलेंडर कोई हवा भरता है? नहीं भरता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जैसे ही वेपर को स्पेस मिलता है वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। ये फ्रैक्शलेशन डिस्टिलेशन की टावर है, इसमें हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, थोड़ा सा ये एक इंट्रोडक्शन है इसमें, क्योंकि क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन करने से ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। इसमें कुछ मैं नहीं लिख पाया हूं, मैक्सिमम हमने लिखे हैं,
लेकिन कुछ छूट भी गए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब देख लो आप, बिटुमेन फ्यूल ऑयल, आपका डीजल है, केरोसिन है, गैसोलीन, पेट्रोल, गैस, एविएशन फ्यूल, सारा इससे बनता है और हर टेम्परेचर पे अलग अलग बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलपीजी, क्योंकि मेरे को एक्सपर्टाइज एलपीजी का है तो मैं एलपीजी के बारे में आपको ज्यादा बता पाऊंगा। ये कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। एलपीजी को देखा है कभी आपने लीकेज होते, किसी ने लीकेज होते देखा होगा, देखा है ना? क्या कौन सा कलर होता है उसका? सुना है? सुना है? यस, बहुत बढ़िया है। ये कलरलेस होता है एलपीजी, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है? तो फिर दिखाई भी नहीं देगा लीकेज होगा तो, पर ये दिखाई देता है। वो सब कैसे दिखाई देगा? जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो इट गेट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, और सराउंडिंग एरिया से जब हीट लेता है तो एटमॉस्फेयर में एयर और वाटर है, जब हीट लेगा तो वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, और वो सफेद आइस सी हमको दिखाई देती है, सफेद बर्फ की एक लेयर सी दिखाई देती है, और उससे पता लग जाता है कि गैस लीक कर रही है। तो इसलिए कलरलेस है लेकिन दिख जाती है। ऑर्डरलेस, इसमें कोई गंध नहीं होता है एलपीजी में, लेकिन मार्केट में आप जो एलपीजी देखेंगे उसमें गंध आती है। इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है सो दैट कि आदमी को पता लग जाए कि भाई गैस लीक कर रही है। और कोई पर्पज नहीं है इसका इथाइल मरकैप्टन मिलाने का, केवल यही पर्पज है कि पब्लिक में अवेयरनेस रहे इन केस कोई इमरजेंसी हो। 2 ppm, हाँ, हाईली फ्लेमेबल, हेवियर देन एयर। तो एलपीजी की दो फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड तो वी कंपेयर विद वाटर, तो वाटर से ये क्या है, लाइटर होती है, बट वेपर जो है वो हवा से भारी होता है, तो ये वेपर नीचे बैठता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए अनसेफ है, क्योंकि यदि एलपीजी हवा से हल्की होती तो ऊपर उड़ती हवा में उड़ के खत्म हो जाती है और कंडेंसेशन खत्म हो जाता, मतलब उसका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता, लेकिन वो नीचे बैठती है। तो ये दोनों कंडीशन में खतरनाक है। इसलिए जब भी एलपीजी का कोई चूल्हा कहीं लगाते हैं, नया कनेक्शन इंस्टॉल करते हैं, तो लोगों को यही समझाया जाता है कि भाई चूल्हा हमेशा सिलेंडर से ऊपर रखा जाए। इसके पीछे लॉजिक ये है, देखा ये सबने आपने, और सब जगह समझाया भी जाता है। अच्छा, ये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि यदि कोई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि चूल्हा नीचे था तो उसका कोई क्लेम भी पास नहीं होता है। ये आपको नहीं पता होगा ना? अब आप देख रहे हो कि 14 kg का सिलेंडर होता है, घर में कितने दिन चलता है? 1 महीना चलता है। और 14 kg लकड़ी कितने दिन चलती है? 1 दिन 2 दिन। तो इसमें क्या है ऐसा? एनर्जी स्टोर है। और बताइए, बोलिए बोलिए, जो मन में आ रहा है बोलना था। कैलोरी वैल्यू होती है, बिल्कुल सही बात है, कैलोरी वैल्यू ज्यादा होती है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताया कोई? देखो, एलपीजी लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होती है ना, तो इसके एक एक्सपेंशन रेशियो होता है, दैट इज 250 टाइम्स। कितना? 250 गुना। तो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो 250 गुना एक्सपेंड होता है। और हम क्या जलाते हैं? स्टोव में क्या जलता है? लिक्विड नहीं जलता है, वेपर ही जलता है। सिलेंडर हमेशा हम वर्टिकल में खड़ा करते हैं और ऊपर से वेपर आता है और वेपर से हमारा चूल्हा जलता है। और कभी भी सिलेंडर को 100% नहीं भरा जाता, वेपर के लिए स्पेस छोड़ा जाता है। 85% हम कोई भी एलपीजी का कोई भी वेसल है, छोटा है, बड़ा है, टैंकर है, जो भी वेसल है, उसमें 15% एलएच छोड़ा जाता है। किसके लिए? वेपर के लिए। डेंसिटी 0.54 से 0.57 ग्राम पर सीसी। अब ये किसकी डेंसिटी है? ये लिक्विड की डेंसिटी है, क्योंकि लेस देन 1 है ना, तो पानी से कंपेयर करेंगे तो हमेशा पानी के ऊपर रहेगा। हाफ एज हैवी एज वाटर डेंसिटी एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हवा से क्या है?
नहीं, पानी से हल्की है, अभी हवा से आएगी। अच्छा, इसका प्रोपेन और ब्यूटेन का अलग अलग करके बता रहे हैं। तो मोटा मोटा 0.5 लगभग हाफ वेट मान के चलिए आप उसको। डेंसिटी ऑफ वेपर ये इज हैवियर देन एयर, लगभग 1.5 से 2 गुना इसका भारी होता है। एलपीजी वेपर सेटल एट द बॉटम ऑफ द फ्लोर, हेंस फ्लोर लेवल वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट। आपने किसी ने एलपीजी सिलेंडर का गोडाउन देखा है? देखा है? यस। तो उसमें जैसे अपने रोशनदान होते हैं, उसमें रोशनदान ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? क्यों होते हैं नीचे? उसके पीछे लॉजिक यही है, उसके पीछे लॉजिक यही है, हाँ, कि एलपीजी जो नीचे बैठ रही है वो डिस्पर्स होके और बाहर निकल जाए। क्योंकि देखो, आप कितना ही रख लो, माइनर लीकेज थोड़ा बहुत होता ही होता है, ठीक है ना? Coefficient of volumetric expansion, change in volume per unit volume of liquid for each degree of temperature change between 0 to 40 degree centigrade. Coefficient of volumetric expansion of LPG is 100 times that of steel. स्टील से 100 गुना इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। एलपीजी कंटेनर मस्ट बी फिल्ड ओनली अप टू सर्टेन वॉल्यूम। कितना लेवल है? 85%। 15% एलेज रखा जाता है किसके लिए? वेपर प्रेशर के लिए। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एलपीजी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर डेवलप्ड एट द टेम्परेचर इन ए क्लोज कंटेनर कंटेनिंग द लिक्विड एंड इट्स वेपर ओनली, ये वेपर प्रेशर हो गया। कलर, एलपीजी कलरलेस, कैन नॉट बी सीन। लिक्विड एलपीजी वेपराइज इमीडिएटली कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। अभी आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है ना, जो हलवाई शादी में सिलेंडर लगाते हैं तो उसके चारों तरफ बर्फ सी जम जाती है, देखा है कि नहीं? तो वो बर्फ कहाँ से आ गई? क्योंकि वो एकदम वो नॉन स्टैंडर्ड रेगुलेटर लगाते हैं और एलपीजी को बहुत तेजी से निकलती है उसमें से, तो उसको एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, तो एटमॉस्फेयर से हीट लेती है और सराउंडिंग एरिया का जो वाटर है, मतलब एयर में वाटर है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है और हमको बर्फ सी उसकी दिखाई देती है। ऑर्डर इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन हमको ऑर्डर मिलाया जाता है। इसमें इसका जो प्रोपोर्शन होता है ऑर्डर का, अभी देखिए क्या है। जो टेक्निकल आदमी है वो चाहे तो उसको लिख सकते हैं और ये गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये मिलेगा उसको। अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन इज 0.45 kg पर 37.9 क्यूबिक मीटर। अभी ये कैलकुलेशन कैसे आई? इसके पीछे भी पूरा एक रिसर्च है, क्योंकि यदि हमने मरकैप्टन सल्फर ज्यादा मिला दिया तो सल्फर क्या है, मेटल को खाता है, फेरस सल्फाइड बनेगा तो मेटल की लाइफ कम हो जाएगी, सिलेंडर खराब हो जाएगा। सिलेंडर खराब होगा, पाइपलाइन से आपका कांडला से और लौनी तक जो पाइपलाइन जा रहा है, कितनी बड़ी पाइपलाइन है, वो भी खराब होगी। हमारे पूरे वेसल हैं वो खराब होंगे, जो टैंकर हैं वो खराब होंगे, तो कितना सिस्टम खराब होगा। तो एक लिमिट में मिलाते हैं सो दैट कि जिस पर्पज के लिए हम मिलाए वो हमारा पर्पज भी पूरा हो और काम हमारा सेफली भी रहे। आपने देखा होगा सिलेंडर जो है 20-25 साल तक कुछ भी सिलेंडर में नुकसान नहीं होता है, इससे ज्यादा फिर सिलेंडर की लाइफ की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपने लिख लिया 0.45 kg पर 37.9 क्यूबिक मीटर। इसमें इस प्रोपोर्शन में एलपीजी में मिलाया जाता है। और ये जब हम बाहर से जो मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो वहां से मिला नहीं आता, हम इंडिया में ही मिलाते हैं सब चीज, क्योंकि बाहर आप देखोगे वहां एलपीजी में कोई बदबू नहीं होगी।
क्योंकि जो ये परफ्यूम बनाने वाली इंडस्ट्री होती है ना, वो यदि वो ये वाला यूज कर लिया तो फिर कोई परफ्यूम लगाएगा नहीं, ठीक है। तो उसमें से हमको सल्फर को अलग से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है या अलग से उसको जामनगर से हमको एक टैंकर मंगवाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो ये है कि वहां पर जो जीएमएस सिस्टम लगा होता है या गैस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है जो प्रोपेन और ब्यूटेन को मॉनिटर करता है। जीएमएस सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, जीएमएस सिस्टम में एक व्हीट स्टोन ब्रिज का सबने नाम सुना होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज सबने सुना है ना, 10th 12th में सबने पढ़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसमें 4 टांग होती हैं, मतलब चारों में रेजिस्टेंस होता है और बीच में क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर। तो 1 2 3 जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है ये कितना रेजिस्टेंस है, वो आपने जान करके लगाया हुआ है। जो चौथा रेजिस्टेंस है वो क्या है कि जो एलपीजी लीक कर रही है और लीक करके वो सक करता है, उसको सक करने के बाद उसकी बर्निंग होती है, आप विश्वास नहीं करो, उसकी बर्निंग होती है और बर्निंग होने से फिर टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का एक रिलेशन है, आर बराबर आर टी इंटू 1 प्लस अल्फा टी, कुछ इस तरह से एक रिलेशन है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वो जो टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है उससे हम गैस के लीकेज को चेक करते हैं, वो कहलाता है गैस मॉनिटरिंग सिस्टम। किसी ने देखा कि नहीं देखा गैस मॉनिटरिंग सिस्टम, जीएमएस सिस्टम? आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के गैस मॉनिटरिंग सिस्टम आ गए। तो इतना हमने मिलाया जाता है इसमें कि जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल है उसका 1/5 भी एलईएल का, एक 2 शब्द पहले भी हमारे से पहले जो सीनियर 2 फैकल्टी थी उन्होंने भी 2 वर्ड यूज किए थे, एलईएल एचईएल, ये एलईएल और यूईएल। एलईएल मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और एचईएल और यूईएल का मतलब होता है हायर और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट का एलपीजी का होता है 2 to 10% मोटा मोटा, यानी 2% से जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो वो समझ लो कि वो फायर की कंडीशन है, और 10% से ऊपर चला गया तो फिर वो उसमें फायर नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10% से ऊपर चला गया तो आप मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलपीजी हवा में डिस्पर्स होती रहेगी और जो 10% से नीचे आएगा और जैसे ही नीचे आएगा तो फ्लेम मिक्सचर बन जाएगा, तो अगेन एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमेशा जब भी एलपीजी लीकेज होती है तो 2 से 10% का जो लिमिट है, 2 का भी हम 0.2% से भी कम लीकेज होता है तो हमारा सिस्टम अलार्म देने लग जाता है, और चाहे प्लांट बंद करना पड़ जाए लेकिन सबसे पहले लीकेज को अरेस्ट किया जाता है। इसमें टेस्ट लेस है, कोई टेस्ट नहीं है इसका, नॉन टॉक्सिक है। एलपीजी टॉक्सिक नहीं है, लेकिन आप बोलोगे सर कि ज्यादा एलपीजी सूंघने से दिक्कत तो हो जाती है, थोड़ा एनेस्थेटिक है ये, लेकिन टॉक्सिक नहीं है। और जब ज्यादा एलपीजी लीकेज होता है ना तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आदमी को जो चक्कर आना घबराना वो एलपीजी की वजह से नहीं होता है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से होता है, ठीक है ना। ये पहले अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू 250 वॉल्यूम ऑफ वेपर, और 250 वॉल्यूम ऑफ वेपर को हमको एयर चाहिए 6500 वॉल्यूम, और टोटल जो फ्लेवल मिक्सचर बनेगा वो बनेगा 6750 वॉल्यूम। तो ये आप बताइए कि 1 किलो एलपीजी लीक करती है तो कितना फ्लेवल मिक्सचर बनता है, इसलिए ये खतरनाक है। सोर्स ऑफ इग्निशन में भी स्पार्क, बिजली का स्पार्क भी हो सकता है, और फ्लेम हो सकता है, और हीटेड मटेरियल हो जाता है, पोजेसिंग सफिशिएंट हीट टू इक्वलाइज और एक्सीड इग्निशन टेम्परेचर रेंज 410 से 580 डिग्री सेंटीग्रेड। और एलपीजी को बर्न करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आग लगने के लिए, कितनी सी कम एनर्जी होती है, 1 जूल। 1 जूल, जूल तो सबको पता है ना, 1 जूल एनर्जी सफिशिएंट टू इग्नाइट एलपीजी। आप देखो वो जो लाइटर जलाते हैं कितना सा स्पार्क होता है, दैट इज सफिशिएंट, और ये 410 से 500 डिग्री टेंपरेचर पे ऑटोमेटिकली इसमें फायर होता है।
इसका ऑटोमेशन टेम्परेचर 460 डिग्री और 430, अभी 450 के आसपास इसका ऑटोमेशन है, क्योंकि ये मिक्सर है ना कैलोरीफिक वैल्यू। अभी एक ने क्वेश्चन किया था कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, बिल्कुल सही है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, 11400 11800 तक होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन सबको पता है। 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने में जो हीट जनरेट होती है वो किलो कैलोरी, वो कैलोरी कहलाती है, किलो कैलोरी कहलाती है पर केजी, और इसको सीवी से डिनोट करते हैं, इसलिए आइडियल फ्यूल है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जब ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती है तो उसको हीट चाहिए होती है, और मान लो गलती से किसी के हाथ पे या बॉडी के किसी पार्ट पे लिक्विड टच हो जाता है तो उसी पार्ट से ये हीट ले लेती है और वो उस पार्ट में कोल्ड बर्न हो जाता है, और वो कोल्ड बर्न ऐसी चीज है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोल्ड बर्न का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हमको उस अंग को या तो काटना ही पड़ता है, वो डेड हो जाता है। मतलब जैसे आपने सुना होगा फौजी जो है लेह लद्दाख से ऊपर जो काम करते हैं, कोई किसी का उंगली कट जाती है, किसी का अंगूठा कट जाता है, उसके पीछे वही है कि वो भी वहां पर भी कोल्ड बर्न होता है। ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की है, जब भी एलपीजी प्लांट में या इंडस्ट्री में या कहीं पर भी कोई ऐसा काम हो और कोई लीकेज हो तो आप नंगे हाथ से कम एलपीजी को अटेंड नहीं करें। यदि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास हैंड ग्लव होने चाहिए, और मान लो कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां हैंड ग्लव नहीं है तो एटलीस्ट कपड़ा या कुछ चीज से उसको रोकना चाहिए। नेक्ड हैंड से काम करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है, कोल्ड बर्न निश्चित है। फिर एक्सपेंशन ऑफ एलपीजी व्हेन टेम्परेचर राइजेज अबाउट 15 to 20 टाइम्स ग्रेटर देन वाटर, सफिशिएंट अलेज, इसलिए हम उसमें सिलेंडर में सफिशिएंट अलेज भी रखते हैं। LPG has low viscosity and can leak in situation where water or grease do not leak. इसकी विस्कोसिटी काफी कम होती है, इसलिए ये लीकेज जल्दी होती है। इफेक्ट ऑफ वाटर, एलपीजी में यदि पानी मिल जाता है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी हैवी है और ये नीचे बैठ जाता है। और हम लोग जब भी प्लांट में यूज करते हैं तो बॉटलिंग करने से पहले हम पानी को वाटर ड्रेन करते हैं, क्योंकि एलपीजी चल के आती है, कहीं न कहीं लाइन में कोई मॉइस्चर वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत वाटर पार्टिकल उसमें रहता है, तो इसलिए जब भी कोई प्लांट में जहां भी बॉटलिंग होती है तो उसमें वाटर ड्रेन करना जरूरी होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यदि एलपीजी में पानी थोड़ा बहुत आ जाए और मान लो वो बाल के बीच में जो कैविटी है उसमें फंस गया तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस में कन्वर्ट होते ही गैस आना उससे बंद हो जाएगा, तो घर में लोग समझेंगे अरे अब तो गैस खत्म हो गई या सिलेंडर खराब हो गया, और वो सोचेंगे भाई किसी पड़ोसी के यहाँ खाना बना लो या कहीं से मंगवा लो, और वो उसको खुला ही छोड़ के चले आते हैं, और जब दोबारा वो किचन में जाकर देखते हैं क्योंकि बबल से थोड़ी देर में खत्म हो गया आइस वाला, और फिर पूरी किचन में एलपीजी हो जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो ये सब भी जानकारी होना चाहिए। Commercial LPG has no harmful effect upon steel or majority of metals in common use. थोड़ा एल्युमिनियम पे इसका इफेक्ट तो रहता है, एल्युमिनियम may be affected by traces of caustic remaining in LPG. अब हैजर्ड्स ऑफ एलपीजी, हेल्थ हैजर्ड्स, हेल्थ हैजर्ड्स में क्या है, आपके टच कर गई तो कोल्ड बर्न होगा। फायर हैजर्ड्स, कंबस्टन, ब्लेबी, पीयूवीसी और अदर हैजर्ड्स। Inhalation, LPG contains no toxic components, but when inhaled in sufficient quantity तो dizziness may occur, थोड़ा anesthetic होता है। Burns by freezing, liquid from bodily contact, cold burn होता है। Liquid leak is more dangerous. सिलेंडर को या कोई भी एलपीजी वेसल को हम हमेशा सीधा रखते हैं, सिलेंडर को कभी भी लिटा के नहीं रखते। कोई बताएगा सिलेंडर को लिटा के क्यों नहीं रखते?
हाँ, एक एक बोलो, क्या बोला? काफी ठीक बोला, काफी ठीक बोला आपने। और कोई बताएगा? देखिए, माइनर लीकेज थोड़ा बहुत होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज गुप्ता की एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्योंकि जब सिलेंडर को लिटा के रखेंगे तो क्या निकलेगा? लिक्विड निकलेगा। और जब लिक्विड निकलेगा तो वेपर में एक्सपेंस होगा वो, और कितना मैंने एक्सपेंशन रेशो बताया था? 250। तो आपका खतरा जो है ना 250 गुना बढ़ जाएगा। खतरा, डेंजर आपका कितना बढ़ जाएगा? 250 टाइम्स। तो आपका खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए सिलेंडर को कभी भी लिटा के नहीं रखते, इसलिए ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, स्पार्क कहां कहां से हो सकता है? फ्लेम से मिल सकता है, हीट, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी स्पार्क हो जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ को पता होगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पता है? जो हम जैसे सूखे बालों में कंगा रगड़ते हैं तब भी स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। कोई होस पाइप है, यदि उसमें से लिक्विड निकल रहा है तो उसमें भी स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। तो आपने देखा होगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जहां भी पाइपलाइन है तो पाइपलाइन को बीच बीच में क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। और हॉस पाइप की भी अर्थिंग होती है। आपने पेट्रोल पंप देखे हैं? पेट्रोल पंप में जहां एंड होता है उसका, वो जो हॉस पाइप है उसके अंदर एक मेटालिक अर्थिंग की एक स्ट्रिप अलग चलती है और ऊपर से एक अर्थिंग और करते हैं। क्योंकि पेट्रोल पंप पे मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं वो स्टैटिक चार्ज की वजह से ही होते हैं। एक्सप्लोजन, फायर और ब्लेबी, और ये सबसे खतरनाक है। बहुत कम होती है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। परक्यूसिव अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, यूपीवीसी। बताऊंगा, वही बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो ब्लेबी का पूरा नाम आपको पता है? बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ठीक है ना? एक्सप्लोजन अकर व्हेन एलपीजी कंटेनर आर सराउंडेड बाय फायर। जैसे मान लो ये सिलेंडर है आपका, या कोई टैंकर है, या कोई बुलेट है, यहां से लीकेज हो रहा है, यहां से लीकेज हो रहा है और आग लग गई, तो ये गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये गर्म होगा। गर्म होगा तो जिस प्रेशर से एलपीजी निकलती है उससे ज्यादा वेपराइज होगी पहले, क्योंकि उसको टेम्परेचर बड़ा मिल रहा है, तो और तेजी से निकलेगी, फिर और गर्म होगा। अब ये इनिशियली क्या है, ये वेसल, ये टैंकर जो भी है ये पूरा भरा हुआ था, इसकी मेटल पे इफेक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि ये ठंडा था और पूरा भरा हुआ था। धीरे धीरे क्या है, खाली होता चला जाएगा। अब खाली हो जाएगा तो क्या होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा इसका, और इसकी मेटल की सीट जो है, मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी और ये पतला बन जाएगा, कागज जैसा बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, बहुत तेजी से निकलेगा और ये फटेगा, और फट के एकदम गुब्बारे इसके निकलेंगे और वो जो चादर होगी वो एकदम चाकू की तरह बन के जाएगा और कई किलोमीटर दूर तक जाएगा और बड़ा एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए एक ही उपाय है, या तो एलपीजी का वाल्व है तो वाल्व बंद कर दो, और वाल्व नहीं है तो कूलिंग करते रहिए। कंट्रोल वे में फायर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसका एक वीडियो छोटा सा मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये देखिए, एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन एलपीजी कंटेनर्स आर सराउंडेड बाय फायर, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑफ वेसल सरफेस इन कांटेक्ट इंक्रीज, कंटेनर रैप्चर एंड सुपरहीटेड लिक्विड इज रिलीज्ड। सुपरहीटेड लिक्विड इज रिलीज। सुपरहीटेड तो नाम सुना होगा सबने, बेसिकली टरबाइंस जहां पड़ते हैं वहां सुपरहीटेड स्टीम निकलती है। लार्ज वेसल लार्जल कैटास्ट्रोफी। ये देखो, ये कोई बुलेट है, इसका देखिए आप, अभी एक बार इसको यहां से चलाना, ये ब्लेबी हो रहा है, आप देखिएगा इसको।
चल नहीं आ गया? चलना चाहिए था, मेरे उसमें लैपटॉप में तो चल रहा था, या मेल में नहीं आया होगा, ऐसा तो नहीं? हाँ, मैंने लिंक कॉपी किया हुआ था। इसमें इंटरनेट है क्या? तो फिर तो चलना चाहिए। इसमें आप डालो, इसमें इंटरनेट पे वीडियो ब्लेबी, ये सेम है। ब्लेबी वीडियो, BLEVE, ब्लेडी, ब्लेबी, EBE, ब्लेबी, आगे वीडियो। यस, यही है। ये देखिए, ये आग लग रही है यहां पर, और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? अब देखिए आप कैसा ये होता है। अब ये लिक्विड का लेवल ही कम होता जा रहा है, और लिक्विड का लेवल कम होता जा रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल का, और मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी शीट कमजोर हो जाएगी। अब आप देखिए कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना आगे जा रहा है। यदि इसको कूल किया होता तो इतने तेजी से नहीं होता है। इसमें साउंड भी खोल देते आप, वॉल्यूम। अब ये देखिए अब क्या होता है, ये हाँ, Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of लिक्विड लेवल heating. डाउन हो गया, अब ये गर्म होने लगेगा। With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank तो इसमें metal, से जो लिक्विड निकलेगा uncooled वो by सुपरहीटेड liquid, लिक्विड निकलेगा। rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. ये देखो, As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor लेकिन are यदि इसकी released in a कूलिंग की होती तो powerful ये इतना बड़ा explosion. एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है? The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing secondary fires and other damage. इसलिए जब भी कोई फायर हो एलपीजी में It all happens quickly. तो उसको कंट्रोल वे में फायर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी कूलिंग करते रहिए और फायर होता रहेगा। 2 घंटे में, 10 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, जब उसका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो आग अपना बुझ जाएगी और आप एक्सीडेंट से बच जाओगे। क्योंकि कितना नुकसान होगा गॉड नोज। हाँ, उसका यूपीवीसी आएगा आपका। बस इसके बाद आ गया नेक्स्ट, PUVCE। इसका पूरा नाम है परक्यूसिव अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। किसी ने पूछा था ना PUVC के लिए कुछ, आप ही ने पूछा था सर। तो ये क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। रिसेंटली जो जयपुर फायर हुआ है उसमें क्या हुआ था, एलपीजी का टैंकर आ रहा था, वो कट पे मुड़ा, दूसरी तरफ से गाड़ी आई और उसके वाल बॉक्स को हिट कर दिया। वाल बॉक्स को हिट करते ही टूट गया, वो टूट गया तो एलपीजी बाहर निकलनी निकलनी। ड्राइवर ने देखा कि एलपीजी निकल रही है तो एक्सीडेंट होना ही होना है, तो वो वहां से भाग गया और किसी को कुछ बता नहीं पाया। सुबह 5:15 बजे का टाइम था, तो एलपीजी लिक्विड एकदम से लीकेज हुआ। सब लोग को कोई पता नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लीकेज होता रहा और वेपर के क्लाउड बने, और वेपर के क्लाउड बन के ऊपर हवा के साथ वो फ्लोट किए, और जब पूरा हाईवे चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको स्पार्क मिला। मे भी कोई चाय की दुकान से मिला हो, मे भी कोई बस ट्रक के जो एग्जॉस्ट होता है
उसमें भी स्पार्क जो होता है दैट इज सफिशिएंट टू इग्नाइट द एलपीजी, और वहां से स्पार्क हुआ और जब फायर हुआ तो विद इन सेकेंड जो है पूरा खेल खत्म हो गया। तो ये यूपीवीसी है। यस, बिल्कुल सही बात है। इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको यही है कि जब भी लीकेज हो तो एरिया को कन्फाइंड कर दो और आसपास के एरिया को एकदम खाली करवा दो, अनाउंस कर दो, पुलिस लगा दो, बिजली बोर्ड को सूचित कर दो कि कोई लाइट ऑन ऑफ ना करे, क्योंकि लाइट जल रही है तो जली रहने दो और बंद है तो बंद रहने दो। यदि आपने चेंज किया तो स्पार्क होगा और दैट स्पार्क इज सफिशिएंट टू इग्नाइट। लेकिन यदि आपकी इंडस्ट्री में है तो आप कंट्रोल कर सकते हो, और इंडस्ट्री के नॉर्म्स ही होते हैं कि आपको इतने डिस्टेंस पे सेफ्टी डिस्टेंसेस होती है एज पर ओएसडी और एज पर पैसो गाइडलाइन, तो उस हिसाब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ यदि इस तरह का होता है तो बेसल के चारों तरफ कर्व बाल होती है, और कर्व बाल की एक डिजाइन होती है, स्टैक बाल बोलते हैं, कहीं कर्व बाल भी बोलते हैं उसका। हाँ, तो कर्व बाल स्टैक बाल एक ही बाल है। तो वो डिजाइन की जाती है कि इस जैसे मान लो कि 1400 मैट्रिक टन का मेरा हॉट एंड स्पेयर है और पूरा का पूरा लीकेज कर जाए तो भी वहां से लिक्विड बाहर नहीं जा सकता, और उसकी कूलिंग करते रहते हैं। अब आप बोलोगे सर जब आप कूलिंग कर रहे हो तो पानी आएगा, और पानी और एलपीजी मिक्स करके तो बाहर लिक्विड जाएगा ही जाएगा। नहीं, वो पानी कहां से जाएगा? वेपर सील के थ्रू जाएगा, और वेपर सील इस तरह से डिजाइन की जाती है कि पानी ही पानी बाहर जाएगा, क्योंकि पानी इज हैवियर देन वाटर। तो उसका जो डिजाइन करते हैं तो उसमें जो बीच में पर्दे लगाते हैं, दीवार बनाते हैं, वो इस तरह से रखते हैं कि एलपीजी ऊपर ऊपर रहे, और तो इस तरह से हम उसको कंट्रोल वे में वहां से उसको डिस्पर्स करते रहते हैं। हाईवे में आपके कंट्रोल नहीं है, हाईवे में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हाईवे में तो कंट्रोल हो भी नहीं सकता है। हां, एक बात जरूर है, यदि कोई टैंकर में आग लग गई तो यदि वहां फायर ब्रिगेड मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जो है ट्रैफिक पूरा रोक दो और खाली टैंकर की कूलिंग करते रहिए, टैंकर की कूलिंग करते रहिए, क्योंकि वो ब्लैबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैबी हो गया तो अगेन पता नहीं कितना बड़ा खतरा होगा। इस केस में कुछ नहीं कर सकते, इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। इस केस में एक ही है, एरिया को जितना हो सकता है खाली कर दो। आप भाग गए तो भाग गए, बच गए तो बच गए, ये आपका लक है। हाँ जी, हाँ हाँ, आपने सही बोला, बहुत सही क्वेश्चन बोला आपने, क्योंकि देखो आदमी खुद सेफ रहेगा तो इंडस्ट्री को सेफ रखेगा ना, उसके बच्चे सेफ रहेंगे तो इंडस्ट्री सेफ रहेगी। तो घर में इस तरह का यदि कोई लीकेज होता है तो पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि या तो ना तो लाइट को ऑन करना है, ना लाइट को ऑफ करना है। जल रही है तो जलने दो, बंद है तो बंद रहने दो, कोई चीज नहीं ऑन ऑफ करनी है। पूरे घर में खिड़की दरवाजे खोल दो, बच्चों को बाहर निकाल दो। स्टैटिक चार्ज कब जनरेट होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन करा है आपने। स्टैटिक चार्ज जब जनरेट होता है जब कोई मोमेंटरी चीज किसी स्टेशनरी चीज से टकराती है तो स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि एक पाइपलाइन में से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, तो पाइपलाइन और पानी के बीच में स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। या जैसे एलपीजी फ्लो कर रही है तो एलपीजी की लाइन और एलपीजी के बीच में स्टैटिक चार्ज होता है, और वो चार्ज इतना सफिशिएंट होता है कि आग लग सकती है उससे। पेट्रोल पंप पे आप देख रहे हो, जो पेट्रोल भरता है बंदा आपकी गाड़ी में, उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है और उसकी वजह से बहुत फायर होता है। तो उसमें डबल अर्थिंग करते हैं हम लोग। पेट्रोल पंप पे जो हमारा डिस्पेंसिंग यूनिट है उसमें डबल अर्थिंग होती है। उसके एक तो हॉस पाइप के अंदर मेटालिक अर्थिंग होती है और ऊपर से भी एक अर्थिंग की जाती है, क्योंकि अर्थिंग एक इतना बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है, और जो भी एक्सीडेंट हुए मैक्सिमम अर्थिंग के फेलियर पे हुए। लेकिन आज की डेट में अर्थिंग पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो घर में यही है कि उसको सबको बाहर कर दो और सिचुएशन देख के। घर में ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन केवल और केवल जब ही होगी जब आपका कहीं न कहीं सेफ्टी बाईपास हुआ है। सेफ्टी बाईपास इन द सेंस कि आपने देखा कि उसमें थोड़ा लिक्विड आ गया, पानी आ गया और बर्फ जम गई। इस तरह के केस में सबसे बड़ी बात है, जब भी आप बाहर निकलते हो तो आपका रेगुलेटर बंद कर दो, रेगुलेटर की नॉब ऑन ऑफ कर दो, और चूल्हे की नॉब भी ऑफ कर देनी चाहिए। ठीक है ना? सबसे बड़ा है
सिलेंडर जब लगाते हैं ना तभी पता लग जाता है कि लीकेज है क्या। लीकेज है तो उसके ऊपर एक सेफ्टी कैप होती है, वो लगा दो आप, कोई लीकेज नहीं होगा। फोन करो 1906 पे, विद इन ए हावर और 2 आपका सिलेंडर रिप्लेस हो जाएगा। मान लो 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाए तो आप सिलेंडर मत यूज करो। लेकिन हमारी कंपनी बीपीसी, एचपीसी, आईओसी तीनों की तरफ से गाइडलाइन है कि जो भी हम सिलेंडर डिलीवर करते हैं, हमारे डिलीवरी मैन सिलेंडर करता है तो पहले आपको पीडीसी करता है। पीडीसी मतलब प्री डिलीवरी चेक। पीडीसी में क्या होता है, आपको वेट चेक कराएगा, आपका सामने सील टेम्पर करेगा, कैप हटाएगा और दिखाएगा जी कोई लीकेज नहीं है, और ओरिंग भी दिखाएगा। और उसके बाद एक मशीन भी होती है जिससे वाल्व और ओरिंग को चेक करता है, फेस्ट टोकेट बोलते हैं उसको। ठीक है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम करवाते नहीं है, ये कहिए ऐसा होता नहीं है। आप कह रहे सही है, लेकिन ऐसा हम करवाते भी तो नहीं है। यस, अवेयरनेस नहीं है, तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको जो अवेयरनेस मिली है, आप जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी फैमिली को आप ट्रांसफर करिए और इसको कभी चेक करके भी देखिए। कभी आपके सामने संडे को या किसी दिन जब घर में हो और सिलेंडर आता है, आप बोलो भैया इसको तू चेक करा यार, बोलो पीडीसी करा इसकी। वो कह रहे सब पीडीसी क्या होती है? बोलो पीडीसी क्या होती है तुमको पता नहीं है तो तुम डिलीवरी मैन नहीं हो, हम तुम्हारा सिलेंडर लेते हैं, ले जाओ तुम। उन्हें नहीं सर करा देता हूं अभी, क्योंकि उसको फिर वजन तोलना पड़ेगा और वो मशीन लगानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। बाकी गाइडलाइन ये है कि प्रॉपर पीडीसी करके आपको दे। आप देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब बाजार में स्केर्सिटी होती है तो इस तरह का इश्यू आता है, लेकिन अब वो टाइम चेंज हो गया। अब कोई रोड पे से सिलेंडर नहीं लाता है, गांव में छोड़ दो, अदरवाइज शहर में मेरे को लगता नहीं किसी शहर में आपको, मतलब लोग उसके यहां लेने जाते हैं रोड पे, और लोग लेने जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए जो हमारे जो लोग हैं वो सेफ्टी क्लिनिक बीच बीच में लगाते रहते हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं वो क्लिनिक लगाते हैं, पब्लिक में अवेयरनेस करते हैं, और हर सिलेंडर पे 1906 एक नंबर लिखा होता है, आप उस पर कॉल करें पूरी जानकारी मिलती है आपको। और लेकिन देखो एलपीजी में क्या है, बचाव ही उसका एक उपचार है। आपको जानकारी है तो आप बचाव कर सकते हैं। यस यस, हाँ हाँ हाँ। देखो अब वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमको पता नहीं है। आप कहीं से भी आए, चाहे अलवर से आए, जयपुर से आए, कोटा से आए, किसी भी शहर से आए, छोटे शहर से आए, आप जो है ना म्युनिसिपल लिमिट में कहीं से भी आए तो सिलेंडर आपके घर पे सप्लाई होगा। देखो भाई आज की डेट में कोई ब्लैक में लेता है तो वो ज्यादा समझदारी नहीं है। ब्लैक में किस लिए लेना, प्लेंटी में एलपीजी सरकार के पास अवेलेबल है, प्लेंटी में एलपीजी। अच्छा ब्लैक में लेने के एक और नुकसान बताऊं मैं आपको, भगवान ना करे, ब्लैक में एलपीजी लेने का कोई क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है यदि आपके नाम से कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जयपुर में अभी 1.5 साल पहले की बात है, वो ऐसे ही बेचारे बाहर के लोग थे, बिहार वगैरह के और लेबर टाइप के लोग जो होते हैं, वो कहीं से इधर से ब्लैक में सिलेंडर यूज करके कर रहे थे और वहाँ एक्सीडेंट हुआ। कोई कंपनी ने, बीपीसी, एचपीसी, कोई भी ओएमसी कंपनी ने उसको सेटलमेंट नहीं किया, क्योंकि उनके नाम कनेक्शन था ही नहीं, उनके नाम कनेक्शन था ही नहीं, तो किसको सेटलमेंट करेंगे। तो ये ब्लैक वाला यदि सिस्टम है तो प्लीज इसको बंद कर दीजिए। और किसी को कोई दिक्कत है एलपीजी से संबंधित तो आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, एचपीसी, बीपीसी, आईओसी किसी का भी हो, अब मुझे एक बार फोन करके बताइएगा, तो पूरे राजस्थान की तो गारंटी मैं लेता हूं। पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी कोई प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कह सकता कि इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन विद इन ए डे और 2, कोई भी कंपनी का है वो। आउटसाइड राजस्थान भी बता सकते हो, लेकिन आउटसाइड राजस्थान में क्या होता है कि फिर हमारे लिंक कमजोर हो जाते हैं। देखो उसके लिए आप 1906 है, पूरे इंडिया में कहीं भी नंबर डायल कर दीजिए, 1906 24 घंटा खुला रहता है, और तुरंत आप अपने कंप्लेंट नोट कराइए, तुरंत एक्शन होगा। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या होता है, बीच बीच में हम लोग सेफ्टी क्लिनिक लगाते हैं, स्कूलों में लगाते हैं, हमारे फील्ड अफसर जाते हैं,
पर हमारे फील्ड अफसर भी इतने नहीं होते हैं कि सब जगह क्लिनिक करें, तो बहुत सारे एनजीओज होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है, पैसा कमाना किसी का उद्देश्य नहीं होता है कि सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, बहुत से लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल करिए, आपको एक जगह जरूर चुननी पड़ेगी, तो आपके बगल में जो भी एलपीजी, बीपीसी, एचपीसी, आईओसी किसी का भी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसको बोलिए भाई हम एक सेफ्टी कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसमें आपका ट्रेनिंग चाहिए हमारे लोगों के लिए, फैमिलीज के लिए, लोगों के लिए, तो वो प्रोवाइड करेगा। यदि वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो वहां पर हर जगह पर फील्ड अफसर के नंबर लिखे होते हैं, हमारे जो सेल्स अफसर होते हैं ना, उनके नंबर लिखे होते हैं, उन पर एक बार कॉल करिए कि साहब मैं फला फला बोल रहा हूं और हम फला जगह पर इस तारीख को या इसके 1-2 दिन आगे पीछे आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से हमको आप टाइम दीजिए, तो 100% फील्ड अफसर आपको टाइम देगा। भाई जैसे आपने बोला कि साहब मुझे 6 जुलाई को करवाना है, भाई 6 जुलाई को क्यों करवाना चाहते हो? सर मेरे पापा का बर्थडे है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके पापा का बर्थडे, आप ये चीज बताएंगे आप उनको, तो कोशिश करेगा फील्ड अफसर कि 6 जुलाई को आएगा। मान लो वो नहीं आ पाया तो किसी अपने जूनियर को भेज देगा और वो एक कैंप ऑर्गेनाइज होगा। आपने अपने पापा के नाम से एक ऑर्गेनाइज, मतलब उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आपने एक कैंप लगाया, पब्लिक की अवेयरनेस बनाई, कल को अखबार में आएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और इस तरह के यदि हम लोग एक्शन लेंगे तो 100% सोसाइटी से इस चीज को, एलपीजी एक्सीडेंट को रिमूव किया जा सकता है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि एलपीजी एक्सीडेंट पहले से बहुत कम हो गए। उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग ओनली। मैं आपको बताता हूं, 93-94 में मेरी पोस्टिंग थी सवाई माधोपुर प्लांट में। उस समय जयपुर प्लांट नहीं होता था। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में, क्योंकि एलपीजी आती थी गुजरात से, तो एलपीजी के टैंकर आते थे, तो वहां ऊपर नीचे बहुत है, रोड ऊंचे है और टैंकर वाले दौड़ाए चले आते थे और बहुत बार एक्सीडेंट होता था। तो हम सवाई माधोपुर से एक्सीडेंट अटेंड करने के लिए उदयपुर जाते थे। आप अंदाज लगाइए, 10 घंटे का रास्ता था, क्योंकि रोड भी उस समय ऐसे ही थे और एक हमारे पास जिप्सी थी सरकारी, उससे हम जाते थे। आप देखिए कि उदयपुर अहमदाबाद जैसा हाईवे 10 घंटे बंद रहता था, 10 घंटे बंद रहता था। आसपास के एरिया में कोई खाना नहीं बनाता था क्योंकि एलपीजी लीकेज से सबको डर था। लेकिन आज नाउ टाइम हैज चेंज, कोई एक्सीडेंट के कोई सुनने में नहीं आता आपको। ये 1-2 इस तरह के छुटपुट हो गए क्योंकि ये ड्राइवर की भी गलती थी, क्योंकि ड्राइवर ठीक से देखता तो इस तरह का एक्सीडेंट नहीं होता। भाई वो टर्न कर रहा था, तो टर्न कर रहे हो तो आप प्रॉपर से देख के निकलो ना भाई। और गलती दूसरे वाले की भी थी, क्योंकि मान लो कोई निकल आए तो ब्रेक तो लगाओ, पर वो सुबह 5 बजे का टाइम था और हर आदमी आज की डेट में जल्दी में रहता है और वो एक्सीडेंट हो गया। When large amount of LPG release into atmosphere, it forms vapor clouds when unconfined travel in air. तो ये एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा होता है और ये रेयर अकरेंस होता है। पीयूवीसी बहुत कम होता है चांसेज, लेकिन ये होता है तो बहुत खतरनाक होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। आपने देखा ही था सेकंडों में, मतलब कितने लोगों का क्या हुआ, कितनी गाड़ियां जल गई, कोई पता नहीं उस चीज का। ये लिंक मेरे ख्याल में उससे आया नहीं, ये भी एक बार देखिए। ये जयपुर एलपीजी फायर के नाम से होगा, जयपुर एलपीजी फायर। हाँ यही करती, ऊपर वाले चला दी। जयपुर में हुए भयानक एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हादसे के पीछे आखिर क्या कारण था, आइए जानते हैं। दरअसल शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे जयपुर हाईवे पर एक एलपीजी से भरा टैंकर यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रहा ट्रक उसे टक्कर मार देता है, जिससे कुछ सेकंडों में गैस लीक होकर पूरे इलाके में फैल जाती है और तभी जोरदार धमाके की आवाज आती है। ये धमाका इतनी जोरदार होता है कि 40 से ज्यादा वाहनों को अपनी चपेट में ले लेता है। मतलब जो भी चपेट में आया सेकंडों में खेल खत्म, मौत हो जाती है और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जयपुर में हुए भयानक एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हादसे के पीछे आखिर क्या कारण था, आइए। बस ठीक है।
तो ये मेरा लास्ट था पीयूबीसी। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपकी एलपीजी से संबंधित क्वारी है, कोई भी क्वारी, प्लीज आप जो है अपना रेज हैंड करके बताइए। आइए सर। पीसीआरए, यस, बिल्कुल 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 है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीसीआरए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और उसमें जो गवर्नमेंट की तीनों कंपनियां हैं, बीपीसी, एचपीसी, उसमें मेरा एक जूनियर ऑफिसर भी उसमें पोस्टेड था। और पीएसआरए का काम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं कि उसका काम यह था कि पब्लिक में अवेयरनेस लगाना, कैंप लगाना, स्टडी करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना, यही काम था। अब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट भी आजकल क्या हो गई है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन गवर्नमेंट भी लाला की दुकान हो गई है। भैया आपका अर्निंग क्या है, आपका अर्निंग क्या है? आप कोई भी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आप पैसा पैदा कर रहे हैं कि जी नहीं, तो फिर उसका ध्यान नहीं है। देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आम पब्लिक के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आप बताइए, चलो अब तो ये मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, साफ सफाई हो गई, अदर हॉस्पिटल में घुसने का मन नहीं करता लोगों का, इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल। जबकि मैं आपको निवेदन करूं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर, उनकी क्वालिटी, उनका एक्सपीरियंस अनमेस्ड, अनमेस्ड, और उनकी मेंटेलिटी अनमेस्ड है। देखिए प्राइवेट में क्या है, आपके पास पैसा है तो लोग लूटने का पूरा प्रयास करते हैं। आपको पता लगे कि भाई साहब अलवर से आए हैं और बहुत अच्छी कंपनी में, और इनका ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो इतने टेस्ट करवा देंगे, इतनी दुनिया भर की दवाई लिख देंगे कि आप बीमार नहीं हो तो बीमार हो जाएंगे, तो वो पहले और बीमार करेंगे, बाद में सही करेंगे। तो लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर 90% के 99% मेरे को विश्वास है कि इस तरह की चीटिंग नहीं करता है। ठीक है, अपनी 100, 200, 400 रुपये फीस तो ले लेता है, पर आजकल उनमें भी लोग धंधे करने लग गए हैं। तो अब ये सोसाइटी है, हम अब इसी सोसाइटी के हम लोग पार्ट हैं, तो हम लोग पार्ट हैं, हमारा अलग अलग काम है। हम चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, पुलिस अफसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, लॉयर हैं, जन नेता हैं, कुछ भी हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है। आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो इस सोसाइटी ने हमको कुछ दिया है, सोसाइटी की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने आप ही इंजीनियर बन गए और इतना कंपनी में इस लेवल पे पहुंच गए, तो कुछ सोसाइटी की वजह से पहुंचे हैं। तो हर आदमी का फर्ज होता है कि आप जितना दे सकते हो सोसाइटी को वो रिटर्न करो, जैसे भी रिटर्न कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। पब्लिक में अवेयरनेस कैंप लगाइए, स्वच्छता का कैंप लगाइए, आपके टाउन में, आपके पड़ोस में गवर्नमेंट का स्कूल है, वहां टीचर ही नहीं है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं प्रिंसिपल से मिलकर हेल्प करिए कि मैम मेरा मैथ में एक्सपर्टाइज है, मेरा साइंस में एक्सपर्टाइज है, मेरा इंग्लिश में एक्सपर्टाइज है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, तो वहां पर जाके सेवा दीजिए। वो बच्चे जो आज गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहे हैं, किसी को पता नहीं है कौन बच्चा कहां किस लेवल पे पहुंचेगा, तो ये हमारा सबका फर्ज है। और अंत में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप सोसाइटी के लिए बनता है करिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. We extend our heartfelt thanks to Shri R.K. Sharma, sir, for such an insightful and engaging session. Your presence truly enriched today's program. Now, I would like to invite Surendra, sir, to give memento to Shri R.K. Sharma, sir. Sir, please come forward for the memento.
With this, we conclude today's session. We thank all our guests and participants for their valuable time and attention. We look forward to seeing you all tomorrow as the program resume at 10 a.m. sharp. Have a wonderful day. Thank you, sir. Thank you very much, sir.